ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपके भाषण में तो आपके अचीवमेंट भी आए, आपके अनुभव भी आए और आप जो चाहते थे उसको यहाँ पर रखने की कोशिश की है। लेकिन मैं इससे शुरू करता हूँ। बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात बात में डराने से क्या होता है। बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है और यहाँ से वहाँ जाने से और क्या होने वाला है। सर, तो सबको गर्व है देश पे और इसीलिए मैं कहूँगा कि जो संविधान आज़ादी के बाद बनी और इस संविधान के तहत हम सभी को चलना है और देश के लिए हम कुछ करना है। और इसमें मैं एक ही बात कहूँगा कि इस पार्लियामेंट्री जर्नी में 75 साल जो संविधान सभा का ये जो संविधान करके हुआ और उसके अचीवमेंट, एक्सपीरियंस, मेमोरीज, लर्निंग्स, इस पे ही हमको बात करना था। तो मैं इसी पे थोड़े शब्दों में बोलूँगा कि एक मेरी भी जर्नी 50 साल में असेंबली और पार्लियामेंट मिलके 52 साल हिस्सा है मेरा भी। लेकिन मुझे यहाँ ज़्यादा समय नहीं मिला, मेरे को वहीं पर रखना पड़ा, बेंगलुरु में ही था। यहाँ बहुत से नेताओं के भाषण सुनने को मुझे कम मौका मिला, सिर्फ ये 14 साल मिले। कहाँ जा रहे हैं? नहीं, बड़ी गड़बड़ी में जा रहे थे तो मुझे लगा, बड़ी गड़बड़ी में जा रहे तो मुझे लगा, तो इसलिए पूछा। ये टच करना कानून का उल्लंघन भी है। अब ये साहब, हमारे हाउस में उल्लंघन बहुत होते हैं, फिर भी आप दिलदार हैं, उसको संभाल लेते हैं। उसीलिए मैं बोला उसको संजय सिंह को और चड्डा को बुला लो। आगे वही चिंता थी मेरे को, उधर गए फिर। सर, ये संविधान सभा, ये भवन आजाद भारत के सारे बड़े फैसलों का गवाह है और इसी भवन में हमारी संविधान सभा 11 सत्रों में 165 दिन बैठी। उसने 90,000 शब्दों वाला जो संविधान बनाया वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने
इसकी मंजूरी दी। वहाँ की बहस सुनने के लिए करीब 53,000 लोग आए थे, विजिटर्स, यानी इस मौके पे। सभापति जी, आपने अपने जयपुर के पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में संविधान सभा के 11 सत्रों के व्यवधान रहित संचालन को एक आदर्श स्थिति कहा था। यानी किस ढंग से वो चला और कितनी अच्छी थी, यह आपने जयपुर के अपने मीटिंग में अपने वक्तव्य में कहा। तो ऐसा वो एक वक्त था जो सबको लेके लोग चलते थे और लोकतंत्र को ठीक ढंग से ठीक रास्ते पे ले जाने के लिए कितनी कोशिशें होती थी, इससे यह अंदाजा लगता है। उस वक्त कौन थे प्राइम मिनिस्टर? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नहीं सर, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। इधर क्यों देख रहे हैं? नहीं, इधर ये टैक्टिकल है। मतलब ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा स्क्रिप्ट किया हुआ है। साहब मेरे आपको याद दिला रहे थे साहब, सर, आपको याद दिला रहे थे जरा। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि तब राष्ट्र की बुनियाद रखने का काम हो रहा था। बुनियाद रखना, और बुनियाद के अंदर जो पत्थर जाते हैं वो दिखते नहीं, और जब वॉल पे आप नाम लगाते हो वही दिखते हैं। आप कभी भी जाइए साहब, आप तो 2-4 अनेक कोर्ट तो उद्घाटन किए होंगे अब तक, कहीं भी जाइए, जो बिल्डिंग ठहरती है बुनियाद पर, वो अंदर के मजबूत पत्थर किसको भी नहीं दिखते, लेकिन ऊपर का नाम। माननीय खड़गे जी, मैं हाल में भारत मंडपम गया था। हाँ, देखिए, नींव भी देखी और ऊपर भी देखा। यही मैं बोल रहा हूँ, आप बहुत से लेकिन देखते हैं। दुनिया के नेताओं ने जो मुझे कहा, सर बोलने आश्चर्यचकित हो गया। सर बोलने दीजिए। उसकी नींव का भी आधार समझ में आ गया, ऊपर का भी समझ में आ गया। उसीलिए साहब इतने बिल्डिंग्स, आप कौन से भी इमारत बनी होगी, राजे रजवाड़ों के महल बने होंगे, और हमारी पार्लियामेंट बनी, पहले की पार्लियामेंट है, नई है, और कुछ कल जाने में अभी वो दिक्कत है, कौन देखे कौन नहीं दे, हमारी जगह कहाँ है वो भी ढूंढना पड़ेगा। उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। अच्छा, और आज ही करूंगा। चलो सर, संविधान सभा ने चुने गए विभिन्न धाराओं के लोग महान नायक थे, उसमें अपने दौर के महारथी थे, उनका बड़ा जमीनी अनुभव भी था। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, मानवीय गरिमा और लोकतंत्र उनकी नसों में समाया था, क्योंकि उसके लिए ही तो वो लड़ रहे थे। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान दी है, वही हमें आज भी एक बनाए हुए हैं, और उसी ने राष्ट्र के लिए सशक्त ढांचा तैयार किया है। इसी कारण लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहार आज जनता के स्वभाव का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। इसी के आधार पर संसदीय प्रणाली के हक में फैसला हुआ, और अडल्ट फ्रेंचाइज जो हमको मिला वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको तो मालूम है, पहले जब वोटिंग पावर थी 1935 के, तो इस एक्ट के तहत जो टैक्स देते हैं, जिनके पास जमीन है, जो पढ़े लिखे हैं, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही वोटिंग का अधिकार था। लेकिन हमने जो संविधान बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी
और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, जितने भी महान नेता उस वक्त इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, उन्होंने अडल्ट फ्रेंचाइज दिया। आप लिखो या आप पढ़े हो या अनपढ़ हो, आप गरीब हो या आप अमीर हो, सबको एक ही वोट और उसका वैल्यू भी एक ही। करेक्ट। जो एक बड़ा अमीर आदमी, फर्ज करो आदानी के जैसा, उसको भी एक ही वोट, उसका वैल्यू भी एक ही वोट। लेकिन आज हमारे जो कर्मचारी है, छोटे लोग हैं, काम करते, उनको भी एक ही वोट। ये किसने दिया? ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले कांग्रेस के उस वक्त आजादी, जिन्होंने आजादी के लिए लड़े और ये दिलाए और ये ढांचा बना। इसीलिए आज भी अडल्ट फ्रेंचाइज से ये देश जिंदा है, एक है और इंक्लूसिव है। और ये इंक्लूसिव बोले तो थोड़ा सा डर होता है उनको। इंक्लूसिव बोले तो फिर इंडिया, उसको क्या करते हैं छोटा करने के लिए, हमारे नड्डा साहब इंडी इंडी बोलते हैं। ठीक है, उसीलिए तो बोलो नाम बदलने से कुछ नहीं होता। इंडी बोलो, इंडी बोलो और कुछ भी बोलो, हम है इंडिया। अरे आप कुछ भी बोलो, हम सब इंडिया। अरे बैठो, अरे आप क्यों बात करते? बेंगलुरु से आए हैं, चुप बैठो। राजस्थान से बेंगलोर। हमारे नायकों ने बहुत मंथन करके जो संविधान दिया, वो जनता की आकांक्षाओं को खरा उतरा है। बाबा साहब संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में उन्होंने ये कहा था, मैं ये कोट करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत है तो। इजाजत है? मसौदा समिति का कार्य बहुत ही कठिन हो जाता यदि ये संविधान सभा विभिन्न विचार वाले व्यक्तियों का एक समुदाय मात्र होती। विभिन्न विचारधाराओं के लोगों का एक समुदाय होता। एक उखड़े हुए फर्श के समान होती, जिसमें कहीं एक काला पत्थर होता तो कहीं सफेद, और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक समुदाय स्वयं अपने को विधिवेता समझता, सिवाय उपद्रव के और कुछ नहीं होता। तो उस वक्त बोल रहे कि इतने सब रहने से उपद्रव के कुछ नहीं होता। सभा में कांग्रेस पक्ष की उपस्थिति ने इस उपद्रव की संभावना को पूर्णतः मिटा दिया, और इसी के कारण कार्यवाहियों में व्यवस्था और अनुशासन दोनों बने। कांग्रेस पक्ष के अनुशासन के कारण ही मसौदा समिति यह निश्चित रूप में जानकर कि प्रत्येक अनुच्छेद और प्रत्येक संशोधन का क्या भाग्य होगा, इस संविधान का संचालन कर बैठी। तो ये कांग्रेस के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कैसा संविधान बना, क्योंकि उस वक्त इतने डिफरेंट लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, और एक दूसरे से वो अगर लड़ते भी तो बाहर आकर एक होते थे। वो कभी किसी के ऊपर कुछ नुक्ताचीनी करके बैठते नहीं थे। सर, मैं और एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग यानी संविधान बनाने के लिए कितनी कोशिश की है, बहुत लोगों को मालूम नहीं। चूंकि ये कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन थे, वो क्या, ये क्या, ऐसा बोलने वाले बहुत हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति को हम नहीं चाहते, ये खासकर ये हमेशा ये दलितों की हालत होती है। तो जब उन्होंने इतना कष्ट करके
रात दिन बैठ के जो संविधान उन्होंने बनाया, इसीलिए उसमें एक टीटी कृष्णमाचारी का एक कहावत अपना स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने पढ़ के। संविधान का निर्माण करने वाली चुनिंदा 7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर अंबेडकर ने बना। 7 लोगों, इसमें क्या होता, क्योंकि उसके एक सदस्य ने वो 7 में एक सदस्य त्याग पत्र दिया, कितने बचे? 6। एक सदस्य का निधन हो गया, कितने बचे? 5। जबकि एक अमेरिका चले गया, बचे 4। एक सदस्य रियासत के कार्यों में व्यस्त रहे और 2 सदस्य दिल्ली से दूर थे। उनकी सेहत खराब होने के कारण कम मौजूदगी होती थी, तो सारा दारोमदार बाबा साहब अम्बेडकर की। ये इतिहास है, हम इसको कभी नहीं कहते हैं। ये बार बार यही बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये थे, सब मेंबर्स ने मिल। अब ये टीटी कृष्णमाचारी जो मेंबर थे उसके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और खासकर इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने ये बात कही। तो एक व्यक्ति देश बदलने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को जीवित रखने के लिए सबसे कंसल्ट करके कंसेंसस जो बनाते हैं, वो किसके जमाने में हुआ? वो कांग्रेस ने किया। उसकी रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं, उसी के लिए हम तैयार हो गए हैं। सब कुछ हम ये नहीं समझते, हम जो कहेंगे वो हमको मिलेगा। हमारा एक सभी का एक इरादा है कि जो चीज इतने कष्ट से, इतने मेहनत से कमाई है, उसको हम गुमाना नहीं चाहते। तो इसलिए सर, आपको और एक यही बात करूंगा कि इसके बाद 1950 में भारत ने जब लोकतंत्र अपनाया, तो बहुत से विदेशी विद्वानों को लगता था कि यहाँ लोकतंत्र विफल हो जाएगा, क्योंकि ये करोड़ों अंगूठे छाप लोग हैं। तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री, आपको तो मालूम है, फिर मैं बोलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चर्चिल ने यहाँ तक कहा था, अंग्रेज चले गए तो उनके द्वारा स्थापित न्यायपालिका, स्वास्थ्य सेवाएं, रेलवे और लोक निर्माण का पूरा तंत्र खत्म हो जाएगा, ये चर्चिल ने कहा। यानी इतना अंडरमाइन किया हमको कि ये लोग अनपढ़ है, अंगूठे छाप है, ये लोग क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को कैसा टिकाएंगे। लेकिन हमने टिका के दिखाया, हमने इसको मजबूत करा, इसका संरक्षण किया। और बार बार हमको टोका जाता है, 70 साल में आपने क्या किया? अरे 70 साल में तो यही किया हमने, इसको मजबूती दी, इसको मजबूती दी हमने, लोकतंत्र को बचाया हमने, और संविधान को लेकर हमने आगे बढ़े। और बार बार आपके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, ये बोल तो जाओ, और कितने दिन बोलते जाओ। सर, तब वर्ल्ड वार 2 में, उसके बाद में 7 आजाद हुए देशों में सैनिक तानाशाही थी, फिर भी हमारे लोग मजबूती के साथ इस देश में इस संविधान को टिकाया, डेमोक्रेसी को टिकाया। लेकिन हमारे यहाँ सत्ता का हस्तांतरण गोली या बंदूक से नहीं हुआ। महात्मा गांधी जी हमें जो आज़ादी दिलाए, वो सिर्फ नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन से। और इसीलिए हमारी जो संविधान में हमारी जो आदर्श हमारे सामने है, उनके वजह से आज
सभी लोग इसका पालन करते हैं और इसको आगे ले जाते हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा कि इस भवन में 75 सालों के दौरान देश की किस्मत बदली है और देश की सूरत बदलने वाली तमाम कानूनें यहाँ बनी हैं। जमींदारी एबोलिशन, छुआछूत मिटाने का, ओबीसी का आरक्षण के लिए कानून यहाँ बने, यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस के भी बने। सभापति जी ने, मैं पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ। उनका मानना था कि संसद तभी तक प्रासंगिक है जब एक समय की बदलती जरूरतों के मुताबिक निरंतर विकसित गतिशील संस्था बनी रहती है। तेजी से बदलाव के दौर में संसद की तेजी से काम करना होगा, ये नेहरू जी का कहना है। तो हम तो कोऑपरेट कर रहे तेजी से काम करने के लिए, लेकिन कभी कभी झगड़े की बात ही ज्यादा होती है। सर, नेहरू जी के पहले कैबिनेट में कैसा, यानी मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे डेमोक्रेटिक वे से पहले चलती थी। नेहरू जी के कैबिनेट में वो सबको अपने साथ लेके चलते थे। उन्होंने जो पहली कैबिनेट बनाई उसमें सबसे योग्य लोगों को शामिल किया। जो कांग्रेस में नहीं थे वैसे 5 लोगों को शामिल किया। साहब, उन्होंने तो 5 अपोजिशन के लोगों को शामिल किया, उनसे सहमति नहीं होती थी उनको किया। आप तो हमारी छाया भी नहीं देखना चाहते। उन्होंने पहली कैबिनेट बनाई थी बाबा साहब और श्याम प्रसाद मुखर्जी साहब समेत 5 दूसरे धारा के विचारधारा के लोग थे। अब हो सकता है सर, ये कब तक चली सर? हाँ, ये परंपरा कब तक चली? नहीं, ये नहीं, देखिए, जब तक नहीं, उसके बाद में तो हर पार्टी, हर विचारधारा के लोग अपना अपना फ्लैग लेके निकले। जब झंडे अलग हो गए, लेकिन इसको बुनियाद डालने के लिए, सहन करने के लिए, सबको लेके जाने के लिए ये काम उन्होंने किया। अब तक तो चल रहा है, लेकिन एक कि आप अपोजिशन को सहन नहीं करते, उन्होंने सहन करके अपने कैबिनेट में लिया। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर को देखो, नहीं, अरे सुनो जी, तुमको क्या इतिहास मालूम है? मैं बताता हूँ। जब कोई भी पार्टी बनाते हैं तो अलग अलग पार्टी में होते हैं, तो वो बाद में बहस करता हूं मैं आपसे। आओ, मेरे पास में सब सबूत है। सर, नेहरू जी के बारे में बहुत बातें बोलते हैं अपोजिशन के लोग, खासकर बीजेपी के लोग। ये छोड़ दीजिए, जो आदमी 14 साल जेल में रहकर सब कुछ सहन करके, देश के बुनियाद डाल के, बड़े बड़े कारखाने बना के, पब्लिक सेक्टर बना के, नौकरियां दे के इतने बनाए, वो बुनियाद डालने के बाद देश बढ़ा और 5 ही साल में हम आगे बढ़े। तो मैं आपको आगे थोड़ा सा दिखाऊंगा कि किस ढंग से, देखिए, बोलते हैं नेहरू जी के कितना बड़ापन था कि अपने राजनीतिक विरोधी धारा को नेता श्याम प्रसाद जी को केंद्र में इंडस्ट्री और सप्लाईज मिनिस्टर बनाए। नेहरू जी संसद का बहुत सम्मान करते थे और अक्सर अपने सहयोगियों को और युवा सांसदों के लिए एक उदाहरण के रूप में उन्हें डिबेट्स के दौरान धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे, धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे। अब अंदर भी नहीं आते, वो तो धैर्य के अनुसार सुनते थे, लेकिन यहाँ अंदर भी नहीं आते प्राइम मिनिस्टर। दर्शन नहीं मिलते। हाँ, दर्शन तो हमको क्या भगवान है क्या दर्शन नहीं? तो हमारे को
या कम से कम डेमोक्रेटिक तरीके से आने के लिए बोलो, थोड़ा गोयल को भी रिलीफ मिलेगा। नहीं तो हर बात को डिफेंड करना पड़ता है, वो गोयल जी उठना पड़ता है। थोड़ा उनको जरा बिठा के प्राइम मिनिस्टर जरा बोले, अरे हम भी बोलेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, देखेंगे इस बार के बहुत दिन हो गए उनको देख के। तो अगर कोई पूछेगा तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर कैसे है, बोले तो हम मैं क्या बोलूं, अपोजिशन लीडर हूं। तो ये सर, ये इसलिए कह रहा हूं कि ये संसद को जानकारी। अरे क्यों भाई, आपका तारीफ किया मैं। जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आते हैं तो आप लोग बाहर चले जाते हो। नहीं, अब ऐसा है, जब वो नहीं, वो जब वो आते हैं हम बाहर चलते हैं ना, तुम पहले ही भगाते हो हमको, कुछ कह के झगड़े निकाल के। चलो छोड़ दीजिए। नेहरू जी, अरे सब मालूम है आप कहाँ बिठाते, कैसा करते। सुनो, अब नेहरू जी महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार विपक्षी नेताओं से मिलते रहते थे। प्रमुख मुद्दों पर बहस के दौरान सांसदों की बातें ध्यान से सुना करते थे। नेहरू जी ने तो यहाँ तक कहा था, मुझे इस सदन की शक्तियों से ईर्ष्या है और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई उन शक्तियों को सीमित कर दे। यानी इतना बड़ापन, मैं किसी को सीमित करना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूं, सबकी ओपिनियन लेना चाहता हूं। तो ये बात उन्होंने कही। आज क्या होता है, कोई सुनने हमारे को सुने तो भी हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं आते, बार बार यही कहते हैं कि अब उन्होंने कहा। नेहरू जी के विचार था, मजबूत विपक्ष न होने का अर्थ है व्यवस्था में महत्वपूर्ण खामियां हैं। अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो वो ठीक नहीं है, नेहरू जी का कहना। अब जो मजबूत विपक्ष है तो उसको ईडी, सीबीआई कमजोर कैसा करना, कमजोर कैसा करना इधर है। अगर कोई है भी है, इमीडिएटली उसको लेना, कमजोर करना, फिर वॉशिंग मशीन में डालना, क्लीन होके बाहर आ, वहीं पर परमानेंट है। सर, लेकिन आज क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं। संसद में पीएम साहब कभी कभार आते हैं, जब आते हैं तो इवेंट बनाकर चले जाते हैं। मणिपुर साहब, आपको तो मालूम है 3 मई से आज तक दंगे चल रहे हैं, आज तक लोगों को मार रहे हैं, घर जला रहे हैं, आज एक मर गया। तो कितने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दो। हमने इतनी कोशिश की साहब, जरा आप। कोशिश तो मैंने की थी। नहीं, आपने की कोशिश थी, तो मेरी तरफ से थी सब। नहीं कि हर हालत में चर्चा हो, नहीं आधी रात तक चर्चा हो। बोलने दिए सर, नहीं आप, अरे भाई तुम क्यों ये उनको इरिटेट करते हो। सर, आप तो कोशिश किए हैं, लेकिन आपके बातों को भी वो नहीं मानते। ये मुश्किल है ना। आप हमको बोलते हैं, उसीलिए हम बार बार आपके तरफ देखते हैं। तो जब हम आपके तरफ देते हैं तो फिर आप उनके तरफ देखते हैं। तो इसलिए खड़गे जी, मैं मजबूर नहीं हूँ, मजबूत हूँ। आप मजबूत, मेरी बात को मानते तो लोकसभा से पहले चर्चा होती, ज्यादा सार्थक चर्चा होती। अरे मैं साहब, डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा, मैंने बड़ी कोशिश की कि इस सदन में व्यापक चर्चा हो, आपने होने नहीं दी सर। नहीं आपने नहीं होने दी। ये देखिए 267 सर, 267 ये देखिए, ठीक। अरे वो बात गई, जाने दो, बात गई है और रात गई कुछ। खबर में नहीं आते। लेकिन आज क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं। सर, वो देश के कोने कोने में जाते हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जाते।
सर पहले आपको शिकायत थी कि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों गए? नहीं बोल, आपने यहाँ पर कहा था। मैं नहीं बोला। माननीय वो खड़गे आने जी, दो। आपने इस सदन में कहा था नहीं। कि वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों जाते हैं? नहीं नहीं साहब, वो आने दो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। कुछ काम करके दिखा के, कुछ तो करते नहीं। लेकिन खैर डेमोक्रेसी में हार जीत तो अलग है, लेकिन आते हैं तो इवेंट बना के चले जाते। मैं चाहता था वो गुलबर्गे में एक डिवीजन बने, मैं चाहता था वहाँ एक फैक्ट्री मैंने बनाया था उसको शुरू करे, मैं चाहता था वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कुछ इम्प्रूव करे। और कहाँ हमारे यादव साहब कहाँ है, हमारे लेबर मिनिस्टर, उनसे तो मैं आते जाते नमस्ते करता हूँ, साहब मेरा क्या हुआ, एक एम्स बना के दो। वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है, तो वो उनके कंट्रोल में है। उन्होंने क्यों उसको इंटरेस्ट नहीं ले रहे? जब तक मोदी साहब का परमिशन नहीं मिलता तब तक वो नहीं देंगे। मेरी मुश्किल ये है कि आप सरकार के ऊपर, सरकार को क्यों रिक्वेस्ट नहीं करते? रिक्वेस्ट नहीं भाई, दबाव डाले तो भी नहीं कर रहे। और आते जाते मैं समझता 50 सलाम तो हो गए होंगे मेरे याद से। 50 सलाम? हाँ 50 मेरे बाजू में है ना। फिर तो ये ऐसा, और अच्छी बिल्डिंग है, उन्होंने खुद देखे हैं, देखकर। खैर जाने दो, हमारी किस्मत अच्छी नहीं, मेरे लोगों की किस्मत अच्छी नहीं। वहाँ के लोग पहले ही बैकवर्ड है और भी उनको दूर रखे हैं। तो ये मणिपुर को जाना था, वहाँ पर उनके दुख दर्द को देखना था, लेकिन किसी वजह से वो जा नहीं सक रहे। लेकिन इससे ये अच्छा नहीं हो। सर सभापति जी, अटल जी ने अपने कार्यकाल में 21 बार बयान दिया। अटल जी ने अपने कार्यकाल में 21 बार बयान दिया 6 साल में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 30 बार बयान दिया। केवल हमारे मौजूदा पीएम साहब ही ऐसे हैं जो सदन में 9 सालों में कस्टमरी बयानों को छोड़ के केवल 2 बार बोले। ये डेमोक्रेसी है साहब। अब इसको क्या कैसा सुधारते, मैं आपको ही छोड़ देता हूँ। सर दूसरी, सर थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिए, ये कस्टमरी बयान कौन सा होता है? हाँ कस्टमरी बोले तो ये अपने राष्ट्रपति जी का, ये जो ऐसे इश्यूज रहते ना, कस्टमरी नहीं सर, बोलना ही चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। नहीं, दिग्विजय सिंह जी, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यदि अगर प्रधानमंत्री उन कस्टमरी मुद्दों पर बोलते हैं तो कितना आवश्यक है। आई एम नॉट इन डिफेंस ऑफ एनीवन, बट आई एम ऑन हार्ड फैक्ट्स। मैं तो समझता था कि माननीय खड़गे जी को शिकायत होगी कि प्रधानमंत्री जी इतना ज्यादा क्यों बोलते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। साहब नहीं साहब, सुनो नहीं साहब, I will ask the secretariat नहीं have full update on this and No. inform leader of the opposition नहीं in next 3 days. आप अपने स्टाफ को पूछिए। अटल बिहारी वाजपेयी 21 बार बयान दिए। बयान देना अलग है, कस्टमरी जो उत्तर देना, हर चीज पे जो राष्ट्रपति के इस पे भाषण देना, वो अलग है। तो ये 21 बार बयान जो वाजपेयी साहब ने दी, अलग अलग ओकेजन पे दिए सो है। वैसा ही मनमोहन सिंह जी ने 30 बार दी, ये अलग अलग ओकेजन में दी। ये बात मैं बोल रहा हूँ, वो भाषण देते नहीं, बोलते नहीं, बाहर बहुत बोलते हैं, इतना बोलते हैं वो हजम ही नहीं होता हमको, इतना बार बोलते हैं। साहब वो आपने बोला कि मैंने तो चांस दिए तो भी आप लोग नहीं बोलते हैं, चर्चा नहीं करते। सर हमने पहले 267 में 7 बार इस सदन में 267 में 7 बार चर्चा हुई। क्वेश्चन आवर सस्पेंड करके 10 बार चर्चा हुई। कितने सालों में? हाँ कितने सालों में?
कितने सालों में? In how many years? देखो, मैं कह रहा हूं ये सदन में जो हुआ है, लेकिन आप एक बार भी नहीं कर आप रहे। मुझे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसलिए आपसे संरक्षण मांग रहा हूं कि जो फिगर दे रहे हैं, आपके हाथ में जिन्होंने फिगर ठीक दिया है, है मैं वो उनसे फिगर आपको पूछिए भेज दूंगा। कि कितने दशक में ये हुआ है। नहीं, मैं डेट वाइज, सर, मैं बहुत नरम दिल का आदमी हूँ। वो फिगर दे दूंगा। सुन लीजिए सर। ऐसा नहीं Satish बोला। Goyal, ये have क्या है? respect for your leader. ये चुप बैठो भाई। तो आपको चेयरमैन साहब को ऐसा नहीं सताना चाहिए सर, सर। पहले तो आप उकसाते हो और फिर उनको डांटते हो। नहीं, वो ऐसा बीच में बोल। आपने पहले वाली बात भी बहुत सही कही थी। I became the कानून first बनाने chairman के where leader of opposition declined to see me in the chamber at my request. Yes, I noticed it. सर, संसद और विधानसभा जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, जिनके माध्यम से जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिलती है और बदलते समय में जनता की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। लिहाजा सदनों में स्तरीय चर्चा होनी चाहिए। इन चर्चाओं को पूरा देश लाइव देखना चाहिए। इसको जरा ठीक करिए। अब तो मेरा दिख रहा है, बाकी के वक्त तो किसी अपोजिशन का आता ही नहीं ज़्यादा। वो जरा क्या कंट्रोल हमारे गोयल साहब करते हैं और फोन करते हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बोल दीजिए। कम से कम हमको तो बाहर चांस नहीं मिलता, यहाँ तो चांस मिलता है, तो जरा दिखाते दीजिए। जनता के सवाल उठा सकते हैं। अब जब भी हमारे ये अभी तेलंगाना के नेता उठा रहे थे, ऐसा उठते रहते हैं, हम डांटते रहते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं कम से कम यहाँ अगर रजिस्टर हुआ तो बाहर भी मालूम होता है भाई हमारी बात कोई रखे। अब उसी लिए ऐसी चीज़ें संवैधानिक ये मुख्य है और संवैधानिक तरीके से हम जो काम करते हैं उसको आपका प्रोत्साहन मिलना चाहिए और सरकार का भी हमको देने का ये कोशिश होनी चाहिए। और ये संसद लोगों के हितों तथा अधिकारों का संरक्षक है और आप हमारे गार्डियन हैं और अगर हमारे ऊपर कुछ अन्याय हो रहा है फौरन आप हमारे अपने को संरक्षण देने वाले आप भी हैं। नहीं तो हम इतने कम लोग हैं, उतने सब लोग अगर हमको मारते पीटते रहेंगे तो फिर बाद में आपके पास कौन रहेगा, हमें रोना पड़ता। तो इसीलिए जरा आपका संरक्षण ज़रूरी है। और मैं ये कहूँगा कोरोना के महामारी में भी बहुत कुछ कमियां थी, फिर भी हमारे देश में उसको भी ठीक ढंग से निभाने की कोशिश हो गई। लेकिन चंद जगह जैसा यूपी है, दूसरे स्टेट्स हैं, उसमें जो भी कमियां थी वो भी यहाँ पर हमने पहले चर्चा में लाए थे और उसका पूरा जिक्र यहाँ पर हुआ। पहले का जो 33 दिन का था 20 में, फिर उसके बाद 21 में 58 दिन था, फिर 22 में 56 दिन था। ये कोरोना के जो बड़े बड़े जो भी ये थे वो तो खत्म। सर सभापति जी, दुनिया भर में वैसे तो 19वीं सदी में निर्मित 2 दर्जन संसद भवन उपयोग में लाए जा रहे हैं। भारत में लोगों की दिल दिमाग पर 144 खंभों वाली एक गोल इमारत छाई हुई है। यही देश की आज़ादी के बाद से 75 सालों में सारे महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर हुए। इस इमारत की वास्तुकला पर भारतीय परंपरा की छाप है, लेकिन
इसको नफरत से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस सदन में नेहरू जी बैठे थे, अंबेडकर बैठे थे और बहुत से नेता, बड़े बड़े वल्लभ भाई पटेल, ये सब बैठे हैं। इसलिए भूल ही जाना, उधर ही जाएंगे, ऐसा शुरू हो गया। कल लेके जा रहे शायद हमको, अभी मालूम नहीं मुझे। सर, सभापति जी, संसद का सबसे बेहतरीन कामकाज पहली लोकसभा में मैं बता रहा हूँ 1952 से 1957 के बीच सिर्फ 5 साल में माना जाता है कि जिसमें 677 बैठकें हुई, 319 विधेयक पारित हुए 5 साल में। और उस दौरान कानूनों पर हुई बहसें जिज्ञासा और केंद्र बनी हुई। संसद का मुख्य काम कानून बनाना है, लोगों को सशक्त बनाना है, इसीलिए ये नीतियाँ यहाँ पर तय होती थी और सभी लोग एक मत से ऐसे नीतियों को सपोर्ट करते थे। सर, राज्यसभा और लोकसभा में एक से एक अनुभवी संसद आज भी है, पहले भी थे, और उसके लिए सबको जरा बोलने की आज़ादी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर बोलने की आज़ादी नहीं मिली, सिर्फ हम लोग, हो सकता है मेरी भी गलती हो सकती है, नहीं बोल के नहीं बोलता, लेकिन मेरी गलती, एक छोटा गलती को, मेरे छोटे गलती को आप बहुत बड़ी सजा देते हैं, और वो इतना बड़ा गलतियां करते हैं, सारा देश देखता है, सब उधर माफ कर देते हो। तो इसीलिए मैं कृपया करके दोनों बैलेंस करके चलिए, दोनों बैलेंस करके अगर चलेंगे तो हमको भी एक मौका मिलेगा बार बार आपको कहने का, विनती करने का, ये सब चीज़ें होती। सर, और एक कानून बनाते समय बिलों की स्टैंडिंग कमेटी में छानबीन के लिए नहीं भेजा जाता, तो कम से कम ये तो करना चाहिए सर, ये तो आपको हक है। नहीं, इस बिल में खामियां हैं, इसीलिए इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहिए। और इसके लिए सभी लोग, मैं आपको उदाहरण के तौर पर चंद चीज़ें बताऊँ। कमेटियों को भेजे जाने वाले बिल्स का प्रतिशत 2009 और 14 के दौरान 71% था, 71% था। वहीं 16वीं लोकसभा में 2014 से 2019 के बीच घटकर 27% हो गया, रह गया। और 2019 के बाद इसमें इतनी गिरावट आ गई, 13% रह गया। साहब, कहा 71%, और फिर पूछते हैं आपने क्या किया, क्या किया? यही किया हम, 71% स्टैंडिंग कमेटी को भेजा छानबीन करके, और आपने क्या किया? 13%, 27%। ये इससे बिल कैसे स्क्रूटनाइज होंगे? वो जैसा दिल में आया वैसा हो जाएगा, फिर बाद में हम पछताएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा इसको छानबीन करके नहीं लाए, और वहाँ के सभी एमपी और राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर शायद अनपढ़ होंगे, समझते नहीं, तो ऐसा ही भेज दिए। तो उधर से एक टिप्पणी हमको सुप्रीम कोर्ट से, बाकी के जनता लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे बारे में ये सोचते नहीं, सोच कर कानून नहीं बनाते। लेकिन आप गड़बड़ी में इतने कानून भेज देते हो, वो बुलेट ट्रेन से भी फास्ट आता है, बुलेट ट्रेन से भी फास्ट बिल पास होते हैं। तो इसीलिए सर, मैं अभी 5 मिनट लूंगा, फिर आपको बोर नहीं करूंगा। आपने देखा समय खत्म हो गया, 5 मिनट से। आज आलम यह है कि सरकार विधेयकों को सीमित समय में पारित कराने से लेकर सदनों की बैठक कम से कम कराने की कोशिश की चली। इस कारण कानून की गुणवत्ता वैसी नहीं रहती जो व्यापक विचार मंथन या छानबीन से
गुजरे कानूनों की होती है। आज आलम यह भी है, 2021 में भारत के प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि बिना व्यापक बहस के जल्दबाजी में संसद में कानून बनाने से गंभीर खामियां रह जाती है, कई पहलू अस्पष्ट रह जाते हैं। वही बात मैंने कहा। और ये इसके हालत ये नहीं होती थी कि लोग यहाँ पर बॉर्डर पे किसान हमारे बैठ नहीं सकते थे। 3 कृषि कानून ऐसी जल्दबाजी में किए कि वो तीनों कानून फिर बाद में एजिटेशन होने के बाद ठहरना पड़ा। तो ये ऐसे करने से किसान भी है आज हमारे ऊपर नाराज है कि पार्लियामेंट ऐसा क्यों करती है। और एक सर, 30 जनवरी 2011 को तत्कालीन विपक्ष नेता अरुण जेटली जी ये बात किए थे। संसद का, क्योंकि हमारे को बार बार वो बोलते हैं आप गए, भाग गए, नहीं सुने, ये बोलते हैं, लेकिन हम जब अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, हम ये नहीं कि किसी से झगड़ा करना, डिस्टर्ब करना, शांति के साथ जब अपनी बात को नहीं रख सकते तब लोग हमारे इरिटेट होते हैं कि हम इतनी कोशिश करके लोगों के मुद्दों को आपके सामने रखना चाहते हैं, मौका नहीं मिल रहा। ये होता है, किसी से दुश्मनी नहीं है, हम सब एक ही है और सभी मिलके ही देश के भलाई में सोचते हैं। तरीके अलग अलग होंगे। सर, राज्यसभा में इस जगह बैठते थे तत्कालीन नेता विपक्ष अरुण जेटली ने 30 जनवरी 2011 को कहा था, संसद का काम है चर्चा करना, लेकिन कई मौकों पर जब मुद्दों का अनदेखी होती है तो अवरोध पैदा करना लोकतंत्र के हित में होता है। मैं और एक बार पढ़ूं सर, आगे पढ़ो। अच्छा, होती है, अवरोध पैदा करना लोकतंत्र के हित में होता है, लिहाजा संसदीय अवरोध को अलोकतांत्रिक नहीं कहा जाता, नहीं कहा जा सकता। तो ये उन्होंने जो सिखाया वही काम जब हमारे तरफ से होता है हमारे को ठोकते जाते हैं। तो सर, ये जो अवरोध पैदा करना लोकतंत्र के हित में होता है, लिहाजा संसदीय अवरोध को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, ये उनकी बातें हैं। और मैं ये भी आपको कहूँगा कि उस हाउस में सुषमा स्वराज भी यही बात कही थी, संसद को न चलने देना भी अन्य तरीकों की तरह लोकतंत्र का एक रूप है। तो ये सारे चीज़ें वहीं से आए। और मैं आपसे ये विनंती करूँगा कि खास करके दिग्गज नेताओं को यहाँ पर जो उनके बारे में उनको जो समय देना चाहिए। और मैं और एक छोटी सी बात 2-4 रख के मेरे भाषण को ख़त्म कर दूँ। विपक्षी नेताओं के कई प्रमुख तथ्यों को सत्ता पक्ष की मांग पर कार्रवाई से बाहर निकाला जाता है, और उसके लिए ही मैं आपको पहले आते ही विनंती किया, छोटी मोटी चीज़ें जब होती है, आप तो ऊपर हैं हम सबसे, हम नीचे हैं, तो हमारे ऊपर पहला हाथ आप ही का आता है, क्योंकि हम नीचे रहने से। तो ये जो है सर, आज तो आपका पूरा अटैक मेरे पर ही है। आप मूल मुद्दे से भटक गए। नहीं, आप खुद देखेंगे कि आपने क्या कहा है अब तक, विषय से बिल्कुल भटक गए सर, नहीं, दूर दूर तक चले गए साहब, ये तो समय और देश की जनता उम्मीद करती थी कि यहाँ से ऐसा मैसेज जाएगा कि आगे का रास्ता कैसे होगा। जैसे साहब, एक सेकंड, आपने खड़गे जी कहा, कौन बोल रहे हैं? You must learn to be decorous. He has yielded.
is yielded. पहली बार सदन में कुछ डेकोरम हो रहा है तो परेशानी क्यों होनी चाहिए? You will get the chance, sir. You are a very senior member. You will get the chance. Sir, I agree. We may skip the lunch at Michael Saab's request. Good idea. It's a good idea. But that I will do at 1 o'clock. That I will do at 1 o'clock. Yes, sir. खड़गे जी, मैं माननीय सदस्यगण को अपील करूंगा और लगातार मैंने ये बात कही है और गहन चिंतन और मंथन के बाद कही है कि कब तक हम पास्ट प्रेसिडेंट को लेकर हाउस को डिस्टर्ब करते रहेंगे, कब तक हम डिस्टर्बेंस को जस्टिफाई करते रहेंगे। आप अंदाजा लगाइए खड़गे जी, मेरे पर क्या बीत रही होगी जब आप बोल रहे थे कि मुझे बोलने नहीं देते हो। मैं इतना आकलन करता हूं और दुखी होता हूं कि जहां पार्टिसिपेशन हो सकता था वहां आप लोग थे नहीं। मतलब आप अंदाजा लगाइए, इफ लीडर ऑफ द अपोजिशन वुड राइज ऑन दिस क्रिटिकल ओकेजन टू सैंक्टिफाई डिस्टर्बेंस, डिसरप्शन। आपने खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कोट किया है, वहां तो कभी नहीं हुआ। जयराम जी, दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। नो नो, यू आर अ विक्टिम ऑफ दिस हैबिट। डोंट हैव दिस हैबिट, डोंट हैव दिस हैबिट। नो, दिस इज नॉट अ, when the honorable LOP has yielded, why are you being super LOP? Because we want to listen. You can't be. He doesn't need assistance. We want to listen to him. No, no. You want to listen to him, but it is regulated by the chair. Otherwise, come and sit here and control it. Every time. I have no desire to sit there. Even if you have, listen to him. even if you have, there is a mechanism. Sir, you are constantly No, interrupting please, him, sir. please, take your seat. So, माननीय खड़गे जी, this is a rare historic occasion where after taking note of 75 years, we are required to unfold a vision for next 25, 50 years. Sir, exactly. I know it. I know it what he knows. And in the entire discourse, you have focused on two things, sir. I find it. There is a debate between you and him, sir. This is the problem. There is no debate between me and you, sir. This is the problem, sir. Allowed to speak. The problem is, Allowed to speak, sir. the problem is when there is time to participate, I have seen absence. The problem is when an issue has to be debated, discussed, deliberated, you have walked out of the house. Problem is the chairman. This is wrong. This is wrong from your part, sir. This is completely wrong. You are misleading, sir. You are misleading the house. Don't do that. You are misleading the house. You are misleading the house. This is totally wrong. It's a very partisan attack. Remark from you, sir. Sit down, sit down, sit down. Sir, please I explain your have own said, statement. one second, I request you to one explain second, your own Jairam, statement. take it, take it. Sir, please Everybody is explain your own cooperating statement. today. Take it. You are misleading the house, sir. No, no. You are not debating here, Sir, you are not debating here. Sir, let him speak. दिग्विजय जी, दिग्विजय जी, एक प्लीज प्लीज अरे आप बैठो यार. Sir, let him speak. दिग्विजय जी, with my modest understanding, I can tell you, and I am a great judgment of myself. I self-judge. I can tell you, I am not a stakeholder in politics. I am certainly stakeholder that this upper house, the House of Elders, conducts itself in a manner so that it earns respect of others. We must exemplify our conduct by decorum, discipline. One second. One second. Sir, please don't cast aspersions all on. One second. Sir, Would you approve that two honorable members should every time come to the rescue of LOP? Is it not an insult to the position he holds? Sir, allow him to speak. Put some people in discipline court. I would urge, if you do not curb the tendencies of other members, let me tell you, things will get
on a tangential route. There was an occasion when you wanted to speak and somebody said, give Digvijay Singh ji an opportunity. In the process, the honorable member was insulting you, insulting me. We don't want that. Okay. So all I say is, we have had some discussion. We have to emanate from this theater सर a मैं तो most खत्म करता important हूँ message to the world outside. Sir, that applies to all of us, including the Conclude, sir. Honorable members, with the sense of the House, we are continuing during the lunch recess as well. Go ahead. सर थैंक यू सर क्या टॉलरेंस है अच्छा बस आपने थैंक यू तो कहा. सर सभापति जी मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अब टेंशन में आ रहा मामला. तो सर हम बहुत दिन से ये कोशिश कर रहे हैं, सभी की इच्छा है कि महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है. आज तक हमने सब कोशिश की, लेकिन अब मैं समझता हूँ जब आप ये मुद्दा उठाएंगे तो जरूर आपके बात को मान्यता वो दे देंगे. तो मैं ये आंकड़े इसलिए देता हूँ थोड़े से. सर सभापति जी, दुनिया बदल गई है. इस समय राज्यसभा में 10% और लोकसभा में 14% महिला सांसद है. विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% है. 1952 में नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में पहली लोकसभा में केवल वो भी 5% सांसद महिलाएं थी, लेकिन 70 साल के बाद भी आज 14, 15, 10 के अंदर ही है महिला थी. तो अमेरिकी, मैं और भी आंकड़े देता हूं कि महिलाओं को दूसरे जगह भी ऐसा ही हो रहा. अमेरिकी संसद में 2%, ब्रिटेन में 3% महिला सांसद थे. आज अमेरिका की संसद में 28% और ब्रिटेन में 33% महिला सांसद आज है. तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस महिलाओं का जो बिल है इसको आप ये कर दीजिए. और दूसरी चीज, अनएम्प्लॉयमेंट की बात चल रही कि क्योंकि इस 75 साल में हम जब बात करते हैं इधर इधर अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़, 8 करोड़ लोग एजुकेटेड वो आज रास्ते पे है. और इन्फ्लेशन तो सब बढ़ रहा है, आपको मालूम है. वो कोई टमाटर डाल के आए तो आपने बहुत उसको डांटा. वो हकीकत थी 400 रुपये, 500 रुपये. शायद आप मकान में नहीं पूछे शायद कि आजकल टमाटर की, प्याज की, तेल की, दाल की क्या कीमत है. वो हिसाब आप नहीं पूछ रहे क्योंकि पूरा जिम्मेदारी उनको वहाँ छोड़े और बाकी का जिम्मेदारी आप यहाँ लिए. इसीलिए ज़रा मुश्किल होगा उनका. लेकिन ये ज़रूरी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है. नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा डेमोक्रेसी. अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती गई तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी. इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इन चीज़ों को कुछ उत्तर दे. सिर्फ हमने वो किया, ये किया, ये ठीक है. G2 ठीक है. G2 क्या G20 सर नहीं, क्योंकि वो जीरो में कमल का फूल ही दिखता था. अब देखिए साहब, वो आप देखिए, Very good one. हाँ आप देखिए वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट. खड़गे जी, आपका स्तरीय नहीं है, आपका स्तर नहीं है, आपका स्तर नहीं है. वो तो मेहरबानी करके G20 की मजाक मत उड़ाइए. G20 बहुत अरे बड़ा मजाक समूह नहीं है. भाई. लेकिन देखो. लेकिन सर शायद माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, उनको तो सिर्फ 2G दिखता है, 1G एंड सन जी, 2G दिखता है. अरे ये देखो सर, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, देश की जब बात आती है उसमें हम सब लोग एक है, उसमें कोई फर्क नहीं. लेकिन तुम बार बार
वो गुत्ता मत लो, तुम भी पैट्रियट हो। पैट्रियट हमारे लोग हैं, जान हमारे लोग दिए, मर गए हमारे लोग, मजा आप उठा रहे हो और हमको सिखाते हो। सर आखिरी एक बात कह के आज आप बहुत एजिटेटेड हो। मैं खत्म करता हूँ। नहीं, आज आप बहुत एजिटेटेड हो। हाँ? आप बहुत गुस्से में हो आज। नहीं ना ना सर, हमारी वतन परस्ती के अनगिनत तारीखें हैं, हमारी वतन परस्ती के अनगिनत तारीखें हैं, बेशुमार खिस्सा है। हो भी क्यों ना वतन से मोहब्बत, हो भी क्यों ना वतन से मोहब्बत, ये तो हमारे ईमान की हिस्सा है। तो धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम दिया। आपने खड़गे जी, आपने आज पढ़े शुरू में और आखिर में, और पहले भी पढ़ा था जब माननीय वेंकैया नायडू जी का फेयरवेल था, और आपने कहा मौसम कैसा होगा, कितना सताएगा। नहीं उसी आज का आपका एटीट्यूड देने के बाद रियली मौसम फिर जो पीछे गया, पहले का जो था वो आ गया। Honorable members, Honorable LOP has reflected. I would again appeal to everyone. It is not a time for us to be agitated. We have to send a message from this place how our Bharat will move for next several decades. And therefore, when we make light of certain things like G20, G20 can't be reduced to G2 and then Lotus. One second. The world order has been defined. For the first time, G20 has been so impactful that global order has been defined. Inclusion of African Union is being globally applauded. कहीं वो मत डालना। मैं इसलिए मैं जो वहाँ फोटो डाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। G20 का मैं भी G20 में शामिल हो गया, लेबर मिनिस्टर के हैसियत से 10 G20 मीटिंग में गया। अमेरिका गया, इटली गया, ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने। ब्राजील गया। लुला का जो उस वक्त आज आपने हैंड ओवर किया लुला को, वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो मुझे मालूम है कैसा रेस्पेक्ट देना। देश के बारे में मैं पहले ही बोला, देश के विषय में देश का जब भी कोई ये आता है, हम पहले लोग हैं उसके लिए सर के ऊपर रखते हैं। माननीय खड़गे तो जी, इसीलिए आप ये मत बोलिए, जो लिखा हुआ बोर्ड है वो बोल रहा हूँ। नहीं देखिए माननीय खड़गे जी, मेरे को भी सौभाग्य मिला दुनिया के नेताओं से चर्चा करने का। एंड हाउ प्राउड आई फेल्ट। द वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कहता है आवर अटेनमेंट इन 6 years is something which can't be attained in 50 years. Shri Mohammad Nadimul Haq. Sir, thank you very much for giving me the chance to speak on this issue. 4 minutes. Time allotted. So thank you for by your limiting. party. Thank you for limiting me also, sir. Sir, the word federal is not mentioned in the Constitution even once. Yet, it is the spirit and soul of this country. Remember that this is not the House of Elders. It is the Council of States. Do not do anything that will hurt federalism. Do not do anything that will compromise the states. Do not assault federalism. Federalism is our nation's precious asset. So depriving the state of funds is a threat to democracy. Let me give you an example of my state, Bengal. Laborers who worked under Manrega from 2021 till now have not been paid their wages, amounting close to 4,000 crore rupees. If we include the non-wage
component, the amount goes up to 7,000 crore rupees. Sir or Madam, 11 lakhs 36,000 beneficiaries have been denied the Gramin Awas Yojana. Under different schemes, the union government has blocked tens of thousands of crores to Bengal. This is not federal. This is against the states. 75 years ago, Dr. B.R. Ambedkar said, and I quote, "The Indian Constitution is a federal constitution in as much as it is established what may be called a dual polity, which will consist of the union at the center and the states at the periphery, each endowed with sovereign powers to be exercised in the field assigned to them respectively by the Constitution." Unquote. Remember that the double engine government that you propose is against the federalism that our founders envisioned for this country. It is against the very spirit of India. Sir, Madam, today in 2023, I quote Arundhati Rai, and I quote, "It is no longer just our leaders that we must fear, but a whole section of the population. The banality of evil, the normalization of evil is now manifest in our streets, in our classrooms, in very many public spaces. The mainstream press, the hundreds of 24-hour news channels have been harnessed to the cause of fascist majoritarianism. India's constitution has been effectively set aside. The penal code is being rewritten." Unquote. Madam, in conclusion, I must say that India's equilibrium depends on fair play. Do not penalize those states that have done better in successful implementation of schemes, but oppose you politically. Political parties come and go. Prime ministers will come and go. But India, its parliament and its constitution will remain forever. Thank you very much. Shri R.K. Rajesh Kumar. Vikramji. Sakrim Patra. Going through a change, ma'am. We'll come in the second sequence. We'll come little later in the sequence. We come little later in the sequence. Shri Amar Patnaik. S.K. Niranjan Reddy. क्या? रामनाथ ठाकुर. Absent. शक्ति सिंह गोयल. थैंक यू मैम. सर क्या लंच करना? मैं आज ये बात करना चाहूँगा कि हम जिस तरह से संसदीय परंपराओं की, प्रोसीजर की, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की बात करते हैं, तब मैं तो गुजरात से आता हूं, जब फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा गणेश वासुदेव मावलंकर जी, जिसे मावलंकर दादा के नाम से पहचाना जाता था, वो उस थे महाराष्ट्र से, पर कर्मभूमि गुजरात की होने के नाते गुजरात में एक बहुत बढ़िया परंपराएं वहां बनी, और उसी को चलते देखते हुए आज जब मुझे यहां बात करना है, तब मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि भवन बदलने से कुछ नहीं होगा, दिल की भावना बदलनी चाहिए। इन परंपराओं को ठीक करने के लिए
जो काम हमें करना चाहिए उसकी आज जरूरत है। लोकतंत्र में सर्वोपरि सबसे अच्छा दुनिया में माना जाता है लोकतंत्र को, कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सिस्टम। फिर भी हम क्या कहते हैं कि राम राज्य हो तो अच्छा। ये क्यों कहते हैं हम? क्योंकि वो एक ऐसा राजा था जो लोगों की आवाज सुनता था। एक धोबी की आवाज निकली प्रशासक के खिलाफ, राजा के खिलाफ, तो राजा ने उसको देशद्रोही नहीं माना। राजा ने यह नहीं कहा कि ये धोबी उसके वहां ईडी सीडी सीबीआई भेज दूं। राजा ने कहा कि राजा शक से परे होना चाहिए। हम बात करते हैं राम राज्य की। क्यों बात करते हैं? क्योंकि वो शासक, वो राजा ऐसा था कि झूठे बेर एक शबरी मां के आए तो महिला सम्मान में वो शासक विश्वास रखता था। वो झूठे बेर उस मां शबरी के उन्होंने खा लिए। और हम आज क्या बात करते हैं? मणिपुर में एक महिला के पर अत्याचार होता है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है, तब तक हमारे शासक को उस महिला सम्मान की चिंता नहीं होती है, तब जाके हमें चिंता होती है। हम बात करते हैं लोकतंत्र की। मैंने एक कहानी सुनी थी। वो कहानी यह थी कि एक गांव में एक शासक था, बड़ा ही डिक्टेटर था, पर वो पूरे गांव को इकट्ठा करता था और फिर कहता था मैं ये करना चाहता हूं, और गांव के लोग हां बोलते थे। एक दिन उसी गांव का एक आदमी का बेटा जो बाहर के राज्य में पढ़ने गया था, वो आया और उसने सुना कि बड़ी अच्छी बात है, हमारे राजा तो, हमारे शासक पूरे गांव को पूछते हैं और फिर तय करते हैं, मैं भी आऊंगा। उसके बाप ने कहा बेटे आना है तो आ, पर जो सब कहते हैं उसमें हाँ 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 बोलना और कुछ मत बोलना। गया बेटा वहां। शासक ने कहा बकरी ले गई ऊंट को। पूरे नगर ने कहा हाँ जी हाँ जी। वो लड़का खड़ा हो गया कि बकरी इतनी छोटी सी ऊंट को कैसे ले जाएगी, मैं सहमत नहीं। ठीक है, सभा बर्खास्त हुई। जैसे ही घर आए बाप ने थप्पड़ लगा दी, क्या कर दिया तूने? बोले कैसे, मैं सच बोला। बोले नहीं, बकरी ले गई ऊंट को हाँ जी कहना है, क्योंकि यही शासक के नीचे रहना है। और थोड़ी ही देर में वो आया पुलिस वाला कि तुमने राष्ट्रद्रोह किया है, उठा के बेटे को ले गए। थोड़ी देर में इनकम टैक्स की रेड हुई, थोड़ी देर में ईडी आई, थोड़ी देर में सीबीआई आई, पूरा घर बर्बाद हो गया। तो ये वाला भी एक शासन है। यहां पे लोग कहते हैं कि बकरी ले गई ऊंट को हाँ जी कहना है, इसी नगर में रहना है। मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जब संविधान सभा मिली, बाबा साहेब आंबेडकर की उस स्पीच को देखना होगा। मैं तो सभी आपके जरिए सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा और धन्यवाद करूंगा स्पीकर मीरा कुमार जी का, उस कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार का, जिसने पूरी संविधान सभा को एक डॉक्यूमेंट्री, एक बहुत अच्छी फिल्म की तरह बना के रखी। मैं सिर्फ 2 मिनट में खत्म करूंगा। मैम, ये जो आंबेडकर जी ने जब ये बात रखी संविधान सभा के अंदर और कहा कि हमने जब ये संविधान सभा शुरू की, मैं मेंबर बन के आया था ये समझ के कि कुछ दलितों की 2 बात कर लूंगा। मुझे ताजुब हुआ जब मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बना। मुझे और ताजुब हुआ जब मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। और जब ये सारी चीजें पास हुई तब मुझे और ताजुब हुआ। पर मैं इन सब चीज के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के डिसिप्लिन को मानता हूं, उसको श्रेय देता हूं। और एक ही लाइन में बात खत्म करता हूं कि जब ये कहते हैं नेहरू जी के लिए, मैं कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के अंदर जो लफ्ज नेहरू जी के लिए कहे थे, कम से कम उसको एक बार पढ़ लेना, उसको एक बार दिल से लगा लेना। वो बोलने वाले विपक्ष के नेता थे वाजपेयी जी, जिन्होंने कहा था
नेहरू जी के लिए उसको कम से कम याद कर लेना, तो फिर आपको नेहरू जी के खिलाफ बोलने की कभी भी दिल से इच्छा नहीं होगी। मुख्तर सी जिंदगी है, अजीब अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं। वक्त की पाबंदी है, इसलिए लंबी बात नहीं करते हुए मेरी बात को यहीं खत्म करता हूँ। डॉक्टर M.K. थम्मेतुरई। Madam Deputy Chairman, 3 मिनट है आपका। I rise to participate. 3 मिनट। 3 minutes I can, what can I say? I don't know. Madam, as some members expressed, this is not a elder's house. This is a Rajya Sabha. Representing the states representatives, we are come over here. To see the federalism has to be established. That is the history. For that only this house is there. I served as 5 times Lok Sabha member there, and also 2 times Deputy Speaker of Lok Sabha and presiding officer. Also 15 years I done that. That the history is there. I want to say, sir, first of all, madam, in this house, our founder, Dravidian party leader, Per Anna, came here and sat in this house. He fought, he's a single member at the time, Dravidian party came at the time. Then 2 Lok Sabha members at the time. Now, afterwards, the development took a different way. My leader, Purachitalavi Amma, created history, Indian history, bringing 50 members of the parliament, 37 member Lok Sabha member, 13 Rajya Sabha members, like that 50 members we have developed in this history. In the parliament, 37 Lok Sabha member, the highest number we got the Dravidian party, then 13 members here Rajya Sabha, the total 50 members we started. When we Anna started for number 1 and took, like that history took place. Madam, when Anna was here, he fought for the federalism under the language issue. Because here the language is one of the important issues we are discussing. Every time the federalism is not respecting the regionalism, especially for Tamil Nadu, we are all fight for language. Where Anna said, we want Tamil has to be made as the official language of this country. That is the spirit of the thing. Not only Tamil, whatever the 8 scheduled languages, all the language must be the national language of this country. That is what he raised here. We don't know what he is going to implement and going to achieve. Madam, at the same time, I want to make some other points. Then afterwards, our democracy has developed. We have 1967 onwards, our only Dravidian parties are ruling Tamil Nadu, but national party cannot enter. That is the situation is taking place. Because the regionalism is also important. That is why we are representing in the Rajya Sabha the rights of the states. The states are treated some kind of stipulated treatment, and they are not able to get sufficient men. During my present General Secretary of ADMK, Edappadi Palaniswamy, was the Chief Minister. He raised many occasions. We wanted more funds from the state, but we could not get. But in spite of that, he ruled very well and got the good name. 4 years he established a good government in Tamil Nadu and became appreciated by everyone. Why I am telling, because even though we are now some limited members in the Rajya Sabha, we are still fighting for our Tamil Nadu people, for Kaveri issue, like the important issue which is suffering now, the Kacheti issue. They, in spite, without approval of the parliament of the both houses, the 1972, 74, 75, at that time, the Congress people only given the Kacheti to the Sri Lanka government. Still, it is part of our India. It is not approved by this parliament. We are fighting for that. ADMK is fighting for that. Our Amma, I went to the Supreme Court and
filed at the time. This Kacheti is a part of our India because our Tamil fishermen is suffering that. This kind of rights we have to fight, and this history we are going fighting, madam. Madam, and also, apart from that, now we are facing so many problems, but the parliament also were raised regarding, for example, take pandemic situation. At that time, we all united together how to solve this problem. Our Prime Minister, Narendra Modi ji, successfully has done so many wonderful things. And also state government, Padlisamy, during this period, implemented a lot of schemes to save the people of India. Because central government also gave a lot of assistance to the state government at this cooperated with us. With the help of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Padlisamy, done excellent work at that time as a democratic way, because the history shows how the parliament is functioning and how we are playing the game for the welfare of the people. Therefore, even though the building is, we are seeing that sometimes they say it is built by British people. It is not. It is our Indian property we are having here. Even though we were moving from this building to another building, the site is also on the same area where the British people established our building. It is not somewhere not removed from this place to any other place. Therefore, convenience sake only we are moving to that place. I am appreciating our Modi ji has come forward to establish a new building to accommodate more members and also with the good facilities. For that, we are going to move that building, not any other sense. Therefore, democracy in the 75 years, we have come journey, we have so much journey, so many obstacles we had, so many times we have tried so many issues in the parliament also. At the same time, madam, I am very grateful that you have given sufficient time also. But still, I am insisting that federalism must be protected and giving the more rights to the states, not only Tamil Nadu, other states also. And also a request, whatever Anna raised the issue, make all Tamil my language and other Telugu and other Malayalam and other Marathi, other all languages, especially the official language of the country. That is the spirit we have to see for whatever we got for freedom. This is the highest parliamentary system. In the journey, we are risking to respect the states and culture of the various states, where Narendra Modi ji always praising Tamil and other things. Same way, we are requesting the parliament has come forward to see that the languages, all the languages of the A schedule must be said, languages of the national, that is one of the things. That is the spirit of the democracy and also federalism. That is the parliament which we have to make the thing. Once again, I thank my leader, MGR, President MGR, sent me the parliament and has made him a deputy speaker at that time. Rajiv Gandhi was at that time Prime Minister. Afterwards, Amma made me the central minister in Vajpayee government. And afterwards, and Modi ji and also Amma made me deputy. Once again, 2014. And this kind of experience I had made throughout life, had the opportunity to serve this parliament, and hope that this spirit of the parliament democratic system has continued. We know because whatever the opposition people raised in democracy, there must be some kind of opposition will be there. The ruling party also, they want to say, implement their programs. Therefore, both has to come together. There must not be any difference between them. Because government, the ruling party has to say to implement, that is why they elected, they have to implement program. Opposition can raise it as a discussion, must not disturb the things. Therefore, this kind of democracy has to continue. The parliament, 75 years after freedom we have done, as I said once again, as our forefathers thought that federalism must be very important, because we are speaking, it is Rajya Sabha, it's not an elder's house. It is not, I am not an elder man. He may be elder man, he is not elder man. There are young people also there. It's not the elderly house. This is a Rajya Sabha, state representatives are here. Therefore, whatever the state issues are raised here, that must be given importance. That must nullify that. That cannot, therefore. And second, thank my leaders, President MGR and President Amma, Yadapadi Palanisamy, my General Secretary has sent me to the Rajya Sabha as a member. I once again thank all my leaders to have the opportunity. Thank you very much. Shri K. Keshav Rao. How much time you want to give me, madam? 12 minutes. 5 minutes?
12 minutes. 12. 12. Thank you very much, ma'am. Whatever it is, you have the time. Ma'am, get up to speak on this 75 years. Everybody knows we have really done, we have achieved great strides of progress during this period. There's no doubt about it. I don't want to politicalize the entire thing. But let me tell you, our journey has been a tragic journey. It has a beginning. We thought of independence for a nation, but we got two nations. It would have been all right if they were two nations, but unfortunately it became two people. It would have been all right if it were two people, it had become two races. The entire world has started fighting against each other. This is one thing we could not withstand, nor could win over during the last 75 years. This really hurts me. Today, the hangover continues. Today, the people are getting identified more by their religion and caste or region than themselves. This is something the 75 years of independence could not get it. Although economically, we have done very, very good, better than many of the states. We are fast-growing nation. But this kind of divide that we still have, which the British took advantage at one time to differentiate those two people, the Hindus and Muslims, that was the divide they depended on, and is still continuing. Its shadows are still lengthening. This is something which really hurts us today when we are standing to gain out of it. Madam, to really speak, it is not 47, it is 1930 where the Congress party declared itself as an independent and passed a resolution, and there were all over the country the celebrations of independence at that time. Anyhow, whatever it is. But we did not have at that time, when we had partition, and when Nehru went to give his stirring speech of Tryst with Destiny, where he had said, we had promises to keep, not if totally, at least substantially. And we have really done substantially well during the past 75 years. I'm not talking about this 10 years. Even these 10 years you also might have done good. This morning we were hearing a statement made by the chairman, a resolution, I don't know in what kind it came, but it did come. It spoke very well. The wording was good. I only hope that we followed it in our country to give rise to the people's voice, as you want to do it internationally, when you want all the 125 countries to do it. This should have been really good, ma'am. That is the feeling one carries along. Madam, when we think of Nehru's speech, there is some guffaw in that. Nehru, after the speech, went to give his list of ministers to Governor General. You know, he went and gave an envelope, an empty envelope. There were no paper at all inside. There were no names of the ministers. It was only 15 minutes before the real swearing in that they found the paper and found. Why I'm mentioning this is, please look at the kind of polity we had at that time. It might be Gandhiji. Gandhiji who said, we got independence for the nation, not to the Congress. We had in that cabinet, we had people who were adversarially opposed to Congress. Absolutely, who had aversion. Who did not participate in the freedom struggle at all, 3 of them. But yet, Nehru did not have any scruples, any reservations in including them. I'm taking Ambedkar or Shyam Prasad Mukherjee, who were against the Congress and who were against the movement. They were supporting the rulers at that particular time. I'm not trying to please diminish or dilute the importance, but I'm telling you the kind of mind we had, the broad mind that time government had. It wanted to take all people, it wanted to be inclusive. That, as I said, is being lost today. In the name of, you call Hindutva, whatever it is, today majoritarianism has come as a mass mobilization movement, which is wrong. We have never thought of majoritarianism
of Hindus. We knew it had 82% of people, but today it has become a mass movement. That also is something which we must still fight for. So, as I said, it was Sen who said, Amrita Sen who said, Hindutva movement that seeks to convert the religion of the majority in an identity of mass mobilization. He said secularism as it is practiced in India, to some degree the working of Indian democracy, which remains the best guarantee of Indian pluralism, have served to create the postulates of India's various particularisms. India was a particular. If you look to each decade, it had its own map. We had the second thing that we had to do after getting the independence was not only get this kind of inclusive cabinet to govern, but we had also wanted to get all people on the board. This is what exactly Congress did at that particular time, because there's no other party, so let me not talk about it. But at the same time, we had what is called the other challenges that it had to see. The challenge of language, challenge of caste, where the challenge of religion, where challenge of the states, which has turned out to be the issue of federalism, the class, rich and poor. This was very important. These are things which had to do. Then gender. Sir, I will go and first try to tell you the class approach or the class situation that we inherited at that time. Some being rich and some poor. What did we do in these 75 years? We did not bridge it at all. We had allowed it to continue. So much so, today, in a given developing situation, it shows you more cracks than the bridging elements. This has to be understood. I'm only trying to point out it because I don't want to take much time, because we can talk much about rich and poor divide and how the 1% of people are holding the 40% of the nation's wealth. All this can be discussed, but I'm only trying to mention, because all of you in this house who have discussed these issues earlier know it better, that what exactly is the situation as far as the class is concerned. We always talk about the caste. Caste is there. The Varna system that we have inherited is something which is a debase, which is an insult to a nation. Yesterday I was trying to raise in the leaders' opposition meeting something about Sanatana Dharma. Because I'm a student of Hindu philosophy. Let people sitting that side know that you are not the monopolist of the Hindu philosophy. Because Hinduism is some word which came only in the 6th century. All right, let us forget. When we talk about Sanatana, I'm talking to you because the Constitution speaks about it. The Constitution, its preamble, ensures, although it did not use the word secular, it said, when it said about equality of religions, it talked about secularism. But I should congratulate again later this government, this nation, for bringing the 42nd Amendment, wherein they made it specific, a secular, a socialist secular nation. These were the two things which were missing, although we were practicing. This nation was essentially a socialist nation. We must understand at least 64% of people were really poor. 36 below the party line. The word socialist meant the equidistribution of the nation's wealth. This exactly we realized, and we brought in an amendment to the Constitution itself in its preamble. This is another great achievement that we have done. Having brought that, did we do anything? Did we walk the talk? We did not. The system did not allow. Today, unfortunately, when we are trying to talk about 75 years of journey, I tell you for the last 10 or 12 years or even 15 years, let me say 91, when we thought of liberalism, even we had given, if not total goodbye, we have started diluting the importance of looking to poor and looking to the development from the socialistic angle. We had a socialistic view from the awardee session, when Congress moved the social pattern of society,
even Communist Party had to close down their shutters. Because you do everything that the nation wanted ideologically came from them. And all of us who were in the schools in those days, I'm a witness to this 75 years journey, sir. Because I'm today 84, but I have seen this 75 years journey. At the time when the awarding session came, as a socialistic pattern of society, it was not, we did not talk about socialism as such, because there was a crisis at that particular time. This is a part of 75 years journey. We must understand, great debate went on. Whether we should go totally on the Russian model, or should have a socialism of our own, because Raman Royaji and other socialists in this country thought that socialism can be caught for the Indian ethos. Be confused by this kind of, if not dichotomy, a discourse, schism, Panditji thought we'll say same thing, but as a pattern of society. But he committed the society to develop on the basis of socialistic ethos. When he said this has come. So the third thing that we have achieved, great thing, was during the VP Singh's time. When VP Singh came, the Mandal issue was there earlier. The reservation to BCs was there in the Congress session. I was a minister during the Congress regime. We knew that we brought in 15% to 25% in states, but yet accepting it at the national level as these people whom you under Varna system considered as something lower, I would not like to say, because I resist the very word Varna. So VP Singh is the one person who has brought this. This is something goes to the credit and goes as a feather in the cap of the Indian achievements. Sir, then we come to one unfortunate part. Is time over? Yeah, 12 minutes. Sir, we come to the part of religion. Today, as I said earlier, today we are trying to be identified more by our religion rather than by our nation. Mussolini, the great Italian writer, said, Italy we got, but Italians we not yet got it. Not that Nehru is the person who has made all of this. We were Indians. They were cynics at the time when we got our independence, like Secchi, like Churchill, like Kipling, many Dubé, who will not name them, that you get them. All of them thought that India will not be able to sustain democracy at all. It will go back to the age of barbarism, age of privation of the middle classes, and this kind of thing. But India not only sustained, not only democracy lived, but lived so well that other nations are looking to us for democracy. It is because we had a democratic tradition from the millennia. In Maurya's time, we had done the republics, something like 260 republics in the Mauryan Empire. What we talk today as caste was a jati at that time. We had something like 3,000 jatis at that time. But there was no kind of clash as we find today. This is how we have not been able to manage. This is a recent phenomenon. Let me also tell you. We had real communal tension, we had a communal violence, but at present it has become some kind of pride. As I said, majoritism has become an issue for mass movement, mass mobilization. So once it comes, please conclude. It really troubles you most. Sir, I come to Hinduism, I'm not trying to take on the fundamental Hinduism, because there's nothing like fundamentalism at all in Hinduism. Take it from me. Hinduism is a way of life. Anything that transcends time and space is called truth. What you say today, if after 100 years people believe the same thing, and anywhere else in the world is the same thing, it remains a truth. That is, Gandhi reduced very aspect of God as a concept and said truth is God. This is what Hinduism is all about. It is only because, not because I should believe in Rama or I should believe in Krishna. Just now,
the DMK, ADMK man was telling me, in Madras we had a movement, we totally opposed it. Today we have people who don't believe. You have, if Hinduism is all that big, there wouldn't have been a need for Judaism. If Judaism is all that big, there wouldn't have been a need for Christianity. If Christianity is all that big, there wouldn't have been a need for the Islam. If Islam is all that big, there wouldn't have been a need for the Sikhism. So all this come time and space, take it. They include truth. That is what exactly Hinduism has done. I consider this as one of the greatest thought processes. Hinduism is one of the great thought processes which takes everybody to. I am a Charvaka in me. If I believe in God, I am a Hindu, sir. Your time is over. If I don't believe in God, I am Charvaka, sir. I am a Hindu, sir. If I believe in somebody who religion is good, I am a Buddha, I am a Hindu, sir. If I am Jaina, all of you are the Buddha, sir. Karnataka, yesterday I was telling the leaders of opposition, they have got their funds. They don't believe in God, they believe in Shiva, they believe in... So what is Hinduism? It is self-realization. So let us all believe that. Let not the Prime Minister of the day say that all Sanatanis should unite, as if it is a war crime. I think, at this age, this is not something which is good to come from a people, because we accept all religions. Yesterday, Mr. Chidambaram was saying something, last word, sir. Mr. Chidambaram was saying, he was quoting Madhavacharya, 16th century saint, Indian saint. When he said, Sarva Dharma Samahava, so same thing, it is quoting Madhava or other saints. But all the believers in Hinduism believe that all are there. That is why we say, Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti. People may call it by different names, but truth is only one. We believe in it. Unlike others, I am not trying to criticize other religions at this time. They believe that mine is there. There is no Mr. Christ or Mr. Muhammad or no Mr. Zoroaster or no Mr. Confucius. We had a Hindu thought process as such. So this, I don't know, we are losing track. We must get on to that. We must build a nation, Indian nation as such. We are first Indians, last Indians. We are Indians. There is no question of first or last. Saying, like Sanathan is saying, there is no beginning and there is no end. If there is no beginning, where is the question of it being there? So let us not think, it is there, it is truth. It is all pervading. So I tell you, sir, the 75 years journey has been really rewarding, has been very good. I also congratulate, we had beginning, I told you, Tajik, the G20 was a welcome thing. But as I suggested earlier, let us learn to live with what we always boast of. We have today morning gave that big statement. I think you give scope for expression from all sides. That is what I call freedom of expression. That should be respected. The people's urges should be respected. You should not use your own agency because you are powerful. If that were to be the case, earlier regimes would have done that. Nobody has done it. They have respected nation. We have allowed the nation to grow. As Gandhiji said, independence is not for Congress, independence for the nation. Let us all think this nation, development is for the entire nation, not for one party or one thing. Thank you very much. Sir. Thank you. Now, Mr. G.K. Vasan, 3-4 minutes. Sir, thank you, sir, for giving me an opportunity. We all understand, sir, historic Parliament building. Today is the last day of our speech in this building. Maybe tomorrow we are all moving to the new Parliament, sir. This is the time to salute and respect our leaders who fought for our independence and got independence for us. This is the 75th year of our independence, sir. We remember the father of nation, Mahatma Gandhi, and all our leaders from various parts of India who were with Gandhiji and who fought for this country's freedom and who taught us ahimsa in this country, sir. Sir, we also have to be very proud that we are the largest democracy
in this country, sir. We have genuinely, sir, preserved the sovereignty, integrity, security, solidarity of this country with pride, sir. We have made remarkable progress in the 75 years in the field of education, agriculture, healthcare, industrial growth, economic equality, and even in scientific space research, sir. Above all, as Indians, we are all proud today that our nation is looked upon by foreign countries for our helping hand and support even in international problems today, sir. This is the parliament where legends have spoken, sir, in various subjects for the interest of this great nation, sir. We should be very thankful to our regional leaders, sir, who have been in this parliament, spoken for the interest of the country. From Tamil Nadu, sir, I would like to proudly quote Rajaji and Kamarajji, sir, who have been the pioneers, and even today, sir, they are leaders who are the icons for youth in this country, sir, especially Tamil Nadu, sir. The national approach and outlook of leaders from the south, sir, has been great in the development of this country, sir. I must also pleasant record, sir, that India has achieved great heights during this 9 years under the Prime Minister of Modi ji, sir. To conclude, sir, I would say that the schemes, plans and programs launched by the government has embraced every citizen and have enhanced and improved the living conditions of every Indian, sir. With this, sir, I conclude my speech. Thank you very much, Chairman, sir, for giving me opportunity. Thank you. Ramnath Thakur ji. धन्यवाद श्रीमान the chair when our chances will come. No, it's just a question. I was told that he will speak after half an hour. No. Who said? I did not say. I also said like that later. No. No, it is good that we should make new traditions, but then we have to follow the traditions also, how the house runs. Please let him speak. So, welcome. Ramnath Thakur ji. But I have a right to ask a question. Kalita ji. श्रीमान Kalita ji. श्रीमान No, I appreciate your support. श्रीमान but then in the process our turns are not coming. This is no discrimination. श्रीमान Yeah. He will also get you a chance. श्रीमान Yeah, please. मैं आपको He will also get धन्यवाद you a देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण सदन 75 वर्ष के He will get you a chance. No worry. 75 वर्ष में जो इस सदन का गरिमा रही है, जितने महान पुरुष इस सदन के सदस्य रहे हैं, पीलू मोदी, राधा कृष्णन, अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, चंद्रशेखर, राजनारायण, उन महत्वपूर्ण सदस्यों ने जनता की आवाज को जो उठाने का काम किया है, उसी संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवादियों का जो ध्येय था, समाजवादियों की जो मांग थी, उस मांग को यहाँ प्रस्तुत किया गया था। काका कालेलकर का जो रिपोर्ट था, जो नहीं उस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था, 1978 में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया और बिहार में पहला राज्य था जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण लागू करने का काम किया।
1990 में मंडल आयोग के इसी सदन में जो दबाव पड़ा था, इसी सदन की बात है, जो दबाव पड़ा था, उस दबाव के चलते मंडल आयोग लागू हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार का मॉडल जो था वो जातीय गणना का पूरे देश में होना चाहिए था। बिहार ने इसको लागू करने का काम किया। महिला को गैर बराबरी 2005 से जो नगर निकाय में, पंचायत में जो आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण को बिहार ने लागू करने का काम किया। श्रीमान, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि नए भवन में जो हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्यों नहीं सरकार महिला को 33% आरक्षण दे करके इसमें लागू करे। मैं तो समझ रहा था कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है सरकार के द्वारा, उस सरकार में ये मणिपुर पर चर्चा होगी, मणिपुर के समस्याओं को सरकार दूर भगाने का अनाउंसमेंट करेगी, लेकिन अभी तक मणिपुर के बारे में कोई काम नहीं हो सका। मैं 2-3 बातें कह करके अपने सुझाव को रख करके आपके सामने रखना चाहता हूं। ये 75 वर्ष में, 9 वर्षों में जो सरकार काम किया है, हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जेलों में जो बंद कैदी हैं, जिन पर कोई आरोप नहीं है, गरीब हैं, दुखी हैं, वंचित हैं, पैसे नहीं हैं उनके पास कि अपने को वो बेल करा सकें और केस लड़ सकें, तो हम आज 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जो आपने जो ये सत्र बुलाने का काम किया है, तो जेल में बंद हुए कैदियों को छोड़ने का काम करें, यह आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं। दूसरी बात, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इसी तरह विशेष सत्र बुला करके या विशेष दिन रख करके महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए और उसका निदान करना चाहिए। उसी तरह आपको चाहिए था, जो बेरोजगार है, बेरोजगारी जो बढ़ी है, बेरोजगारों के लिए नौकरी के लिए आपको अनाउंसमेंट करना चाहिए, आपकी सरकार की उपलब्धि बढ़ती। इसीलिए हम आपके माध्यम से एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि सब लोग देख रहे हैं जहां वो हैं, सब लोग देख रहे हैं जहां वो हैं, हम देख रहे हैं, देखने वालों की नजर देख रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आपसे, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जिन जिन मुद्दों को हमने उठाने का काम किया, सरकार ध्यान दे और उस पर अमल करने का काम करें। धन्यवाद। डॉक्टर जॉन ब्रिटास, 6 minutes. Thank you, sir. Sir, when we are having a discussion with regard to the Amritagal, I would say that I have a 3-dimensional view of the Indian Parliament. I used to watch the Parliament from outside, from above, and now I am being part of this Parliament, sitting below, sir. Sir, when we speak about Parliament, the basic aspect which we need to keep in mind, that is parliamentary democracy, sir. That is very important. Sir, what is the tenet of parliamentary democracy? The fundamental cardinal principle of parliamentary democracy, as Khadge Sahab said, accountability of executive to the legislature. Niranjan Sahab, aap senior advocate, sahi hai na? Have you ever seen an accountability of the executive to the legislature? Have you ever seen? Now, the opposition leader was speaking about the presence of the Prime Minister. I was trying to dissect that. You know what is the presence of the Prime Minister in Parliament? 0.001%. 0.001%. So that is the period in which he attended the Parliament sessions. Sir, the leader of the House
was very vocal, but he missed many crucial names, sir, including Jawaharlal Nehru. Intentionally. And I know that when Dharmendra Saab is speaking, he would deliberately fill those void and would bring in Jawaharlal Nehru, Ambedkar Saab. Sir, I'm telling you, sir, the names which have been missed by Piyush Goyal ji, you will have to spell out when you're speaking. Dharmendra Saab. Sir, the exercise would be meaningful if you discuss about the dreams and goals of our architects of Constitution. Sir, I will just dwell on the preamble of it, sir. Sir, it speaks about, say, what does it say? Liberty, equality and fraternity. Sir, if you take justice, you will notice that we have reached the bulldozer era. That is justice now. The justice that is being imparted is the bulldozer era. Sir, if it is economic justice, sir, we don't want to speak out the Oxfam report because that's not a good company for good organization for the present dispensation. It's blacklisted. You see the inequality that is spiraling up, sir. Sir, the liberty that has been ushered in, where has it reached, sir? Now it is more manifested in the form of sedition and UAP. That is a liberty which has reached. Sir, another cardinal principle is equality of status and opportunities. This government is honest to say that they don't believe in it, sir. Ambedkar, who they try to appropriate now, was absolutely clear when he said that democracy is not the law of majority, but the protection of minority. Rajiv Chandrasekhar Saab, protection of minorities. It's not said by John Brittas, by Ambedkar Saab. Sir, what is the representation of 20 crore Muslims in executive, in legislature, judiciary, even in media? P.T. Ushaji, you know that, the representation of Muslims, Christians, minorities in Kerala. What is the situation in Delhi, in parliament, in executive, sir? Sir, we all talk about this government's pet topic is to, discuss about Mughals. I said they talk about Mughals more than the Indians now, actually. Sir, in Akbar's court, or even in Aurangzeb's court, more than 50% of the ministers were Hindus. Dheeraj Saab, Birbal, aapko jante hain na kaun Birbal tha? He was a Hindu, sir. Can you spot somebody in this executive now? What is the status of the representation of minorities, sir? Sir, Nehru's cabinet, that was the first ministry. It was a model government. It had given representation to every segment. Dharmendra Prasad Saab, 2 Muslim cabinet ministers. You know Maulana Asad, Rafi Ahmad, John Matai, that was a Parsi, Sikh, everyone. Of course, Shama Prasad Mukherjee. And even not having ideological, I would say, togetherness. I know Derek Saab, representation from Bengali, of course. Sir, it was Maulana Asad who stood on the steps of the Juma Masjid and said, this country is ours. We have built up this country. There is no need of going away from this country. You want to obliterate the last set of memory about Maulana Asad, you scrap the scholarship. Dharmendra Prasad ji, you scrap the scholarship. Not you, I think Smriti Irani ji, I think. Even that, not he didn't scrap. Sir, come into fraternity. Sir, what is the new usage of fraternity? Madam, you know what is the new usage of fraternity? Go to Pakistan. Go to Pakistan. If somebody speaks, they will say, you go to Pakistan. Sir, we are part of this country. We are as patriotic as you are, sir. Sir, maybe more. So now G20, there have been a lot of discussions, fanfare about G20. We appreciate if India get a standing amongst the other nations. But if you look at the indices, Rajiv Saab, what is indice? Per capita GDP, Human Development Index, Hunger Index, हम last है, बिल्कुल last है. And
Is that the reason why you brought in African Union to the G20? So that we did not be last? Anyway, I appreciate that. Sir, coming to the preamble again, sir. Sovereign, socialist, secular, democratic republic, sir. Sir, what is sovereignty now? Hugging Western leaders from Trump to Biden doesn't mean sovereignty. You finished up now because Nehru's name is there. You don't want non-alignment movement to be there. Just because Jawaharlal Nehru was instrumental in setting up non-alignment movement. Now, sir, the second word, socialism. What is socialism, sir? Socialism has become Adanism. That is a new word, Adanism. P.T. Usha, madam. Socialism badal gaya, Adanism ho gaya. Chupchap baith rahe aap. You should be standing up and talking about that. Now, sir, secularism. Another thing, sir. See, secularism. You know, a gentleman sitting in Prime Minister's office had the audacity to say, Dharmendra Prasad sir, Dharmendra ji, suniye sir, Bebak Deb Roy, this constitution has become useless. Only 17 years it can stand. And he said he doesn't understand the meaning of socialism and secularism. A gentleman heading the Economic Advisory Council of the Prime Minister had the audacity to come and say that he doesn't understand the meaning of secularism and socialism. I would have expected a cabinet minister, the stature of Dharmendra Pradhan to say, shut your mouth. Did you say, sir? You should have said it. Sir, now, another word, sir, democracy. See, many of the members think, sir, democracy has turned to be namocracy or modiocracy. Sir, democracy or modiocracy because we don't see the Prime Minister. My daughter was asking, did you get an opportunity to sit with the Prime Minister, sir? I said, no. Very rarely only I get, sir. So, what does it mean, sir? Democracy means accountability of the executive to the Parliament and Parliament being accountable to the people. That is democracy, sir. Sir, republic. I know, where is Rajesh Sinha ji? For Rajesh Sinha and others, you know what is the meaning of republic? Vice Chairman, sir, you know what is the meaning of republic? Arno Goswami. That is the meaning of republic for many of the treasury benches people. Sir, that is the state of affairs of this country. Dharmendra ji, please don't look me like this. Please. You will sir. Please conclude. Sir, please. this time you will have to give me, sir. John, please conclude. I will yield, sir. I will yield. अध्यक्ष जी, अभी मेरे मित्र जॉन बिट्टा अच्छे बोलते हैं और उनकी मुंह से हम लोग नेहरू जी की प्रशंसा सुन रहे थे, अच्छी है। मेरे को लगता है जॉन बिट्टा थोड़ा अच्छा रहता राज्यसभा में जब नमूद्रीपद जी की सरकार को केरला में पहली बार तोड़ दिया गया था, राज्यसभा ने क्या डिबेट किया होगा, उनकी पार्टी ने क्या व्यू लिया था। अभी बहुत तो नसीहत डेमोक्रेसी के बारे में दे रहे थे, अभी उनके बारे में जिस विचार पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने जीते केरला में, उन्हीं की सरकार को जिनकी आज कसीदा पढ़ रहे हैं, उन्होंने उनको बर्खास्त किया, इलेक्टेड गवर्नमेंट को, नमूद्रीपद की गवर्नमेंट को बर्खास्त किया। तो उस समय में राज्यसभा में सीपीएम के मित्रों ने क्या बोला होगा, थोड़ा अगर लाइट डालते तो शायद जॉन बिट्टा से हम ये अपेक्षा कर रहे थे। ये मोकरी, जॉन बिट्टा यू आर वेरी एनलाइटेंड एंड वेरी नॉलेजेबल पर्सन, डोंट लाफ एट योर कॉलीग्स, you may get box news in the Indian Express, but we expect some good light, good view of yours. When Namboodiripad was dismissed from the Kerala, what was the view of CPM in the Rajya Sabha? Please enlighten us. Thank you, sir. Sir, thank you, Dharmendra ji, for reminding me about the dismissal of EMS Namboodiripad. For such misdeeds, they have been punished. They are sitting here. Precisely that is the reason. Otherwise, do you think that they would have been put here? But you are repeating the same mistake. You are calling us, depicting us as Somalia. Say extreme poverty, let us look at. Extreme poverty in UP and Bihar is 30-40%. In southern states, it is 10%.
In Kerala, it is almost zero. Yes, almost zero. Extreme poverty. Sir, it is because, sir, so much of disruption, sir. I want your protection, sir. I want your protection. You have my protection. Yes, sir. Sir, this happened because, Mr. Muralidharan seems to be a Keralite, but his only job is to act against Kerala. His only job is to act against Kerala. Sir, when we talk about 75 years of Indian democracy, we cannot forget the name of Mahatma Gandhi. I was surprised that nobody from the treasury bench even referred to Mahatma Gandhi. Just because he held Gita, Quran and Bible close to his chest, he was assassinated. Only because of that. Everybody knows about it. Sir, you are replacing Mahatma Gandhi with Savarkar. That's why, sir, the new parliament has been inaugurated on the birth anniversary of Savarkar instead of Mahatma Gandhi. You should have. If you had some respect, you would have done, sir. Sir, further, sir. Time allotted is over. Sir, I wanted to say your time is over, sir, so but much I of came to know your time sir, can 2 never minutes, be over. 2 minutes. I will finish, sir. Sir, 2 minutes. Sir, the biggest business, sir, please. The main business of this government is to appropriate people. Sardar Patel. They think that Sardar Patel is theirs. Sir, wasn't Sardar Patel who banned RSS after the assassination of Mahatma Gandhi? Yes. What did he say, sir? The banning was to root out the force of hate and violence that are at work in our country and imperil the freedom of nation and darken her fair name. Sir, another person who is being appropriated is Vivekananda. Didn't he say so? Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence. That is what Vivekananda said, sir. Sir, the unfortunate part, sir. Sir, you are a legal luminary. We are very happy that you preside over this house, sir. Yes. Your rich knowledge. Sir, I have seen you as a minister. In 1989, when you came to Lok Sabha, sir, I was in the galleries, sir. With huge admiration, I have been observing you and watching you, sir. Sir, but the unfortunate part is that, sir, the demolition of every institution in this house, in every institution, from parliament to election commission. Please conclude. Sir, I am talking about you also, sir. Sir, that is why you have to conclude. Sir, I am going to talk about you also, sir. Conclude. Every institution in this country is being demolished. From parliament to election commission. Sir, what is election commission now? Now they are bringing the status of the election commissioners from the Supreme Court judge status to cabinet secretary, and day after tomorrow, Dharmendra Pradhanji will bring a bill to make them a chaprasi. That is going to happen, sir. Sir, every institution is being disbanded, sir. Sir, Article 1. Sir, Vaiko. Last one. Siri Vaiko. Sir, I'm just writing it. 1 minute. 1 minute. Sir, 1 minute. It says that India, that is Bharat, shall be union of states, sir. Sir, federalism, sir. Kerala contributes 1 rupee and get back 25 paise. That is the status of federalism in this country, sir. Yes, it has turned to be like that. The honorable... Sir, I would say that. You told me, Once again. Chairman, sir, you wanted us to, have some change. The honorable member has made a statement of fact. Yes, sir. He will authenticate. I will authenticate. Sir, Kerala contributes 1 rupee to the national kitty, gets back 25 paise. I repeat it. I will place the document on the table of the House. During course of the day. Sir, and sir, last thing, sir. Sir, it's good that we are taking stock of this country. Democracy, institutions, parliament in this Amrit Kal, sir. Sir, structure doesn't matter, sir. New parliament or old parliament. The process matters. The content matters. Can we enrich the parliamentary proceedings? Can we enrich the democratic process in this country? You can build mansions, structures. But, sir,
that will not strengthen the democracy in this country. Unless you enrich, sir. Please So, now I would urge conclude. I would urge upon the treasury benches through you, sir. Let us all resolve to enrich the democracy of this great nation. Thank you, sir. Okay. On a point of information from you, have you been to Statue of Unity? Have you been to Statue of Unity? Sir, I haven't gone, sir. I will go. I strongly suggest you go there once. I will go, sir. I will go, sir. If you give an invitation, I It will go, takes sir. great effort to appropriate someone. Sir, if you give an invitation, I will go, sir. I've been there. Sir, and sir, I'll be happy to go with you, sir. No, I'll go with you. Sir, Mr. Waiko. Sir, let me have a towering personality beside me when I go. Let us hear Mr. Waiko. Mr. Chairman, I am extremely thankful for giving me this opportunity to participate in the discussion on parliamentary journey of 75 years. Starting from Constituent Assembly, its achievements, experience, memories and learning. It was also a long journey for me, having entered Parliament in 1978 as a member of Rajya Sabha. Now it is my fourth term in the Rajya Sabha. Apart from being a member of the upper house, I had the honor to be a member of the Lok Sabha for 2 terms, in the 12th Lok Sabha and the 13th Lok Sabha. There were many swings and waves the nation has witnessed in the last 75 years. But what is shocking me, why the name is changed as Bharat, and when the G20 meeting took place, before the Prime Minister, the name was Bharat, not India. So we are not representing India. Then you call it United States of India. That should be called. All the states should be given equal opportunity. Bharat, where it came from Bharat? From Upanishads, from Sanadana and Hindu Rashtra. So they are trying to take this country towards Hindu Rashtra. But one thing, I would like to tell them, you never entered our area. Guptas never entered. Mauryas never entered. Nobody entered to Tamil Nadu. But we have come to Ganges. We have come to Himalayas. Sir, I am very sorry. The Prime Minister of India, he is putting Bharat instead of India. So hereafter, we have to call India. Why he is afraid of India? The formation of India has threatened them. The formation of India has threatened them. Therefore, they have put the name as Bharat. Sir, I don't want to take much time because you have given me a privilege to take this time. I demanded installation of Ambedkar portrait in Central Hall of Parliament, allowing army men belonging to Muslim community to offer Jummah prayers on Friday. Sir, secularism is under threat. The Muslims are under threat. The Sanadana forces are threatening them. They are afraid because you leave India, you Muslims India. This is not your country. This is the voice of the Hindu Rashtra people. In this way, the country will be balkanized. I today want you on this particular day, it should be noted that it will become Soviet Union. What happened in Soviet Union, this will happen in India. India will be balkanized into so many states, and therefore I said United States of India. But at least you make a name United States of India. Otherwise, India will not be one. When you want to celebrate centenary celebration of independence, but 2047, there won't be any such India. Thank you, sir. Honorable members, there have been enough reflections on Dr. B.R. Ambedkar.
leader of the opposition was very focused. I hope he was here. But it was a glorious moment for me as a member parliament in 1989 that it was during our tenure of 9th Lok Sabha that we could give the great man something that was long overdue, Bharat Ratna. Professor Manoj Jha. शुक्रिया शुक्रिया सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण दिन के नहीं शुक्रिया मैडम मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। मैं यहां से बोल रहा हूं, इधर मैं यहां से बोल रहा हूं। शुक्रिया, बहुत अच्छा अवसर है कि आप यहां आई हैं। कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता। आज सुबह माननीय सभापति महोदय ने कहा था कि ह्यूमर वगैरह हमारी जिंदगी से चला गया, तो मुझे स्मरण है, ये किताब मैं एक ही किताब लेके आया हूं, ऐसी 5 किताबें हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की। तो इसमें सर ऐसी 5 किताबें हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। सो माननीय उपसभापति जी, एक मिनट प्लीज। माननीय उपसभापति जी, 75 कैसे बनाया जा रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से 75 जोड़े तो 2021 में पूरा होता है, अगर आजादी से जोड़े तो 2022 में पूरा होता है, और अगर पहली लोकसभा से जोड़े तो वो 2027 में पूरा होता है। तो ये 75 की गणना कहां हुई, किस ज्योतिषी ने की मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से 75 नहीं है, लेकिन 75 वाली फील में अपनी बात रखूंगा। हां, तो माननीय उपसभापति जी, हुआ यूं कि सरोजिनी नायडू जी को बुलाया गया बोलने के लिए संभवतः 11 दिसंबर 1946 को। कम लोगों को यहां पता होगा कि सरोजिनी नायडू जी बिहार से चुनकर संविधान सभा में आई थी। तो उनको चेयरमैन साहब ने कहा कि अब बुलबुले हिंद, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया आएंगी, लेकिन कविता में अपनी बात कहेंगी, प्रोज में नहीं कहेंगी। उन्हें थोड़ा बुरा लगा, मजाक में ही सही। उन्होंने कहा कि आपका अब ये व्यवहार, आपका ये कहना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर भी सुनाना होगा। तो उन्होंने एक चीज सुनाई जो मैं पेशे नजर कर रहा हूं माननीय सभापति जी को। सुबह बड़ी बेसब्री से वो कह रहे थे कि ह्यूमर चला गया, तो उन्होंने सुनाया कि बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, रंगीन तबीयतों को रंगे सुखन मुबारक। तो ये मैं ये बता रहा हूं कि ये हमारा ध्येय था। अब सुबह चर्चा की, हमारे लीडर ऑफ द हाउस ने बड़ी खूबसूरत चर्चा की और जिक्र किया सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। यहां ठीक सामने सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने एक बात कही थी और मैं वो श्लोक पढ़ना चाहता हूं। मृदुना दारुणं हंति मृदुना हंत्य दारुणम, मृदुना दारुण हंति मृदुना हंत्य दारुणम, ना साध्यं मृदुना किंचित तस्मात् तीव्रतरं मृदु। इसका आशय यह है माननीय सभापति, उपसभापति जी, कि अग्रेशन से, अग्रेसिव बिहेवियर से आप चीजें हासिल नहीं कर सकते। इस देश में मेरे विद्वान साथियों ने उधर से उपलब्धियां गिनाई, हमारे कुछ विद्वान साथियों ने यहां से कमियां गिनाई। मैं दोनों के बीच में चुनौतियां गिनाना चाहता हूं। चुनौतियों की वजह से आज हम यहां हैं, और सिर्फ हम ही नहीं हैं, 140 करोड़ लोगों का यह भवन है, चाहे नया वाला हो या पुराना वाला हो। तो आज के दिन ये मेरी ओर से एक विदाई भाषण भी है, अपने दल की ओर से, इस इमारत को, जिस इमारत में हिंदुस्तान की तकदीर लिखी गई संविधान सभा के माध्यम से, और वो तकदीर लिखने वाले संकीर्ण दायरों में नहीं सोचते थे। मैं उस पर आऊंगा थोड़ा 2 मिनट के बाद। माननीय सभापति जी, बहुत चर्चा होती है, 47 में बंटवारा हुआ था इस देश का। बंटवारे के बावजूद उतनी घृणा, उतनी नफरत, पीड़ा के बावजूद नहीं थी। अभी हाल में एक रोमिला जी की किताब आई,
वो कहती हैं बड़ी खूबसूरती से, Have we moved from integrated nationalism to segregated nationalism? क्या हम एकीकृत राष्ट्रवाद से एक विभाजित विखंडित राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि यह इमारत, इसकी बुनियाद मेलजोल पे है, इसकी बुनियाद में बंटवारे के बावजूद बंटवारा नहीं हुआ। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, सरकार जरूर बनाइए, अगला चुनाव भी लड़ेंगे, खूब दिल से लड़ेंगे, इंडिया भी रहेगा, भारत भी रहेगा, कोई में से एक चॉइस नहीं है, क्योंकि हमको इंडिया भारत करके जम्बू द्वीप तक नहीं जाना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो जो मेलजोल की सीमेंट है उसका खात्मा हो रहा है, उसको बचाइए। माननीय सभापति जी, मैं दो व्यक्तियों के मध्य में अपनी कुछ बात रखना चाहता हूं। संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल जी लेके आए और संविधान सभा में जब ड्राफ्ट सबमिट हुआ तो बी.आर. अंबेडकर ने वो ड्राफ्ट सबमिट किया। तो मैं सिर्फ कहता हूं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बहुत सारी बातें थी, ये प्रस्तावना के बारे में, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में काफी कुछ बोल चुके हैं, सॉवरेनिटी गिरवी ना चली जाए, मौलिक अधिकारों के मामले में। हमें आपके पीछे एक तराजू है, वो तराजू हमें लगाना होगा कि मौलिक अधिकार में कहां पहुंचे, सॉवरेनिटी में कहां पहुंचे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के मसले पे कहां पहुंचे। हाई फ्लाइंग वर्ड्स डोंट कवर अप आवर फेलियर्स, लेट्स नॉट लुक फॉर दैट। और एक मसला आया, उन्होंने एक जिक्र किया ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। माननीय सभापति जी, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब बड़ी शिद्दत से लोग काम में लग गए अधिकारों पर बात करने के लिए, तो राजा को शुरू में परेशानी नहीं हुई, लेकिन राजा को लगा कि कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे खुराफात की बू आ रही है। उसने क्या किया, दरवाजे बंद करवा दिए, जिस हॉल में वो लोग बैठते थे वो चले गए दूसरे दरवाजे रूम में, उसको भी बंद करवा दिया, तो वो चले गए टेनिस कोर्ट में। सारी कार्रवाई पूरी की, उसको कहा ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट का जिक्र जवाहरलाल जी ने इसलिए किया था कि हमारे अंदर वो जज्बा हो, इमारत बनाने बिगाड़ने से इबारतें नहीं बदलनी चाहिए, हमारा जज्बा वही होना चाहिए जो ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट में जवाहरलाल जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने कहा। अब आते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा। माननीय सभापति जी, आप जिस इलाके से आती हैं, मैं जिस इलाके से आता हूं, वहां ये बातें बड़ी प्रबल है। आजादी का मूल्यांकन होगा तो इस आधार पर होगा कि राजनीतिक आजादी, सामाजिक आर्थिक आजादी में कितनी तब्दील हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि एक दिन एक ज्वालामुखी बन जाएगा, और मैं उस ज्वालामुखी को बनते देख रहा हूं। वो इसलिए बनते देख रहा हूं कि जब मैं देखता हूं कि बिहार के जातिगत सर्वेक्षण पे देश के सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, तो मैं देखता हूं ब्लॉक करने की कोशिश हो रही है। यह एस्पिरेशनल वर्ग है, पिछड़ों की बड़ी आबादी, उसके एस्पिरेशन को आप सोशल डेमोक्रेसी के नजरिए से देखिए। जो बाबा साहब कह गए थे 31 में आखिरी हुई, उसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश बना। क्या इस देश को, यहां की सरकारों को, राज्यों की सरकार को वैज्ञानिक आंकड़े नहीं चाहिए? क्या आप आंकड़े आसमान से गिराएंगे? मैं समझता हूं आज के दिन यह भी हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम इन आंकड़ों को लाएं, उसके आधार पर अपनी नीतियां तय करें। एक माननीय सभापति जी, अंबेडकर साहब दो और चीज कह के गए, प्रिवेंटिंग टिरनी ऑफ मेजॉरिटी। मैं बार बार इस सदन में कह चुका हूं कि मेजॉरिटी बेहद आवश्यक चीज है, मेजॉरिटी के बिना सरकार नहीं चलती है, लेकिन मेजॉरिटी और मेजॉरिटेरियनिज्म में फर्क है। यह फर्क अगर हमारी सरकार भूल जाती है तो बहुत बड़ी पीड़ा होती है। जब मेरे मित्र ने कहा, मैं अक्सर देखता हूं हम जैसे लोग छोटी आलोचना भी करते हैं, छोटी मोटी आलोचना जो कभी व्यक्तिगत नहीं होती है। आप कहते हो कि पाकिस्तान चले जाओ, अरे कभी देखा भी हो कितनी जगह है वहां का भूगोल क्या है, इतने लोग नहीं अट पाएंगे। मान लीजिए कि 65% लोगों ने आपको पिछली बार वोट नहीं किया, सबको पाकिस्तान भेज दोगे, ऐसी कोई व्यवस्था होती है? यहीं मेलजुल से रहना है, यहीं मिलकर रहना है। और ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, खुद अंबेडकर साहब कह के गए थे। मैडम, आपकी तरफ से मैं एक और चीज, एक दो छोटी चीज कह करके, इस देश की एक बड़ी आबादी, सभापति महोदया, मैं आपका
सभापति महोदय अभी बिल मत 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, आज पहली बार हैं, इतने नजरिए इनाद कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी को लेकर के हमारा दृष्टिकोण साफ होना चाहिए। सरकार में आप हो हम हो, बेरोजगारी हम सबकी पॉलिटिक्स खत्म कर देगा। राइट टू एम्प्लॉयमेंट के लिए हम क्या सोच रहे हैं, और इस देश की एक बड़ी आबादी से देशभक्ति का जो प्रमाण पत्र हम मांगते हैं ना मैडम, वो कहीं चलेगा नहीं। मैं आखिरी चीज कह करके एक सुनाना चाहता था। मैं इसलिए कहता हूं, एक घर में 5 सदस्य हैं, उसमें हर 5वां सदस्य उस आबादी का है। अगर उस घर में उस 5वें सदस्य को आप एलिनेट करेंगे, दूर करेंगे, घर कभी महफूज नहीं रह सकता। और आखिरी में मैं साहिर को जाता हूं और वहीं खत्म कर दूंगा, आपको घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। आओ कि आज गौर करें इस सवाल पर। देखे थे हमने वो हंसी ख्वाब क्या हुए, दौलत बढ़ी तो मुल्क में अफलास क्यों बढ़ा, खुशहाली आवाम के असबाब क्या हुए, जो अपने साथ साथ चले कुएदार तक, वो दोस्त वो रफीक वो अहबाब क्या हुए। क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजाए याब क्या हुए। बेकस बरहनगी को कफन तक नहीं नसीब, वो बादा आए अतलसों के मुखाब क्या हुए। जमहूरियत नवाज बशर दोस्त अमन ख्वाह, खुद को जो खुद दिए थे वो अलकाब क्या हुए। मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है, मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है, वो नुस्खा हाय नादिर व नायाब क्या हुए। हर कूचा शोला जा रहे हर शहर कत्लगाह, यकजहतिया हयात के आदाब क्या हुए। सहराए तीरगी में भटकती है जिंदगी, उभरे थे जो उफुक पे वो माताब क्या हुए। मुजरिम हूं अगर मैं तो गुनहगार तुम भी हो, मुजरिम हूं अगर मैं तो गुनहगार तुम भी हो, ए रहबराने कौम खताकार तुम भी हो। जय हिंद मैम, एंड सैल्यूट टू ऑल द फ्रीडम फाइटर्स। संविधान सभा के उन तमाम लोगों को, और मैं चाहूंगा कि सेंगोल के बगल में एक बड़ी आकृति में इनकी तस्वीरें वहां लगाई जाएं और हमें प्रेरणा देते रहें। जय हिंद। धन्यवाद। श्री वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। श्री वीरेंद्र प्रसाद। Yes, I'm here. Thank you, Madam Chairman, for allowing me to speak on the historic occasion. Today is the last day. If in our parliament life we are sitting, we all the members sitting for the last time in this building. Tomorrow, another journey will start. It is privilege for us. We are the person who got opportunity to speak, attend this old parliament, and we are going to get opportunity to speak in our new parliament. I remember, sir, when I was a student of class 8, for the first time in my life, I visited Delhi. So I am from Assam. You know, northeastern region, more than 2,000 kilometers away from the duty. Definitely, as a school student, I visited here, and we are traveling all the important parts, spots of Delhi, and in class 8, in my life, for the first time, physically, I seen our Parliament House. And it was from the outside, not from the inside. Sir, in 1996, I was elected Member of Parliament from Assam in Lok Sabha, sir, Madam. In class 8, physically I have seen the Parliament House from the outside, and in 1996, physically for the first, I am
entered this house as a member of parliament. And fortunately, I was the took responsibility as a cabinet minister of the country in the year 1996. And it was my privilege to attend both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, although I was a member of Lok Sabha, but as a minister, I was attended this house also. It is painful, no doubt, from tomorrow we are not here. But we are jubilant also. We are privileged, we are lucky. From the next day, tomorrow, we are going to attend the new Parliament House with modern art and technology. The Parliament has a long history. I remember many things. This is the Parliament, this is the building where first Indian financial budget was passed by then Prime Minister Jawaharlal Nehru. Again, I am speaking, I remembering, when China attacked my country, my motherland in 60s, then Prime Minister Jawaharlal Nehru given goodbye people of northeastern region from India. This is the sentiment of us. This is the sentiment of. After then, many things was discussed inside this parliament building. When China came to near to Tezpur, China came up to Bombila. People of Assam, people of northeastern region, especially Arunachal people, they are crying. We are not equipped to fight against China. And at that time, Assam was given farewell goodbye to then Prime Minister Jawaharlal Nehru. But sir, after 61 session was assembled, at that time I salute great parliamentarian of India, great parliament from Assam, Hem Borua, who had fought for Assam and who have given one to the government from this house. Sir, this parliament also equally witness of imposing emergency in our country. Because for the first time emergency was declared, evoked in our country. And at that time, parliament was not functioning, parliament was dissolved. Our honorable Prime Minister always says, India is the mother of democracy. Yes, Prime Minister is very right, India is the mother of democracy. But one thing, Shantanu Sanjay, you should remember, but historians said, ancient Greece was the first country of the world who revoked democracy. But this is not correct. This is not correct. In Bihar, first Indian democracy started in Vaishali. It was started in Vaishali, not 500 years ago. It was started 600 years ago. And Vaishali of our country is the first place of democracy started, where in Vaishali town, it had 600 years ago, 707,000 people, locally elected people, selected people, sit together to make a decision, and this is the first democratical decision of our country. Madam, we are going to new house today. This house will be the witness of modern technology, modern art. We hope, we believe in coming house where we are going to tomorrow will bring more important law for our country,
for develop our country and financially to improve our country, many more discussion will take place. I remember, I have seen very, very important person, dignitaries functioning in this house. Just 2 minutes, then I come. 1 minute. Okay, just 2 minutes. I remember K.K. Narayan as a vice president of our country who shared the house. I remember Pharaoh Singh Shekhawat. I remember Hamid Ansari. I remember Venkaiah Naidu ji for their contribution to our parliamentary democracy. Especially, I must speak one thing from my heart. I salute Venkaiah Naidu ji because from this year, always Venkaiah Naidu encouraging all the members of the House to speak their mother tongue. He was a very knowledgeable person. Always he encouraging about the mother tongue. Definitely Venkaiah Naidu has a great, great contribution to this House. Equally, our present chairman also always given us guidance, speaking about our history, especially in the legal side, he always given us the guidance. Ma'am, I remember, if I'm not speaking, this is not fair. I have got opportunity to witness the speech of Bajpayee, budget presentation of Pranab Mukherjee ji. Wonderful oratory personality of Madam Sushma ji. Learned speaker Arun Jaitley ji. I am learned many things from these people, sir. Ma'am, I remembering my first day in the life when I was a student of class 8. I have seen this parliament building from the outside. And in the 1996, I entered this house as a member of parliament. And this is the beauty of our democracy. My family don't have any political background. I am not a son of any minister. I am not a son of any MP. I was not a son of any politician. But I am a son of the soil. I am a son of the soil. And this is the beauty of democracy. I am elected from son of the soil of this wonderful parliament. Definitely, if I am not speaking about my political party, then it will be not fair. I am getting this opportunity. My political party, Assam Gana Parishad, is a regional political party with a national outlook. And I am grateful for my country. In my life, I am working only one party. This is my party. This is Assam Gana Parishad. Still, I am a member of Assam Gana Parishad. And I am really grateful to my party for send me to Lok Sabha, for send me to Rajya Sabha as a member of parliament. With this, I believe we all members gathering here in our last day of this building, we always remembering our memory in this building. And from tomorrow, in new building, we start our new parliamentary life, our new democratic life. With this word, I conclude. Thank you very much. Thank you. Sri Jose K. Boni. So today we gather here to reflect upon an extraordinary journey, more than 70 years of Indian Parliament. For 3/4 of a century, it has served as a cornerstone of our nation's governance. It is a journey marked by trials, triumphs,
and unyielding commitment to the ideal of democratic republic. The framers of our Constitution envisioned a vibrant democracy where every citizen, irrespective of caste, creed, or gender, had a voice and a vote. Our Parliament was entrusted with the sacred duty of upholding these principles. In last 7 decades, many Latin American and Afro-Asian countries sailed along with us, sank and disappeared. Even the mighty USSR and the entire Eastern European nations collapsed like a palace of cards. But we keep on sailing because on the most of our ship, the flag of parliamentary democracy flutters. We have seen heated debates, fiery discussions, and passionate argument, the very essence of parliamentary democracy. Over the years, it has played a pivotal role in shaping India's destiny. It has been source of progressive legislation, from the eradication of untouchability to the establishment of gender equality, from comprehensive land reforms to the liberalization of our economy. As we celebrate the remarkable journey, let us also acknowledge the challenges we face. Our Parliament, like any other institutions, has had its share of ups and downs. It is an undeniable fact that recent years have witnessed instances of undemocratic parliamentary methods and procedures which threaten the very essence of democracy. There have been occasions where legislative debates have been curtailed, opposition's voice silenced, and crucial bills passed without due discussions and scrutiny. The integrity of the Parliament committee and internal part of our democratic system has at times been compromised. Delays in appointments and the politicization of these committees have hindered their effectiveness. Only 25% of the bills were referred to these committees. Such a low referral rate of bills to the committee during the 16th Lok Sabha clearly shows the government is not open to the scrutiny and engagement that the committee offers. The suppression of the dissent, be it from the civil society, academia, or the media, is a matter of deep concern. A thriving democracy encourages diverse perspective and respect the right of dissent. Recent incident involving curtailment of free speech cast doubt on the government's commitment to these democratic values. The robust democracy thrives on open communication and the free exchange of ideas. Curtailing these fundamental rights poses the threat to the health of our democracy. With the inauguration of the new Parliament building, let us anticipate a transformative shift in our engagement with this paramount institution. May this symbol of progress empower us all to become the collective voice of the people of our nation, steering our democracy towards a brighter and more inclusive future. May our Parliament continue to be the beacon of hope and the voice of the people for generations to come. Thank you. Mr. Praful Patel. Thank you, Chairman, sir. I get up to speak probably for the last. I get up to speak probably for the last time in this very august building, and how can you be so sure? Well, I said probably. And I'm sure we are all filled with a sense of... Tomorrow we are meeting Dr. Keshav, therefore I'm saying. And of course we are all... Me and Praful Patel go together in Parliament as members of 9th Lok Sabha. So we have
all assembled here, sir, and obviously this is a feeling and a sense of nostalgia. As you have very rightly pointed out, not only our long association, but my very own long association with Parliament, with many times in the Lok Sabha as well as in the Rajya Sabha, and having completed more than 32 years as a member of Parliament. So, sir, I definitely feel that I share the sentiments of most of my colleagues who have been speaking here, and definitely 75 years of independence, our country has really come a long way. And our democracy, no matter what the assaults have been from within and outside, has withstood the test of time and has got stronger by the passing day. And this democracy, which we pride ourselves in, and which the world also now looks up upon us as something to be cherished. Dr. Ambedkar gave us a wonderful constitution. Along with him, many other stalwarts joined him and presented the constitution to the Constituent Assembly. And certainly, our constitution can be rated as one of the finest constitutions drafted anywhere for any country in the world. And I think that is something we should be very proud of. And a country which is so diverse as India, as vast as India, as populous as India, certainly requires a binding force, a glue, and that our Constitution has very ably provided us and stood the test of time. A country, I think when we go abroad and we see many countries and we look at their democracies, of course, there are very many shining examples. But no country, again I repeat, as populous as India, 140 crore people, speaking so many languages, so many dialects, so many religions, so many states, so many ethnicities, can be remaining together as one is sometimes, I think, really an astonishment for many people in the world. We recently had the G20 summit in India, and I'm sure whatever though we could not participate ourselves, but as government of India, as projected and as seen by us and all the world, I'm sure that every single leader who came to India would have been proud of what India has achieved in its last 75 years. It is not a mean feat, sir. We have ourselves, when we came to Parliament, I remember, we were, you and me and all of us, many who were there in the past, राम गोपाल जी को भी याद होगा कि हम पहले 25 टेलीफोन के कनेक्शन किसको दें या गैस के सिलेंडर हम किसको हम अपने एमपी कोटा से दें, यहाँ से हमारी शुरुआत होती थी केशवराव जी। एंड वो दिन भी हमने देखे हैं कि टेलीफोन का कनेक्शन अगर नॉर्मल कोर्स में हम लगाएं तो 15-15, 20-20 साल के बाद हमको नंबर लगता था। तो उस और गैस के कनेक्शन की भी वही परिस्थिति थी और ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्रिविलेज माना जाता था। तो उस जमाने से लेकर आज, हरदीप जी आप पेट्रोलियम मंत्री हैं, आपको मालूम है कि आज कितने बड़े पैमाने पर हमारे देश में न केवल गैस की बात करें या टेलीफोन की बात करें, लेकिन पूरी तरह से हमारे देश की जो आम तौर पर जो प्रगति हुई है, ये एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा मिसाल बनी हुई है। और इसीलिए 75 वर्ष जब हम पूरे करते हैं, अमृतकाल की बात करते हैं और इस सदन से नए सदन में जाने की बात करते हैं, तो आज का भारत और भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए, आधुनिक भारत कैसा होना चाहिए, इसके लिए निश्चित इस सदन में एक अच्छी चर्चा होनी चाहिए और मंथन होना चाहिए और हर व्यक्ति का यहाँ पर जो सुझाव है उसका एक अहम महत्व होता है। हर संसद सदस्य जो यहाँ पर बैठा है ये सदन में या उस सदन में, उनके अनुभव का पूरा इस्तेमाल करके देश हित में और जनहित में हम लोगों ने उसका इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठाने का काम करना चाहिए। आज देश में क्या क्या बातें नहीं होती है, आज हम देखते हैं कि कितना विषमताएं होने के बाद, कितनी मतलब गरीबी भी है, अमीरी भी है,
सब कुछ होते हुए भी लोग मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते हैं, ये हमारे भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा अभिन्न अंग है। और तभी हम ये सारी बातों को, कोई भी समस्याएं आती है, बाधाएं आती, उसको पार कर पाते हैं, क्योंकि हमारे देश में सहनशीलता और सबको एक दूसरे के साथ लेकर चलने की हमारे मन में भावना है। और यह हमारे संविधान ने भी हमको दिया है, जो एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार, बहुत लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा, हम अमेरिका के डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अमेरिका की डेमोक्रेसी में भी जो काली चमड़ी के लोग थे, जो अफ्रीकन डिसेंट के लोग थे, उनको भी वोट का अधिकार 1960 के दशक में, जब मार्टिन लूथर किंग ने लड़ाई लड़ी उसके बाद मिला। तब तक उनको बराबरी का अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और उनके साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस देश में सभी को बराबरी का अधिकार हमारे संविधान में 1950 में हमको दिया, जो हमारे आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, जो और विश्व के कोई बड़े देशों में नहीं रही है। लेकिन निश्चित नए भवन में एक आधुनिक भारत की और भविष्य के भारत की, उसकी भी झलक हमको नजर आएगी। एक और हम चंद्रयान पहुंचे, एक और हम हमारे देश में इतना तंत्र और विज्ञान का आज उपयोग कर रहे हैं। आज हमारा देश टेक्नोलॉजी में विश्व में एक अग्रणी स्थान प्राप्त कर चुका है। अमेरिका की और विश्व की बड़ी बड़ी जो कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, उन सारे कंपनीज के जो प्रमुख लोग हैं, वहाँ के प्रमुख इनोवेटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो हमारे भारतीय हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और ऐसे एक आधुनिक युग में जब हम जा रहे हैं और भविष्य के भारत का और नए भारत का सपना जब हम देख रहे हैं, नौजवान भारत का सपना देख रहे हैं, तो निश्चित नए सदन का भी एक अहम उसका एक महत्व रहेगा। और मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हमारे सदन का सुचारू रूप से नए सदन में भी कामकाज जारी रहेगा और नए सदन के माध्यम से हमारी जो देश की जो युवाओं की और भविष्य की पीढ़ी की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसकी जरूर पूर्ति होगी। इसी विश्वास के साथ हमारे देश के 75 वर्ष पूरे हुए, हमारे देश के लोगों को और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूं। No, the honourable member has put across his points with positivity, and that is what is required. At an occasion like this, we all have to converge to see Bharat blossoms, politics apart. So that's a very important contribution. Sri Bhuvaneshwar Kalita. Thank you, Honourable Chairman, for giving me the opportunity. क्या पता कौन कितनी गलत जगह बैठा हुआ है? Thank you, sir, for giving me the opportunity to speak on this historic occasion of Rajya Sabha, to speak on the parliamentary journey of 75 years, starting from Samvidhan Sabha. Sir, today I remember when I came first to Rajya Sabha in 1984, when Justice Hidayatullah was presiding over that chair, and he was followed by, of course, R. Venkatramanji, Sangadel Sharmaji, and today you are in the seat, sir, and I thank you for that, that the Indian democracy and Indian parliament has come over years of development and strengthening the democracy in this country. So today, I congratulate the new Vice Chairman for taking up the chair. Thank you. Today, as we assemble here to reflect upon the parliamentary journey of 75 years, starting from inception of the Samvidhan Sabha, we embark on a profound exploration of our nation's democratic evolution. This remarkable journey has been marked by achievements, experiences, memories, and invaluable lessons that have not only shaped our parliamentary institutions, but have also left an indelible imprint
on the course of our nation's history. Madam Chair, while speaking on these 75 years of our journey, we must remember about some of the key milestones in the history of Indian Parliament. Madam, 1946, the Constituent Assembly convened for the first time on December 9th. So our journey starts from there. And in 1950, India adopted its constitution on January 26th, a momentous event for Indian parliamentary democracy. Madam, in 1952, the first general elections were held, marking the initiation of our democracy. And in 1956, the State Reorganizations Act has adopted, leading to reshaping of state boundaries. There was a struggle, and the then members of the Constituent Assembly had given shape to this country, and particularly by reorganizing the states for the convenience of the people and the administration. In 1957, with the second general election, the things have started moving, and in 1961, Goa, Daman and Diu were new states where the new states got liberation. They were liberated and they were recognized as state. Madam, one historic occasion we must remember in this regard is that for the first time, the preamble of the Constitution was amended. We all remember the 42nd Amendment. And in 75, 77, of course, that was the period that the Indian democracy will remember, and the parliamentarians particularly, and the people of this country will remember because of its effects on the people. Madam, in 1986, a historic bill was passed, the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act was enacted. This is one historic legislation where the women of all religion, all communities were given equal power, and that equal power and equal opportunity and equal right. So this one we must remember during the discussion of this in this debate. And the economic liberalization came in 1991 during the Prime Ministership of P.V. Narasimha Raoji. And today we are step by step we are ahead to liberalize the economy and the benefits of the economy reaching to the poor and vulnerable sections because of that. And today, the country is progressing. The country has got remarkable progress in the economic field, where today India is considered as the 5th largest economy in the world. And very soon, our Honorable Prime Minister has publicly announced that within next few years, India will be one of the 3 top economies of the world. Madam, another remarkable event during the progress of this democracy, during the progress of Parliament, was the GST. The GST was Goods and Services Tax was implemented, and streamlining the taxation system. One nation, one tax was the motto, and today we have seen that the national exchequer is enriched by GST, and remarkable tax collection has been made, and which is helping the development of this country. So I remember, and the country will remember, this GST taxation for the benefit and for the progress of this country. Madam, one nation, one tax. But till 2019,
Till 2019, this country had two constitutions, two flags, and this was possible to make one nation, one flag, and one constitution by the amendment brought by and the abrogation act of Article 370, which was brought in 2019, which says we can be proud of being one nation, one flag, and one constitution. And I congratulate the government for that. Madam, I did not disturb you, although you said certain objectionable things, including balkanization of the country. So please don't do that. And Madam, the great thing, the great war that India fought was the COVID-19 pandemic. The India not only come out of this pandemic successfully, but also help other nations, neighboring countries, to fight with this. And the biggest achievement was the vaccines that India manufactured, and vaccines, and the entire country was vaccinated, and today we are safe in terms of healthcare. Madam, while talking about the achievements, what during the 75 years of our journey, what achievements this country has made? Madam, the main achievement which we can today discuss is the inclusivity. This efforts towards inclusivity, one of our speakers was giving an example with a senior leader that it is not only India, other parts of the world also had the inclusivity in terms of women representation. The women representation has increased from 5% in 1951 to 14% in 2019. And the number of voters increased dramatically from 173.2 million in 1951 to 912 million in 2019. So this is not a less achievement. This has strengthened the democracy of this country. These things have improved, and this has brought achievement to our democracy, to our parliamentary democracy. Madam, some of the experience and some of the achievements that we have made is the 2023 where we are today. Today, we are sitting here in the Rajya Sabha chamber, and some of our members have become emotional also that maybe from tomorrow we will be going to the new building. This new building is that we have to cross a line. Up to this 75 years, we have achieved a lot. But from here, we have to make a leap forward so that this country becomes the developed economy. So next 25 years, in the new building of Parliament, we are having our Amrit Kal, where India will reach in the line of developed nation. So that will be our effort. And every one of us should make our efforts in our own way. Every Indian, every single citizen should make their own effort to make this country a developed nation by 2047, when we will be completing our 100 years of Indian Parliament and Indian democracy. So, in the
now I'm going to conclude because there are some more speakers. They are also, and this special station is today convened to commemorate the 75-year of journey of our parliament. What is our experience during this period? Sir, Madam, to conclude my speech here, I want to say that our journey through parliamentary evolution of India over past 75 years has been one of both reflection and insight. While we have witnessed certain challenges and shifts in the parliamentary dynamics, it is essential to recognize the significant efforts made to foster inclusivity within our democratic institutions. The rise of women's representation, the active engagement of citizens in public debates, the crucial role of parliamentary committees, and the passage of legislation aimed at social welfare and labor rights are testaments of our commitment to inclusivity. Madam, as we commemorate the key milestones in the history of the Indian Parliament, we are reminded of the enduring spirit of our democracy. From the adoption of Constitution in 1950 to the recent inauguration of a new Parliament building in 2023, these events signify our nation's growth, resilience, and adaptability in the face of challenges. As we move forward, Madam, it is imperative that we continue to uphold the principles of democracy, inclusivity, and transparency that have been the cornerstones of our parliamentary democracy. By learning from our past and embracing the opportunities of the future, we can ensure that our democratic institutions remain robust and responsive to the ever-changing needs and aspirations of our diverse and dynamic nation. Let us celebrate this journey, Madam. Let us celebrate this journey with pride and commitment to a more inclusive and vibrant future for Indian democracy. Thank you, Vice Chair, for giving me the opportunity. Thank you very much. माननीय सदस्य विक्रमजीत सिंह साइनी। Honorable Chairman, sir, and my fellow parliamentarians, today when I stand here to speak on this historic occasion of the transition from historic Parliament House to the iconic new Parliament building representing the new India, as India approaches a major milestone in the 75th year of the Parliament. Ma'am, Parliament House is not just a building of brick and mortar, whereas it is a living institution which has to be safeguarded and embrace the idea of India. It's the fundamental temper of our world's largest democracy. Indian Parliament is an aspiring story of our civilization's strive for respect and resources with our values intact as the largest democracy in the world. We embody the unique fiber of our being, unity in diversity, secularism, pluralism, social justice, and equal fundamental rights for each citizen. On this historic occasion, Chairman, I would like to remember and pay a homage to our ancestors, and as my father used to narrate, the horrors of partition still haunt us. I think Punjab and Punjabis suffered the most out of it. There were about 2 million people who lost their lives, and about 14 million people had to abandon their homes in the giant exodus. लाखों लोग बेघर हो गए और उन्होंने भारत को, इंडिया को, भारत अपनी मातृभूमि को अपनी जन्मभूमि माना और अपना सब कुछ, अपना कारोबार, अपने बर्तन, अपना जायदादें, अपना सब कुछ छोड़ के लाखों पंजाबी सफ़र करते हुए भारत को चुना, भारत को माना और फिर एज ए रेफ्यूजी दे स्टार्टेड देयर कैरियर और फिर रेफ्यूजी से बिल्डअप किया। ये उनकी देशभक्ति की
सबसे बड़ी निशानी है और उन्होंने इस देशभक्ति का अभी तक पैट्रियटिज्म हमारे सामने है. I also pay homage to all the great Sikh leaders who spurned the offer of then Muhammad Ali Jinnah and decided to upkeep India as their motherland, and Punjabis and Sikhs have been proving their patriotism till today. We Sikhs are not by chance Indians, we are proudly by choice Indians. Honorable Chairman, sir, we also pay tribute to them. Dehe Shiva, Var Mohe Ehe, Shubh Karmante, Kabhu na Taru, Jab Aав ki Aud Nidhan Bane, At hi Ran Mein, Tab Juj Maru. I would also like to remember on this historic occasion the Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, who drew the attention of the British Samrajya and this very own parliament to further strengthen the freedom struggle. In this same parliament building, while presenting the constitution to our country, Dr. Bhim Rao Ambedkar had said, however good a constitution may be, if those who are implementing are not good, it will prove to be a bad. However bad a constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good. So onus is on us parliamentarians on 75th year of the parliament. The dream, voice and aspirations of a nation suppressed by a colonial rule came to surface. As they say, with great power comes great responsibility. We all sit here as the public representatives. We are emblematic of the aspirations of 1.4 billion people who want us to serve them. We represent them. We are their voice. We are their eyes. We are their ears. Eradicating poverty, unemployment, corruption, agrarian crisis, casteism, communal hatred have no place for India, and this parliament have to work for the fundamental things like ensuring health, education, infrastructure, nation's inclusive development, women empowerment, youth empowerment. ये अमृत काल तभी ही अमृत होगा अगर हम विद्या का, शिक्षा का अमृत, सेहत का अमृत, हेल्थ का अमृत, रोजगार का अमृत हर एक गांव में हर एक भारतीय को पहुंचाएंगे. So we as representatives of our nationals, we have to conduct ourselves, define the character of the august houses, and therefore our conduct withholds our respect to the underlying values and nobleness of this esteemed institution forged for our safeguarding by our four leaders. Honorable Chairman, the disruptions which happens in the Parliament act as a hurdle in this fundamental process for a smooth functioning of Parliament. I personally think, with my experience of 1 year, both Treasury and opposition have to together play a positive and constructive role so that optimum productivity of this institution is maintained. I take this historic opportunity to pay homage to stalwarts like my elder brother, Shri Arun Jaitley ji, my elder dearest sister who given me love as a brother for 25 years, Shrimati Sushma Swaraj ji, and we pray for the long life of stalwart Dr. Manmohan Singh ji, who is here with us despite his ill health. It was Dr. Manmohan Singh ji who brought radical changes to the economy in 91, and he had said, कुछ ऐसे भी मंजिर तारीख की नज़रों में, कुछ ऐसे भी मंजिर हैं तारीख की नज़रों में, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई. It is our humble invocation to every individual sitting here, both from government, treasury benches and opposition, that we all should commit to this parliament, that in the new parliament house, we will ensure healthy debates, discussions, least disruptions and adjournments, and we do maximum work for the nation building. Jai Hind. Thank you. माननीय सदस्य श्रीमती ममता मोहंता. धन्यवाद आप सभी को मेरी पार्टी बीजू जनता दल के तरफ से इस पवित्र गृह में मुझे बोलने का मौका दिया, इसीलिए धन्यवाद देती हूँ. मेरा देश भारत धर्म, भाषा, वर्ण और जाति के
दायरे में से आगे हम सभी एक हैं। हम केवल भारतीय हैं। आप सभी भारत वर्ष का इतिहास जानते हैं। भारत देश कैसे और कब स्वाधीन हुआ, कितने बलिदान, त्याग, समर्पण के बाद स्वाधीन भारत हमें हासिल हुआ। इन सभी संग्रामी व्यक्तित्व को मैं इस पवित्र गृह से नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि ज्ञापन करती हूँ। स्वाधीन भारत के सभी लोग को शासन पद्धति में रख के सुविधा देने की स्वाधीन भारत के सभी लोग को शासन पद्धति में रखकर सुविधा देने की समय में देश को संविधान की आवश्यकता पड़ी, जो सभी भारतीयों को समानता प्रदान करे। स्वाधीन प्रणेता बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर को भी इस गृह से नमन करती हूँ, जिसके कलम की ताकत से इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं भी समानता प्राप्त कर रहे हैं। 1950 जनवरी 26 को इस संविधान लागू होने के बाद गणतंत्र भारत का शुरुआत हुआ। तभी से जाति, वर्ण, धर्म, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में सभी को समान सुविधा मिला। इस संविधान के चलते हुए देश में शासन पद्धति लागू हुआ। इस प्रजातंत्र अर्थात गणतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को समान गुरुत्व दिया गया। आज हम 21 सेंचुरी में पहुंच गए। विश्व के अन्य देश के हिसाब से यहाँ का लोकतंत्र और सुदृढ़ हुआ है। एक आदिवासी महिला आज राष्ट्रपति भारत देश का सबसे बड़ी पदवी महामहिम राष्ट्रपति की पदवी में अवस्थापित है। मैं एक आदिवासी जिला से आके यहाँ आप सबके सामने कुछ कह पा रही हूँ। इसी से बड़ी बात क्या है, महिला के विकास का और क्या उदाहरण दो। आज अगर आप कहीं भी जाओ तो ज़्यादातर इलाका में महिला जिला कलेक्टर, जिला एसपी, महिला सरकारी कर्मचारी ज़्यादा पाएंगे। शिक्षा क्षेत्र में आप देखें आईआईटी, आईआईएम, एमबीबीएस, यूपीएससी सभी क्षेत्रों में महिला को दबदबा है। भारत वर्ष में 700 से ज़्यादा आदिवासी वर्ग है। भारत के 8.6% इनका संख्या है। आज के हिसाब से संख्या बढ़ गई है। देश गठन के समय से ही इस वर्ग को गुरुत्व दिया गया है। सभी राज्य आदिवासी वर्ग के सामाजिक, आर्थिक विकास तथा उनका संस्कृति की सुरक्षा, भाषा की सुरक्षा दिया जा रहा है। उनके विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी भाषा में उन्हें शिक्षा दिया जा रहा है। लेकिन आदिवासी संप्रदाय के आंचलिक भाषा को सुरक्षा देते हुए प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना जरूरी है और संविधान के 8वें परिच्छेद में शामिल करना आवश्यकता है। शिक्षा क्षेत्र में भारत के पावन भूमि से चांद तक का यात्रा ही सबसे बड़ी उदाहरण है। यहाँ कितने विश्वविद्यालय, वैश्विक विश्वविद्यालय, भेषज विश्वविद्यालय समेत कितने अनुष्ठान हैं। यहाँ से लाखों संख्या में विद्यार्थी निकलते हैं जो देश विदेश में भारत का नाम रोशन करते हैं। इस देश में 77% से ज़्यादा शिक्षित है, 84% से ज़्यादा महिला और 71% से ज़्यादा पुरुष शिक्षित है। और कृषि क्षेत्र की बात कहूँ तो यहाँ 60% किसान हैं जिनको हम भगवान मानते हैं, क्योंकि ये लोग हमें 2 वक्त के खाने के व्यवस्था में जुटे हैं। सरकार भी इन किसानों के लिए बहुत योजना बनाए हैं। प्रति वर्ष स्वतंत्र बजट किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बदलाव आया है। सभी रोग का इलाज तुरंत हो पा रहा है। गमनागमन, शिल्प, टेक्नोलॉजी, विज्ञान क्षेत्रों में हम बहुत आगे हैं। आज हमारा देश बहुत आगे है। इन नए संसद गृह से भारत वर्ष का नया इतिहास लिखा जाएगा। सबको बधाई देकर मेरा वक्तव्य रखती हूँ। नमस्कार। डॉक्टर अमर पटनायक। Sometimes it is very good to catch someone off guard. Then the productivity and contribution is more genuine and authentic. Okay. Go ahead. Thank you, sir. Thank you, Chairman, sir.
So it's actually indeed a privilege for me to be present here, speaking about 75 years of Parliament of the largest and one of the most diverse democracies of the world. It's no mean feat, sir, that parliamentary democracy has flourished in this country because of this Parliament. What is currently happening or is about to happen is that we would be moving in a symbolic fashion from old to the new, from new to the aspirational, and from a democracy which was marked by bills and acts which laid the foundation, or which will be the foundation for several such new bills and acts in the future in the new building. Sir, I would like to speak about a speech which Dr. Ambedkar made in the Law College of University of Delhi way back in 1948. He says, "There could be no doubt that one of the countries which could boast of a great ancient civilization was India. It had parliamentary institutions when people of Europe were mere nomads. It is not that India did not know what is democracy. There was a time when India was studded with republics, and even where there were monarchies, they were either elected or limited. It is not that India did not know parliaments or parliamentary procedure. A study of the Vinaya Pitaka and the Buddhist Bhikshu Sanghas discloses that not only there were parliaments, for the Sanghas were nothing but parliaments, but the Sanghas knew and observed all the rules of parliamentary procedure known to modern times." So I would concur with what other members were referring to say that democracy did not really originate in Greece, but it originated many years before in this particular land. So if we are talking about Parliament, I would like to think that since we knew about the parliamentary functioning for a long time, and since we are talking about the Constituent Assembly gave us the Constitution. But it is the Parliament that helps to make the Constitution a living document by the process of amendments. And that is how each one has enabled and strengthened the other. And these amendments have actually made the Parliament, made the functioning of the Parliament closer to the socio-economic and political reality of each of the times, the entire history of this particular 75 years. So the role of Parliament, in a sense, anywhere in the world, would be fourfold. So one, to make laws, which will be evolving with the times. Second, to pass the budget. Third, to raise national, state, and local issues. And number four, to hold the executive to account by various procedures of question and answer and committees and PAC and COPO and other such matters. Now, if we talk about the first and the foremost duty of Parliament, that is to make laws, I know that the Parliament has made several laws. There are more than 100 amendments which have been passed, but I would like to concentrate on a few. And those are, the first one, on the center-state relations. So the Parliament, right from the time the Constituent Assembly debates have taken place, has been cognizant of the fact that the states have a very important role to play in democracy. In fact, Renuka Ray, she was a member of the Constituent Assembly, while agreeing with Pandit Kunjru, she says, "It is necessary that the center should be in a position to see that provinces do not fall behind in regard to the minimum standards of development. But agreeing with Pandit Kunjru, it is also not possible for a province to administer its responsibilities in an adequate manner if its financial position is unstable or uncertain. Therefore, the Parliament's job is threefold. One, legislative relations, administrative relations, and financial relations. While on the first two front, I think there has not been much divergence except occasional allegations of center legislating on the state list, the problem has been the financial relations, the devolution of funds. And I think this is where
our Chief Minister, my leader, Honorable Naveen Patnaik, has always been saying that the cess and surcharge which comes to the central kitty should be made a part of the divisible pool. I think this is what we have to look forward in the next 25 years to be happening, to make the states actually financially independent and financially sustainable to take the entire goal of the nation forward. The second aspect that I would like to talk about is on the issue of women, sir. So on the issue of women, the Parliament has passed several landmark legislations, and many of them have already been spoken about here. One is the Hindu Marriage Act. It removed polygamy, marriage of a maiden and that of a widow, the registration of Hindu marriage, the divorce, the Hindu Succession Act, which is very significant because it gave property rights to women, the Hindu Succession Amendment Act, Child Marriage Act, and several such acts relating to women. But I think it stopped short of one particular last legislation, and that is reservation for women in the parliaments and the assemblies. And that, you know, sir, our leader, Honorable Naveen Patnaik, has been taking it forward for a long period of time, sent emissaries to all political parties. We have spoken here all the time to bring this legislation so that women, the gender parity and the gender equity, the theme reaches its final conclusion by this parliament, whether here or in the new building. And the last point, sir, that I would like to talk about is environmental constitutionalism. Sir, this is the Parliament which has passed most of the environmental laws, starting with Air Pollution Act, Prevention of Air Pollution, Prevention of Water Pollution, Environmental Protection Act. Several such laws have been passed, and that is how the Parliament has responded to the existential crisis that is facing this world at large, which is happening because of climate change. I think the Parliament has responded very well, but there are two gaps which probably could be brought in, and that is how the Parliament of India would have responded to the world, and that is to bring in a legislation to ensure that net zero is reached in a fixed period of time, and incentives are given for proper environmental response. So last point, our Parliament, while we transition from here to that building, would also mark a transition in the way the Parliament of India is responding to technology, sir. So we are moving from a physical, more of a physical parliament to a parliament which is both physical and digital, Sansad, sir. It will be it is not a hybrid, but that will be the way forward, sir. So I think with this, I would end my speech. Thank you so much for giving me these opportunities. Well, you are very well audited. That's your background. Sri Tiruchi Shiva. Thank you, Chairman, sir. Sir. Thank you, Chairman, sir. Here and there. Sir, called as a special session, sir. We are still not aware of the business to be transacted in the remaining 4 days. A shock or surprise may be awaited. We'll have a business advisory committee. Sir? And we'll have a business advisory committee, sir, tomorrow, and you'll be enlightened. As of now, and for tomorrow, you know everything. Okay, sir. Go ahead. As of now, I am telling. So a shock or surprise or nothing is awaiting, and we are also awaiting. Sir, we have completed 75 glorious years of independence and 72 successful years of journey of the Parliament. Sir, this milestone makes it important to recall the hopes, the ideals we have cherished, we have accomplished in this Parliament, fulfilling those visions of the people who fought for freedom and those who drafted the Constitution. Sir, at the outset, I would like to pay my tributes to those who laid down their lives for our freedom, the independence which we are enjoying. Starting from Pulitevan, Veerabandya Kattapomman, Marudu brothers, Velu Nachiyar, Kuyili, and Tilakar, Gokhale, Mahatma Gandhi, Nehru, Sardar Patel, VOC, and unsung heroes and unsung heroines, which is very, very important, sir. Sir, I think this is the right time to tell that. In a freedom struggle in Tamil Nadu, many women participated with involvement. One lady participated with a 1-year child in her hand.
And when the police attempted to disperse the crowd, they opened fire. And when the crowd dispersed, she fell in a place. The flag which she was holding was in another place. The child fell in another place. And the bullet that was fired hit the infant and the child died, sir. A child who knows nothing sacrificed his life, and that mother of the child named Kalimal, she didn't hesitate. She again took the flag and marched on. So many unsung heroines or unsung heroes who have to be recollected at this very proud moment. So democracy is a popular sovereignty. The concept of this popular sovereignty is attaining its completion by way of the functioning of the parliament. Sir, in post the first Indian general election in 1952, the Manchester Guardian commented, parliamentary institutions have not had a very good time in Asia. All that is happening in Asia throws a spotlight on the parliament in Delhi as the one institution of the kind which is working in an exemplary way. So there are two salient features which has brought India to as a focus as a largest democracy. One is our constitution and another is the parliament. Sir, Thomas Jefferson, the architect of America, once said that no constitution will survive the test of time more than 20 years. But ours is very vibrant even after 72 years because of the amending provisions. We have changed to time. And ours is not only the longest, and it has been discussed with a very long period of nearly 3 years. Sir, democracy, when it came into existence, some people say Greece, some people say somewhere else, but we are the predecessors, we are the foreigners in everything. For example, in Tamil Nadu, sir, early Chola period, that was in 2nd, 3rd century, some excavations near Chennai, Uttaramerur, brought out the fact that there was a Kudavole system, that is a Yarsan part, in which people will write on the palm leaves their choice of candidate and would deposit in that, and a child would pick up and that person will be the sarpanch of that area. So this democracy has been in India for more than 2000 years, that too from the southern end, sir. Sir, coming to the parliament. Sir, sentiments are not attached only to humans, of course to buildings too. I can recollect many things. And even if you move to a rich looking new parliament, sir, I think you or I, many of us would visit this parliament and especially the central hall. How can we forget that, sir? How many things have happened which is in history? Sir, the foundation stone for this parliament was laid in February 1921 by Duke of Connaught. And it was inaugurated by Viceroy Irwin in 1927. 6 years it took place. Sir, we should be very happy to note that the buildings were designed by Sir Herbert Bhaskar along with Edwin Lewin, architects of the new imperial capital. That is not the issue, sir. What I would like to highlight here is the sandstone columns in our parliament is a state of the art. And it is said that 2,500 stone cutters have been employed to design the top of the parliament, and almost it took so many years. 2,500 stone cutters and masons were employed to shape the marble there. And the central hall, sir, originally it was designated to be a library. Sir, you know very well everything. And later the Constituent Assembly sat there for 4 years, from 46 to 50. And after that, sir, it's a surprise that Supreme Court had its sittings here in the Central Hall, till it migrated to 1958 in the present building. And this Central Hall has witnessed a lot. Sir, I can hear two sounds. In June 1929, they recorded the blast of bomb which was thrown by the revolutionary Bhagat Singh and H.K. Butt to attain freedom. And thereafter in 2001, there was a terrorist attack in the parliament which was to foil our freedom and a challenge to democracy. But this parliament withstood that, sir, thanks to
the design and construction of this, as well as the security guards who were very much awake and acted to the situation. Sir, this circular shape of this parliament is a reminiscence of the Rome Colosseum, they say. So, see, I have been here for more than 2 decades, sir. I have been once in Lok Sabha and the 4th term here, sir. No other place in the world I love than this parliament premises. For many reasons. For many reasons. Sir, we have been contributing our service through this parliament. We voice out the people's aspirations. We fulfill their expectations. We redress their grievances by urging the government to understand and act. So this is it. This is the setup of a parliament. We make the government accountable. And this way we have worked a lot and have contributed, and we are setting a trend to the whole world, sir. And this central hall has seen so many. Again, sir, you know very well, it starts from Richard Nixon, then Eisenhower, then Khrushchev, sir? Many have come. Khrushchev, sir, Margaret Thatcher, Barack Obama, along with our presidents have addressed the joint sessions of parliament after the general election and before the commencement of every year. And people like you, sir, as vice presidents, what all they have done. Sir, all these are reminiscences. So what's your point, sir? Coming, sir, I am pricing about sentiment. This building. We are attaching our sentiment. When we are celebrating 75 years of independence, sir, I have to exalt the building, sir, the parliament. It's not just a building, sir. How many laws? See, in the first 2 terms of this parliament, 1952 and 57, it's only 700 laws have been enacted in this parliament. 700 laws. And moreover, in those first 15 years, till 67, the legacy of the freedom struggle continued by Congress and as well as opposition parties were there. Who were all there? Communists, the socialists, as well as the culturally conservative Johnson. So you are getting sentimental beyond sentiment. Sir, what exactly are you focusing on? Party. And sir, after the DMK entered into the parliament, the doors were open for the regional parties. In a federal setup, the regional parties should have a very important place, and it cannot be dispensed of, was established only after DMK came here. Our founder leader, Anna, how his voice echoed in this August House, upper house, sir, it is still in the annals of history. Sir, I also visualize who all have been here. Pandit Nehru, Dr. Ambedkar, Lal Bahadur Shastri, Kripalani, Madhu Dandavade, Vajpayee ji, Advani ji, Ramanohar Logia, and our beloved Anna, until Murasali Maran, sir, your colleague when you were in the Ministry of VP Singh, sir. His performance in Doha conference is still a history. Sir, coming to all these points, sir, I think I have some time, sir. No, sir. No, what I am doing is that the main opposition party, their entire time had been taken by the Honorable LOP. But I would still accommodate some of them, given their huge experience. That being the situation, I am rationally, uniformly curtailing time, more of the ruling party, but of others also. So please cooperate with me. Sir, I could hear, though I was not there, the Tryst with Destiny speech of Pandit Nehru. The Tryst with Destiny, the speech delivered by Pandit Nehru at the stroke of the midnight hour, sir. No, what I said was that we had a tryst with destiny. Sir? We had tryst with destiny in 15th August to 1947. Yes, sir. Long Again, years the ago, parliament we had met here at midnight, rolling out a GST regime. When so the whole world sleeps, India after a gap of 70 will years. awake to life and freedom, sir. He started his speech. Sir, I had the privilege of being here during the golden jubilee of the independence, sir. And in the central hall, we heard the speeches of Mahatma Gandhi and Netaji Subhash Chandra Bose. And that's a very green memory. So also these speeches, sir. And after the speech of Pandit Nehru, very important here is we have to recollect this mentioning of Dr. Ambedkar, the architect of our constitution, because this is the right time when we are speaking about constitution, we have to preserve also.
So I have to quote only two things, one of Ambedkar's and another of Anna. However, a constitution may be, quote Dr. Ambedkar, however good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. Okay, sir. However bad a constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good. If those who are called to work it happen to be a good lot. The Constitution can provide only the organs of state such as legislature, executive and judiciary. The factors on which the working of those organs of the state depends are the people and the political parties they will set up as their instruments to carry out their wishes and their politics. That is the Climax. matter. Climax is, sir, if I find the Constitution misused, I shall be the first to burn it. I'll be the first to burn it. Sir, it was said by none other than Dr. Ambedkar, sir. So also, during his last speech in the Constituent Assembly, he congratulated everyone, those who supported and those who dissented. The proceedings of this Constituent Assembly would have been very dull if all members had yielded to the rule of party discipline. Party discipline in all its rigidity would have converted this assembly into a gathering of yes men. So he says that, he goes on to thank all those who dissented also. It has a relevance, sir. Huh? It has a relevance. All I can say, everything has a one relevance, second. sir. All I can say, Dr. Ambedkar had been very prophetic. Very? Very Yes, sir. prophetic. Yes, sir. Yes, I sir. wish That's why the I quote, people sir. sitting in this house would be in a position to take a call while being here. That's something which has That's eluded us. two things I quoted very much, sir, here. However, a constitution may be good, if those who are implementing it are not good, it won't prove to be bad, number one. And second, he has said if it is misused, he will be number one to blame. Thank you. Sir, and our late leader, Anna, very important, sir, he entered into this parliament and said, I am from the Dravidian stock. I have something distinct and different to offer to the nation at large. He started, and very important, he spoke during the Official Languages Amendment Act, sir. Sorry. Please conclude. Sir, sir. Yeah. If it is uniformity, quote, Anna spoke, if it is uniformity that you are going to aim at, you are not going to achieve it, come what may. This country consists of different ethnic elements, different cultural elements, and different linguistics groups. It is only unity within this diversity that we should arrive at, and not by destroying the fine niceties of this diversity, mistaking uniformity for unity. May I ask members of this House and the Prime Minister whether language alone is the cementing force needed for the unity of this country. There are regional imbalances, there are regional leanings, there are linguistic leanings. All these things have got to be bridged if you want to have a sort of unity without uniformity for this country. Unquote, sir. Thank you. Unquote, sir. Sir, this Parliament has experienced very well. It has flourished all the diversities, sir. Our social, regional, linguistic, ethnic, religion, everything. But that has to be maintained. That is our foremost wish, sir. Sir, many things have to be observed. I don't know, sir, why you are hurrying up when you have been liberal with everyone, sir. Sir, even your time is over. Yeah, sir. Sir. Yes. Give me 2 more minutes. Let me conclude, sir. Let me conclude, sir. Sir, everyone is optimistic that when we move to the new parliament, it's a new building, but our convention will be the same. Our functioning will be the same. We will be upholding democracy as the constitution, which is our guiding light and guardian. And it is the responsibility and duty of everyone. Sir, the parliament understands and establishes whoever is in the opposition will be the ruling party next time. So this is, of course, democracy. The parliament understands, it has been repeated. Sir, I would like to say only one thing, sir. In the recent days, the space for the opposition is shrinking. There has been a decline in the ability of the parliament to hold the government accountable.
with fewer days of working, scrutiny of legislative proposals is weakening, expansive executive control over the legislative process persists. Government resorts to ordinances than legislation. Sir, this is only our concern, sir. At least we have to be free. Because, sir, you know very well. Experiences of journey. You are right. Yes, sir. But when I look within, yes, sir, I find lost opportunities. Enough opportunity was available. Why that was not availed? We have to be very rational, committed. It is good to speak these things. Yes, sir. Good to talk of sublimity. But I keep a diary. And mind you, I am in pain. Sir, I did everything in spite of perception, whatever be around. Sir, to make available platform. To have sir, it was not there. Let us hope, pray and wish that we will avail every opportunity to make a contribution in this great theatre. Sir, we repose our confidence without disturbance, without disruption. Shri S. Niranjan Reddy. Sir, only last sentence. Sir, the ideals of Anna, the Dravidian policy, and sir, we are second to none in upholding the sovereignty of this country, sir. When Chinese aggression came, we gave up our policy, the individual Dravidian order. And when the Bangladesh war came, our then Chief Minister, Dr. Kalaignar, gave 6 crore rupees, the first ever in the state. Shri S. Niranjan Reddy, 5 minutes. Go ahead. And we will Thank you. Thank you, Chairperson. Sir, I think it is my fortune that I finally got to address the House with you being in the chair, maybe on the last day of the House being in session. In this House. Sir, parliamentary journey of 75 years is quite a historic occasion for someone like me to have an opportunity to speak. Sir, I regard myself as someone who is relatively inexperienced and young parliamentarian because I have only completed 1 year. Maybe I bring the advantage of fresh eyes to see the ongoings of the parliament, to maybe give some inputs of mine, sir. And sir, but I have been an old student of the Constitution. I was going to actually speak little more about it, sir, until I realized you have much more experience than me about understanding the Constitution. Sir, I think the single biggest achievement of our Constitution has been that it has managed to survive. It has managed to survive, sir, despite some challenges it faced during some emergencies. It has managed to survive despite it being tested during a long coalition period when the country came out democratically rich. Sir, it has continued to serve the country most positively. Sir, while we speak of the new Parliament House and where the functioning may shift, sir, I remind myself that we belong to the Rajya Sabha, which is a continuous house, and we are serving under a constitution which is a continuous document. So both of these are going to be permanent features, sir, that would possibly guide the functioning of our house even in the new parliament. Sir, my passion with this constitution subject started with my reading of the Constituent Assembly debates. Sir. Today's topic is Samvidhan Sabha and the Constitution working for 75 years. Sir, every time I read the Constituent Assembly debates, they are an education in itself because the quality of debates, the kind of divergent views that were expressed in a very productive manner and the symbiotic manner in which the Constitution came to be forged, sir, resulted in the most prolix Constitution and the most living and breathing Constitution, sir. So in my view, when someone says that the Indian Constitution is possibly one of the most amended Constitution with more than 100 amendments, it is a salute to the Constitution that the Constitution permits such changes to be made having regard to the diversity and the advances of the society. Sir, we have remained up to date with our Constitution. It is possibly the most brilliant legal document that the world has seen, sir. Sir, in terms of the learnings and challenges, sir, I think we have completed 72 years of being a republic.
we have completed more than 75 years from the time the Constituent Assembly originally sat to prepare the Constitution document. Sir, I think when we now move into the new house with possibly new infrastructure and digital infrastructure, so we may have to be mindful of a few challenges we may have having regard to the learnings of the past. Sir, one of the challenges that I would be looking at, and I'm quite sure, sir, the government would steer us through these challenges, would be the role of states. Sir, I would like to just, maybe, sir, my inexperience and my green eyes, it allows me to see something where I find that Rajya Sabha increasingly is becoming like an echo chamber of the Lok Sabha, where we debate the same issues on the same footings and on the same concerns. Sir, we are a council of states. We represent the states. So I would, sir, prefer and I would suggest, but subject to correction by all the seniors here who are much more experienced than me, that when we possibly move into the new house, we look at our role as a council of states more seriously. We may have to look at representing the interests of states. So when I speak of representing the interests of states, I do not speak in terms of a divisive central versus state sphere, sir, because I also understand that the same party which is ruling the central government is in power in majority of the states. So when we speak of state subject, state interests being protected, it is not a divisive debate that I am trying to provoke, sir, but I am trying to say that it can be done in a constructive manner. So one other challenge that may be facing us, yes, sir, I am taking only one more minute, sir. One other challenge that we may have to encounter, sir, with the enlarged space in the new Lok Sabha, there are a few concerns about the South Indian states and the more developed states feeling that will they be, in that sense, outnumbered, because Article 82 gives a protection up till 2026. Would that be balanced in some manner? Sir, I'm sure we'll have an opportunity to debate it, but I think it's a matter of concern which I just wanted to place for the House to consider in due course. Sir, then the last point I want to make, sir, is we are now moving towards a developed nation, sir. We have that 25-year goal. We would want to commend the government and support it fully. As Indians, everyone wants India to be a developed country. But development, sir, in many respects, apart from the material development that we are gaining, sir, I would think that the very fact that we are preserving the constitutional ethos in its fullest form is possibly the greatest tribute to India as a democracy. And sir, the most satisfying thing for me about G20 was India calling itself as a mother of democracy, because that clearly shows the path India wants to take going forward as a democratic country. Sir, I thank you for granting me an opportunity for speaking on such an important occasion. Shri Rajiv Shukla, very brief. सबसे पहले तो ये डिबेट कराने के लिए कि जिसमें संसद भवन से आज हम सबकी विदाई हो रही, कल से नए संसद भवन में जाएंगे, तो इसकी ऐतिहासिक यादें सब उनका यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। इस छत के नीचे एक से एक महान लोग आए, एक से एक लोग यहाँ से रह के गए, उनके भाषणों की प्रतिध्वनियाँ आज तक यहाँ गूंज रही हैं। और जब कोई आता है सर तो बड़ा उत्साह होता है, और जब जाता है तो विछोह का दुख होता है। यहाँ से जिस तरह की स्थितियाँ होती, हमने वो झेला है, दोनों स्थितियों और दोनों बार भाषण किए हैं। तो ये सर जो है एक ऐसी जगह है जो एक मिलन केंद्र है। आपकी बाहर कितनी भी शत्रुता हो, कितनी भी कटुता हो, कितनी भी दुश्मनी हो, लेकिन यहाँ आके सब एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, और ये लोगों को जोड़ता है। ये स्थान वो होता है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि राजनीति में, लोकतंत्र में कटुता के लिए कोई स्थान नहीं। देयर इज नो प्लेस फॉर एक्रिमोनी in Indian politics. There can be difference of opinion, हमारी विचारधारा के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन शत्रुता दुश्मनी के स्थान नहीं होना चाहिए। यही चीज़ें सभी सिखाती हैं। और मैंने देखा कि एक बार सर मधुलिमा जी नए एमपी होके आए, लोकसभा में उन्होंने जोरदार भाषण पंडित नेहरू के खिलाफ दिया, और उन्होंने सुना, और जब शाम को वो घर जाने लगे तो उन्हें कहीं पता लगा ये नया जो युवा आज बोला ये कहाँ रहता है। तो उनका जी वो साउथ मेन्यू में रहते हैं। बोले उसके घर ले चलो। प्रधानमंत्री उनके घर पहुंच गए और उन्होंने घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला तो नेहरू का व्यक्तित्व था ही। तो मधुलिमा जी नए एमपी आए, एकदम घबरा से गए कि आप सब कैसे यहाँ पे। प्रधानमंत्री पहुँच के उनके कहले चाय पिलाओ तुम। उनके यहाँ बैठ के जब उन्होंने कहा तो चाय पी उनके साथ कहा कि तुम जो है ना बहुत अच्छा बोलते हो, और तुमने हाँ चाय पे डिस्कशन में उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो।
और जो है तुम्हारे अंदर क्षमता है। लेकिन एक चीज़ मैं सलाह दूंगा, एक उसके नाते, एक राजनीतिक के नाते, कि तुम थोड़े फैक्ट्स आगे से करेक्ट करके लाओ। तुम्हारे ये फैक्ट्स गलत थे। तो लिमय जी ने, मधु लिमय जी ने अपनी किताब में लिखा संस्मरण में, कुछ दिन के बाद से मैंने तय किया कि जब मैं संसद में बोलूँगा तो अपने तथ्यों को बिल्कुल ठीक करके बोलूँगा। और उसके बाद बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन हुए लिमय जी। इसी तरह से क्या ना कि यहाँ पे जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब मैं संसदीय कार्य मंत्री बना तो प्रणब मुखर्जी जी थे, उन्हीं के उसमें हम लोग काम करते थे, उनका बहुत अनुभव था। तो मुझे बोले कि देखो वही सबसे अच्छा पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है जो रघुराम मैया होते थे, कि जो हमेशा अपोजिशन बेंच में बैठा दिखाई दे। तुम्हारा इस चीज़ से जाना जाएगा कि विपक्ष के साथ तुम्हारे रिश्ते कितने अच्छे हैं। और अगर इसके लिए नहीं जाने जाओगे कि तुम बैठ के सत्ता पक्ष की तरफ क्या कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें संसद को उसमें देखने को सीखने को मिलती हैं। ये स्थान सर सेंट्रल हॉल जैसे चीज़ का प्रतीक है। कितनी भी शत्रुता हो, आमने सामने पड़ जाते हैं, बैठ के चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, वहाँ से बात खुल जाती है और आपस में मेल जोल हो जाता है। तो ये संविधान भी जो यहाँ पे बना वो हर प्रधानमंत्री का योगदान है, चाहे नेहरू जी का हो, चाहे शास्त्री जी का हो, चाहे मोरारजी देसाई का हो, चाहे जो है उस इंदिरा जी का हो, चाहे राजीव जी का हो, चाहे चौधरी चरण सिंह का हो, चाहे नरसिम्हा राव जी का हो, चाहे देवगौड़ा जी का हो, गुजराल साहब का हो, अटल जी का हो, मनमोहन सिंह जी का हो, और अब मोदी जी का, सब जो है आते हैं, सब काम करते हैं। तो ये सब जो है हमें आपस के यही संकल्प लेना चाहिए। आज की नए भवन में जा रहे हैं तो हम ये मन बदलें, दिल बदलें। जैसे अटल जी ने कहा था कि जो है ये ऐसी सत्ता आती हो जाती हैं, पार्टियां बनती बिगड़ती हैं, लेकिन जो है मन मुटाव नहीं होता। दिल जो है हम लोगों के उसी तरह रहने चाहिए, आपस में मिलजुल करके। और विपक्ष के पास है क्या सर, डिप्टी चेयरमैन सर, विपक्ष के पास क्या है? सिर्फ संसद में बोलने के लिए। उसके पास न ऑफिस है, न दफ्तर है, न ऑर्डर करने के लिए फाइल है, कुछ तो नहीं है। सिर्फ अपनी बात कह सकता। अगर वो बात कहने का भी अवसर विपक्ष को ना मिले तो फिर विपक्ष के पास रह क्या गया? तो ये जो है संसद में ही होना चाहिए कि नई बिल्डिंग में नए बड़े दिल के साथ जाएं, कटुता छोड़ें, शत्रुता छोड़ें, हैं, मिलजुल के और काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। 1 मिनट सिर्फ लास्ट मेरा है। और परिवार की तरह रहें, क्योंकि दुश्मनी 1 कदम 2 कदम, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे, उससे क्या फायदा है? राजनीति में दुश्मनी की तो कोई गुंजाइश होती नहीं। और लोग तो लगे रहते हैं, चारों तरफ लकड़ा हरे हैं, फिर भी पेड़ कहाँ हरे हैं? तो यहाँ लोग जुटे रहते हैं, यहाँ पे कहाँ वो ये करके। और जो भी आता है, चाहे हम इधर रहें चाहे उधर रहें, सबको एहसास होना चाहिए कि जो है ना कि शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है, जिस साख पे बैठे हो टूट भी सकती है। ये सब एहसास हमें रहने चाहिए। तो बस जो संकल्प है नई संसद में जो हम जा रहे हैं तो उसका ही होना चाहिए। मैं उसको स्वागत करते हुए यही कहूँगा कि वहाँ जाके हम अपने मन बदलें, दिल बदल के बैठें। और दूसरी चीज़, वहाँ पे आके हम गरीब कल्याण के लिए काम करें, महंगाई पर काबू करें, युवाओं को रोजगार दें, सबको न्याय दें। एक और बात कहूँगा कि जुडिशियल रिफॉर्म्स आनी चाहिए। जुडिशियल रिफॉर्म्स अभी तक नहीं आए, वो काम नई संसद होना चाहिए। राजीव जी, अनेक और वक्ता हैं, प्लीज। और आपके माध्यम से इस बिल्डिंग का उपयोग क्या हो? ये ऐतिहासिक बिल्डिंग, यहाँ सब कुछ हुआ, सबने बताया, लेकिन इस बिल्डिंग का उपयोग क्या होगा? इसके उपयोग पे भी सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसी ऐतिहासिक धरोहर, इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल होना चाहिए, व्हाइट एलिफेंट बन के ना रह जाए। धन्यवाद। संसदीय कार्य के लिए किसी न किसी कार्य, धन्यवाद माननीय राजीव जी, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय फौजिया खान जी, माननीय फौजिया खान। सर, ये लोग हैं। जिस इमारत में हम आज जिसको अलविदा करने जा रहे हैं सर, ये इमारत सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हमारे संसदीय लोकतंत्र का मंदिर है सर। ये हमारे संसदीय परंपराओं का खजाना है। ये हमारे प्यारे भारत के सपनों का गुलिस्तान है सर, जिस इमारत को आज हम अलविदा कह रहे हैं। सर, द सोल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी dwells here. It is through this parliament that India has lived by our constitution. सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 महिला सदस्य थे। उनमें से एक महिला सदस्य दक्षिणयानी वेलियंदन, इन्होंने कहा था, a constituent assembly not only frames a constitution but also gives the people a new framework of life. Sir,
It is by this framework of life that we are living in this parliament. This is certainly, sir, not like an old faded garment which we discard and it is replaced by a glittering attire. This institution has a history. It has sanctity. The soul of democracy, sir, is important. डर ये है कि कहीं सर जब हम अपने इमारत का शरीर बदलने जा रहे हैं तो कहीं लोकतंत्र की आत्मा यही न रह जाए सर, ये डर है. The Constitution of India came into force on 26 January 1950. The first general elections under the new constitution were held during the year 1951 and 52, and the first elected parliament came into existence in April 1952, sir. Since then, this parliament has been the custodian of democracy. Sir, this has been the custodian of the dreams and aspirations of the people of India. This has been the custodian of the rights of men and women and children, sir. This has been the custodian of equality and justice. Several prime ministers have led this country. Several prime ministers have led this glorious nation, sir. Their vision, their contribution has made India grow like a 75-floor skyscraper. We are a skyscraper now. But that foundation, sir, is very, very important. And this foundation was laid by Shri Jawaharlal Nehru, who was 16 years Prime Minister of India, who has been called the father of modern India, sir, who carried forward the noble ideals of Mahatma Gandhi and laid the foundation of socialist, secular values and communal harmony. Sir, we cannot forget, sir, that it was his vision of modern India and his decisions of starting IITs, IIMs. Madam, please conclude, madam. Sir, it's over? Yes, 3 to 4 minutes. Jo others mein 3 to 4 minutes, please. All right, sir. Sir, I will say that coming back to the context of the present times, I will say many prime ministers have led this country. Rajiv Gandhi ji has brought about the IT revolution, sir. He has brought reservation for women in the local self-government. There are so many decisions taken. Indira Gandhi was a prime minister who broke Pakistan into two. वो आयरन लेडी जिसकी वजह से पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए हैं, सर. ऐसे Sir, please give me a minute at least. Please. It's already 4 minutes, madam. Please give me a minute, sir. This has been the time which has been allocated here. 3 to 4 minutes, please. Please cooperate, please. Should I conclude or should I stop? Please conclude. Please conclude. Okay, sir. Last में इतना ही कहूँगी कि आज हम मन की बात कर रहे हैं. आज सरकार मन की बात करती है, लोग सरकार के मन की बात करते हैं. सर, लेकिन हमारे जो तिरंगे के रंग है, आज वो सरकार को नजर नहीं आ रहे हैं, सर. जो 3 रंग है, वो नहीं दिख रहे हैं. शायद कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी हो गई है. क्योंकि सर, ये कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी आज जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, जो सीबीआई है, ईडी है, हमारे जो अलग-अलग ऑटोनोमस एजेंसीज है, आज उनको एक ही रंग नजर आ रहा है, सर. थैंक यू मैडम, इट्स ऑलरेडी 5 मिनट्स. 3 मिनट के बजाय 5 मिनट आप बोली. थैंक यू. डॉक्टर रामगोपाल यादव जी, प्लीज. हिट करने को लगे तो श्रीमान, समय तो है नहीं, टॉपिक ऐसा है जिस पे पूरे दिन बोला जा सकता है, लेकिन बहुत जो लिमिटेड टाइम होगा 2-3 मिनट का, मैं उसमें ही अपनी बात खत्म करूँगा. हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे, यात्रा यही है. यात्रा की बिगिनिंग होती है, यहाँ से शुरू की थी, कहाँ पहुँचे, अभी ख़त्म नहीं हुई है. नेहरू जी से चले, मोदी जी तक आ गए, आगे कहाँ पहुँचेंगे वो तो आगे की बात है. मैं 2-3-4 उदाहरण दूंगा. ये ज्ञान में देने के लिए आज खड़ा नहीं हूँ. एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, इलाहाबाद गए.
समाजवादी युवजन सभा के लोग जनेश्वर मिश्र, मोहन सिंह, ब्रजभूषण तिवारी के नेतृत्व में उन्होंने काले झंडे दिखाए थे। नेहरू जी ने अपनी गाड़ी रुकवाई, उतर के आए, बोले इन लड़कों को बुलाओ, और पूछा कि भाई क्यों काले झंडे दिखा रहे? लड़कों ने कहा कि हमारे यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ा दी और हॉस्टल की फीस बढ़ा दी। हम गरीब लड़के आसपास के गांव के जहाँ रहते हैं हॉस्टल में कोई पढ़ने की स्थिति में नहीं। नेहरू जी ने तब सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी, लेकिन पंडित जी तो वहाँ के लिए कह ही सकते, तो कोई बात नहीं। नेहरू जी ने कहा कि भाई वाइस चांसलर को बुलाओ। बीसी से कहा कि आपने फीस क्यों बढ़ा दी? कल तक ये आदेश वापस हो जाना चाहिए। आदेश वापस हो। एक बार जनेश्वर जी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बाहर निकाल दिया, एडमिशन दोबारा ले नहीं रहे थे। पंडित कमलापत त्रिपाठी उत्तर प्रदेश से शिक्षा मंत्री थे। पंडित जी के पास लड़के गए तो उन्होंने बीसी से कहा कि इसे दाखिला दीजिए, कि नहीं ये लड़का आंदोलन बहुत करता है। तो पंडित कमलापत त्रिपाठी ने कहा कि आंदोलन नहीं करेंगे तो नेता कैसे निकलेंगे इस यूनिवर्सिटी से, और दाखिला किया। फिर जनेश्वर जी इस देश के कई मंत्रालयों के मंत्री भी रहे। मैं कहना ये चाहता हूं कि उस अब 300 दिन से ज़्यादा से लड़के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अनशन किए हुए हैं कि स्टूडेंट यूनियन का गठन होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। 300 दिन से ज़्यादा हो गए, बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में होने जा रहे हैं स्टूडेंट यूनियन के चुनाव, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है प्रयागराज यूनिवर्सिटी, उसमें नहीं करने जा रहे। और 2 उदाहरण और देंगे, रूपाला साहब नाराज मत होना। पूर्वांचल उसका एक्सप्रेस का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री जी गए। हमारे मुख्यमंत्री उनको रिसीव करने के लिए खड़े हुए थे, तो स्वागत गाड़ी आगे चली गई, हमारा मुख्यमंत्री पैदल पीछे पीछे चला। तो कब तक चलता रहा? कोई केयर करता है? नेहरू जी लड़कों के लिए खड़े हो जाते, लेकिन प्रधानमंत्री गाड़ी मुख्यमंत्री के लिए नहीं खड़ी हो। तो आपके यहाँ क्या हुआ गुजरात में? उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद अगले दिन ही या दूसरे दिन गुजरात में प्रधानमंत्री का रोड शो था। सारे देश ने देखा कि नहीं आपके मुख्यमंत्री खड़े हुए, तो एसपी जी ने साइड करके चला गया, हटा दिया और सीधे गाड़ी चली गई कारवां, मुख्यमंत्री खड़े रह गए। तो एक हम चले वहाँ से थे और पहुँच गए यहाँ। इसलिए अब विचार कीजिए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम को कायम रखना है कि नहीं रखना है। नए सदन में जा रहे हैं, इसमें तो बहुत बड़े बड़े लोग रहे, बहुत बड़े मन के लोग रहे, बहुत उच्च कोट की यहाँ बहसें हमेशा हुई हैं। इसने देश को बहुत कुछ दिया। संविधान सभा में तो हमारा लोगों ने कहा ही, आप सब जानते हैं कि दुनिया का जब बना तो ये सर्वश्रेष्ठ संविधान था। क्या हम उस संविधान को ठीक तरीके से रख सके, उसमें कुछ जोड़ सके? सिर्फ रोजाना घटाने का काम कर रहे हैं। अगर हम सत्ता में बैठे हुए लोग देश के हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखेंगे तो काम नहीं चल सकता है। कानून बनता है कुछ चीज़ों को रोकने के लिए। कानून सारे देश की जनता को आतंकित करने के लिए नहीं बनाया जाता है। ऐसे ऐसे कानून बने, अपराधियों पर लगना चाहिए, आर्थिक अपराधियों पर लगना चाहिए, लेकिन कहीं व्याख्या नहीं है जिस पर चाहें, जिसको चाहें उस पर पुलिस जाके पकड़ लेगी, ईडी पहुंच जाएगी, ईडी पहुंच जाएगी। क्या ये संविधान की मंशा संविधान निर्माताओं की इस तरह के कानून बनाने की रही थी? कभी नहीं रही होगी। बहुत डेमोक्रेट थे और सारे लोग थे, और इस संसद में बैठकर भी इस तरह के कानून नहीं बने। कोटा बना, टाडा बना, सब बने, लेकिन वापस हुए कि नहीं हुए? अटल बिहारी वाजपेयी बड़े आदमी थे, अडवाणी जी थे, यहाँ उस सदन में इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी से लेके बहुत बड़े बड़े लोग थे विपक्ष में। डॉक्टर लोहिया रहे और पहले रहे। संविधान सभा में तो थे ही सारी इंटेलेक्चुअल क्रीम देश की, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़े लोग रहे, अच्छे कानून बने। कल यहाँ से आपके कम्युनिस्ट पार्टी के हिरेन मुखर्जी, यहाँ भूपेश गुप्ता, तो जाने कौन कौन रहे, हर क्षेत्र के लोग रहे, बहुत बड़े लोग रहे। कभी इस तरह के कानून फ्रेम नहीं हुए, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, कभी इस तरह के कानून फ्रेम नहीं हुए कि हम जिन कानूनों से आम लोग डरने लगे हैं,
आम लोग जब कानून से डरने लगे तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक चीज़ होती है। इस सदन में, इस संसद में मैं 30 साल से ज़्यादा रहा, लगाव तो है ही। अब कल दूसरे में चले जाएंगे। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि नए संसद भवन में जो भी आगे चल के नए लोग आएँ, उनमें से कुछ बड़े लोग पैदा हों और देश के संविधान को, देश की व्यवस्था को ठीक रास्ते पर ले चलें। थैंक यू सर। धन्यवाद। आपका वही लगाव वहां भी रहेगा, मुझे उम्मीद है। डॉक्टर सस्मित पात्रा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एक विशेष दिन है और वो दिन जब ये सदन आखिरी बार बैठ रहा है इस बिल्डिंग में और 24 घंटे बाद इस बिल्डिंग की लाइट्स बंद हो जाएंगी और 75 साल का जो काम हुआ है वो आगे चलता रहेगा नए बिल्डिंग में। मैं अपना वक्तव्य, क्योंकि बहुत कम समय है, 3 मिनट है, अपना वक्तव्य जो है हमारे देश के जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं, संविधान सभा के सारे मेंबर्स जो थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को खड़ा किया, उन सबको मैं नमन करते हुए अपना वक्तव्य शुरू करता हूं। मान्यवर, 75 साल और 3 मिनट वो करना बहुत मुश्किल है, बट मेरे सामने मेरे 2 वक्ता ऑलरेडी मेरी पार्टी के बोल चुके हैं। 75 साल में बहुत कुछ हुआ है और बोलना शुरू किया जाए तो खत्म होने का नाम न लेगा। मगर 75 साल में जो चीज कर सके थे, एक चीज छूट गया मान्यवर। इस सदन में एक वो चीज छूट गई है जो अगर शायद हम कर जाते तो शायद पूरा लगता कि आज हम कुछ पूरा करके वापस जा रहे हैं नए सदन में, ये एहसास होता। वो क्या छूट गया मान्यवर, क्या रह गया? 1996 में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जब आया था उसको पारित नहीं हो पाया। 1996 में आया, 1998 में आया, 1999 में आया, 3 बार इसी पार्लियामेंट में, बट पारित नहीं हो पाया। फिर मान्यवर ये वो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है जो मैं लेके आया हूं आपके पास, जो कि 9 मार्च 2010 को इस सदन ने पारित किया और लोकसभा में भेजा कि हमारी महिलाओं को इस देश के 33% संरक्षण मिलना चाहिए लोकसभा और विधानसभाओं में। अगर ये उस दिन पारित हो जाता तो शायद 75 साल में जितना काम किया है उन 75 सालों के साथ अगर ये जुड़ जाता तो मुकम्मल लगता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या हम आज ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 9 मार्च 2010 को इस सदन ने, इस राज्यसभा ने पारित किया था और आज लंबित है, क्या उस पर हम शपथ लेके ये पढ़ लें और सरकार से दरखास्त करें कि मुकम्मल अगर करना है तो महिला संरक्षण बिल को पहले दिन नए वाले बिल्डिंग में लाइए। हम सब मिलके जो है उस दिन को स्वीकार करेंगे, स्वीकृत करेंगे, साकार करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं महिला संरक्षण बिल को पारित करते हुए ये प्रण ले सकते हैं। अगर ये प्रण हम ले सकते हैं, ये विचार ले सकते हैं, हमारे 66 करोड़ मां और बहनें जो वहां पर देख रही हैं हमें, उनकी एक सोच है, उनकी एक मंशा है कि पिछले 27 सालों से जो लंबित है अगर उसको मुकम्मल करना है तो एक सोच, एक नया विश्वास, एक नए ऊर्जा के साथ हम चलें। क्योंकि एक छोटा सा विषय कह के अपना बात रखता हूं, समय समाप्त हो चुका है। हम तो चले थे जानिबे मंजिल, लोग आते रहे, कारवां बनता रहा, कारवां बनता रहा। मान्यवर, ये सदन 75 साल का जो एक जर्नी रहा है, ये सब एक साथ मुकम्मल होके चले हैं। मगर एक विश्वास है कि हम हमारी माओं के लिए, हमारी बहनों के लिए, 66 करोड़ उस लोगों के लिए आज तक भी हमने कई प्रॉमिसेस किए हैं, उसको साकार नहीं किया है। ये वो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है जो सदन ने पास किया था, इसको नए सदन में लाइए, पारित करिए और जो विश्वास एक नई भारत का हम देना चाहते हैं, उस ऊर्जा के साथ, उस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ें और देश नहीं पूरी दुनिया में जब हम नंबर 1 बनने का काम रखते हैं, इस विश्वास को कायम करें। अगर ये करते हैं तो आने वाली पीढ़ियां सच में सोचेंगी कुछ ऐतिहासिक हुआ था। सिर्फ बिल्डिंग नहीं थी, सोच ने आता, विश्वास ने आता, एक नया आयाम था कि हम
महिला संरक्षण बिल को पारित करते हुए नई ऊर्जा, नए विश्वास, नए भविष्य की तरफ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। Honorable members, this is indeed a momentous occasion, and the House has the benefit of having two of its members who had the occasion to be Prime Minister of this country. And it is gratifying for all of us that both of them were present. I will now give floor to Sri S.D. Dev Gowda. Kind permission. Sir, while sitting. Only few minutes. Yesterday, the leaders of all political parties were summoned by the Parliamentary Affairs Minister. In that meeting, it was chaired by our Defence Minister, Sri Rajnath Singh ji. Sir, in that meeting, some of our friends from the neighboring state, on the Kaveri issue they raised. I didn't raise any objection while they were speaking. It is my misfortune for having served in this parliament for 40 years. Yesterday, all electronic media in Karnataka was highlighted. They was not interested to protect the interest of the Kaveri waters, which the people are suffering today. I don't want to go to the merits and demerits of what is going on, what all the people from Tamil Nadu, which was fought from last 60 years, the battle, I don't want to go back to all those things. Sir, I would like to just only one point, whatever the unity that they have been exposed. When Khadge was speaking, I was watching. Your good self said, I will give opportunity for all the members, few minutes. So lastly, I have come here with your kind permission. I only say, I would like to stand by the problem that has been created by the unity of our friends. Yes, they have the majority, 40 members. We are only 26 or 28 members. There is no unity among ourselves in Karnataka. The people are suffering, but I would like, as a single member whom I have fought the battle from last 60 years. Sir, I don't want to go back to all those old histories. My friends knows this. When Manmohan Singh ji was the Prime Minister, what has happened? I do not want to take much time. Just only one word I would like to say. This quarrel will not be solved legally. If at all, if our friends wants to have some sort of smooth understanding, let all of us sit together and sort out the problem. Otherwise, things will continue and the struggle from both sides will go on, and this will not going to solve the problem. This type of fight on both sides. I only, with a humble request, I pray all our colleagues from Tamil Nadu, or unfortunately Karnataka is surrounded by all the projects, on one side Goa, on the other side what is Telangana, on this Almaty issue and Kaveri issue. Sir, we are the people who are suffering now. I only pray this problem will not be solved unless we sit together, try to sort out the problem ourselves. Legal battle certainly will not going to solve this problem. We have 200 years back, the issue started on Kaveri. I don't want to take much of the time. I can go on, give all by the details. You have permitted me. I only say what I would like to say. I also stand by the people of Karnataka who are suffering, and I will pray all our colleagues
if they are going to sit together and solve the problem among ourselves, it will be one of the most brilliant issues, sir. I only pray all of our friends, all the rivers are surrounded. Karnataka is the worst sufferer. That's the position, sir. Sir. Only I request. I don't want to make any. It's already settled the issue. The issue has been already settled based on the Supreme Court direction. Tribunal has been formed. Tribunal has been ordered. The Karnataka not obeyed. Karnataka not obeyed the Tribunal's order, Supreme Court's order, and we have respect on him. We have respect on the former Prime Minister Devagowda. But it is a sympathy has been created in this house. I'll come. Lot of suffering. Okay. Tamil Nadu farmers are Please. suffering. Lot. You see, on this day, when we are trying to reflect, introspect, and chalk out a path for way forward approach. Let 5 members of this house. Sir, I get your point. Sir, settle down. Please, let 5 members of this house. Please, let them send go. a chit to me. Sir, The former Prime Minister, but our farmers. One second. Sir, I would like to request, let 5 members of this house on both sides not belongs to either Karnataka or to Tamil Nadu. Mr. Vaiko, please. 5 members of this Would you house. please take your seat, all of you? You please delegate Take them. your seat. Let them go and see the condition, Please. what the people are suffering, Please. and then let them report to this house. I will accept that. Sir, let us not unnecessarily quarrel. Please. Those people who are not concerned about this problem. Please, sir, I beg of you, the members who are not concerned, let them go and study the situation, what is there, and then report it back to the house. Honorable members, I will accept it. This is not the way. What is it? Because of your strength, you have got 40 members, you are united, and we are divided. No. Would you please? You want to. Would you please be good enough in taking your seat? Taking your seat. Take your seat. Not going to solve the problem. Please, take your seat. Let me see. Take your seat. This is not going to solve the problem. If they want to go on like this, honorable members, this is not going to solve the honorable problem. members, and I will say, I do not wish to. I am 91. I don't know how many years I am going to survive. Only I only made an appeal. 5 members of those people who are not belongs to Karnataka or Tamil Nadu, let them go and study the situation. Report to your good self. Sir, first you finally decide. First, we all the request I make. Thank you very much. We all wish. One second. We all wish Devgowda ji a very long, healthy life. And honorable members, I was carefully listening to every word which the former Prime Minister spoke. The underlying concept was that these issues need to be determined consensually. That being the situation, we must leave it at that. Shri Pramod Tiwari. माननीय सभापति जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। कल हम सब नए भवन में जाएंगे। ढेर सारी व्यक्तिगत यादें यहाँ से जुड़ी हैं और देश के इतिहास को देखें तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हम सब उस सदन के सदस्य हैं जिसने इस देश का गौरवशाली इतिहास रचा है राज्यसभा में। माननीय कैसे भूल सकते हैं हम इस संसद भवन को 14 और 15 अगस्त की रात में पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो भाषण, जब आज़ादी का उद्घोष हो रहा था तो उन्होंने कहा था जब सारी दुनिया सो रही है तो उस समय हिंदुस्तान जाग रहा है एक नया डेस्टिनी, एक नया अध्याय लिखने के लिए। ये साक्षी है उन घटनाओं का। ये साक्षी है
संविधान बनाने का, मैं इस विवाद में नहीं पड़ूंगा कि 75 साल 2 साल पहले पूरे हुए या 75 साल 2 साल बाद पूरे होंगे। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, इसके निर्माताओं को प्रणाम करते हुए कि आपने एक ऐसा संविधान दिया। इस संविधान की खूबसूरती के लिए तो मैं एक जिक्र करना चाहता हूं कि भारत का नक्शा देखें। भारत में लोकतंत्र पहले दिन से जिंदा है, 15 अगस्त 1947 से आज तक जिंदा है। एक क्षण के लिए यहां लोकतंत्र कभी समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन जरा भारत का नक्शा उठा के देख लीजिए, बगल में नेपाल में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, चीन में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ। तो ये संविधान निर्माताओं ने जो बनाया था, ये उसकी खूबसूरती है कि आज तक हमारा जो सबसे अनमोल रत्न था लोकतंत्र, वो जिंदा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये दोनों सदन साक्षी हैं उस घटना के। मानव, मैं एक चीज जो कहूंगा, कुछ लोगों की आदत होती है बीच में बेतुका बोलने की, बेसुरा रुक जाओ मानवर, मैं तो बहुत प्यार से बोल रहा था, लेकिन कुछ लोग होते हैं, अब जब ये बोल दिए तो इनको बता दूं, उस आपातकाल को संविधान के दायरे में लगाया गया था। आपने जो लगाया है उस संविधान के दायरे में नहीं, बल्कि संविधान का ताना बाना पहन के लगाया है। और आज आपातकाल जैसी तिवारी जी, कई बार प्यार से बहुत डर लगता है। सही बात है सर, अपना अपना अनुभव। देखिए, यदि अगर हम आज के दिन राजनीतिक दायरे में रहकर बात करेंगे तो आगे का रास्ता साफ नहीं निकलेगा सर। आज की हकीकत जब मैं यहाँ सुनता हूँ और दुनिया के लोगों से सुनता हूँ तो मुझे लगता है मैं कहाँ आ गया सर। लेट अस बी प्राउड ऑफ आवर अकम्प्लिशमेंट्स। दे आर प्रोडक्ट ऑफ आवर ह्यूमन रिसोर्स, आवर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, our visionary leadership. Where is the harm in it? मैं वही काम कर रहा था, बीच में विघ्न हो गई। आप वो नहीं कर रहे। मैं तो तारीफ कर रहा था लोकतंत्र के निर्माताओं को, संविधान के निर्माताओं का। ठीक है सर, विघ्न कौन डालते हैं आप भी जानते हैं, हम भी डालते हैं। सर, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है सर? ये एक ऐसा चमन है जिसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। हर रंग के फूल को जब खिलने दिया जाता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। मैं फिर किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, पर सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी बूटी यही थी कि यहाँ हर धर्म को, हर भाषा को, हर जात को फूलने फलने का अधिकार मिला था। और जब धर्म के नाम पर हुकूमतें बांटेंगी लोगों को तो लोकतंत्र पर सवालिया निशान लगेगा और जिन्होंने ये संविधान बनाया है उसके प्रति अनादर का भाव जाहिर होता है। मैं जरूर कहना चाहता हूं इस बात को कि जहां हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि आज भी हम लोकतंत्र में जिंदा हैं, आगे भी रहेंगे, चाहे जितने दौर आए आके चले जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का लोकतंत्र कभी नहीं मिटेगा, ये मैं विश्वासपूर्वक और दावेपूर्वक कहता हूं। अनवर, जब इतिहास पढ़े तो एक लाइन में ये कह के बर्खास्त न कर दें कि 70 सालों में क्या हुआ था। अरे 1947 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता संभाली थी तो हिंदुस्तान के पास क्या था? कितने गांव में बिजली थी, कितनी हम बिजली पैदा करते थे, कै गांव में हमारा टेलीफोन सेवाएं थी, कै गांव में मानवर विकास के लिए सड़कें थी। आज अगर है तो सारे लोगों ने मिलकर काम किया है, इसलिए आज ये दौर आया हुआ है। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जब गौरवशाली इतिहास पढ़ा जाए तो प्रधानमंत्री नेहरू के किए कार्यों की सराहना के बने हिंदुस्तान का इतिहास अधूरा रहेगा। उन्होंने जो योगदान दिया, शास्त्री जी का संक्षिप्त कार्यकाल था। आपको बधाई, शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि आप याद रखेंगे कि अभी मेरा 10 मिनट बाकी। धन्यवाद। मानवर, भूल गए हो तो मैं बता दूं, मानवर शास्त्री जी का, मानिया जी, शास्त्री जी का कार्यकाल बहुत संक्षिप्त था। 18 महीने में उस शख्सियत को हमेशा हिंदुस्तान याद रखे जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तब वो हिंदुस्तान था
जब युद्ध रोकने के लिए 65 का हम पर PL 480 की धमकी दी गई थी, उससे भी हम निकले। मानवर, इंदिरा जी के बगैर इंडिया का इतिहास अधूरा रहेगा। अरे ये वो इंदिरा गांधी है जिसने महिला सशक्तिकरण किया, बांग्लादेश का निर्माण किया। अरे लोग तो इतिहास में कुछ पन्ने लिखते हैं, उन्होंने तो ज्योग्राफिया बदलकर दुनिया के नक्शे में जब तक बांग्लादेश रहेगा इंदिरा गांधी का नाम रहेगा। और इंदिरा गांधी की कोई ताकत तो थी, इंसानियत थी, शराफत थी, संसदीय मर्यादाएं थी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी तुलना दुर्गा मां से की थी। ये है देश का लोकतंत्र। मानवर, आज बड़ी बात होती है डिजिटल इंडिया। इसका जन्मदाता कौन था? राजीव गांधी। क्या हम उनके योगदान को भुला सकते हैं? पिछड़े वर्गों को, दलित वर्ग को, महिलाओं को अगर पंचायत राज में, नगर निकाय में आज वो मेयर के पद पे बैठी हैं, बड़े बड़े पदों पे जिला पंचायत अध्यक्ष बैठी हैं, तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का योगदान है उसमें। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं आपसे, आज युवा आभारी है। 18 साल के नौजवान को अगर मिला है तो इन्हीं 70 वर्षों में मिला है मताधिकार। मानो मैं आगे बात बढ़ाऊं अगर, तो इतना जरूर कहना चाहता हूं, PV नरसिंह राव जी ने आर्थिक उदारीकरण शुरू किया। उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने उसको परवान चढ़ाया। आज भारत की जो ताकत है ना दुनिया में, वो सपनों से नहीं आई है, इन दोनों के उदारीकरण के कारण आई है। हम इनके योगदान को नहीं भूल सकते। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपसे, उदारीकरण का जो आज स्वरूप है वो उधारीकरण और बेचीकरण में तब्दील हो रहा है, उसे रोका जाना चाहिए। हमारा उदारीकरण और बेचीकरण के बीच में बहुत बड़ा फासला है। मानवर, मैं ये जरूर कहूंगा कि इस संविधान की तीसरी सबसे बड़ी मर्यादा है कि फेडरल स्ट्रक्चर, हाँ वही, आप शुरू कर दीजिए 10 मिनट। फेडरल स्ट्रक्चर, राज्यों के मिलकर ही ये संघ बना है और इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपसे, इतना विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ आपसे कि फेडरल स्ट्रक्चर को राज्यों के अधिकार के साथ खिलवाड़ न किया जाए। जो हो रहा है, चुनी हुई सरकारों को गिराते हैं आप गोवा में, चुनी हुई सरकारों को मध्य प्रदेश में गिराते हैं आप, जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में गिराई जा रही है, यह खतरनाक लक्षण है जिसका जिक्र मेरे भाई कर रहे थे। वही आपातकाल की तानाशाही जो बिना लगाए आई जा रही है। मैं सिर्फ इतना कम करना चाहता हूं, 2 बात कह के मैं समाप्त कर दूंगा, सिर्फ 2 मिनट, कि एक खतरनाक बात की ओर मैं इशारा कर रहा हूं, दिल में सबको अच्छी लगेगी, मेरी 2 ही मिनट की बात थी, सबको अच्छी लगेगी, लेकिन बोलेंगे नहीं पार्टी प्रतिबद्धताओं से। पहले सांसद के अधिकार होते थे, विधायक के अधिकार होते थे, मंत्री के अधिकार होते थे, इससे लोकतंत्र की ताकत बढ़ती थी। आज इन तीनों ताकतों को, विधायिका को कमजोर किया जा रहा है। ये एक खतरनाक लक्षण है, ये उचित नहीं। हमारी सोनिया जी ने, कृपया खत्म करें, आपका हम जो बात कह रही है आपको अच्छी लगेगी। सोनिया जी ने एक पत्र लिखा है 9 पॉइंट, बड़ा अच्छा है, आप भी पढ़ लीजिएगा और इनको भी पढ़ा दीजिए, कह दीजिए उसको मान जाए तो 75 साल का सब कुछ पूरा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर आपको बधाई। ये कहते हुए, जो लोग लोकतंत्र को कैद करना चाहते हैं वो इंडिया आ रही है और आप जा रहे हैं, ये उद्घोष करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी ताकत दिन ब दिन कमजोर हो रही है, आप समाप्त होंगे, देश अब आपको नहीं चाहता। इंडिया आएगा, इंडिया जीतेगा। माननीय सांसद करोड़ीलाल मीणा जी, माननीय सांसद करोड़ीलाल मीणा जी, माननीय सांसद करोड़ीलाल मीणा जी, दूसरा नाम दीजिए। माननीय विजय सिंह रेड्डी जी, विजय शाही रेड्डी जी। Thank you, Deputy Vice Chairperson, sir. Madam, in many ways, the parliamentary journey represents so many struggles and so many achievements and also aspirations of
people of India, and I have no hesitation to refer to the struggles that I have undergone during the 75 years, more particularly the struggles relating to the 1976 represents the darkest year of our parliamentary democracy, and the Congress party was responsible for it. Sir, the 42nd Constitution Amendment was passed by the then ruling Congress party in a most controversial circumstances. This has to be taken note of, madam. If the subsequent governments had not undone the horrors that have of the 42nd Amendment, the Congress party would have passed an unsavory laws to institutionalize the emergency in the country forever. So it is because of the anomalies that they have introduced have been undone. That is the reason why we are still here and our democracy is saved. Madam, the UPA regime was marred by capitalism, corruption, policy paralysis, and decline in economic growth. This is what their achievement is. The struggles I have already explained, and their achievements I have already explained, and more particularly in relation to Andhra Pradesh, what Congress party has done during the bifurcation has to be explained. Madam, despite protests, Andhra Pradesh reorganization bill was passed in a most unruly manner, and which is a black mark for the democracy, and Andhra Pradesh hence was the biggest victim of the misuse of power by the Congress party. Madam, the live telecast of the parliamentary proceedings were cut off. A demand for the division of voting has been denied. All Andhra member of parliaments were unfairly suspended, and doors of Lok Sabha were closed. The passage of Andhra Pradesh reorganization bill was based on unscientific, irrational considerations, which has been authored by my friend Jairam Ramesh ji. Madam, the next point, you can go ahead with your comments, but I'll continue my observations. Madam, the governments may come and governments may go, but for sitting government, that is BJP government, is under an obligation to fulfill the statutory promises made by the previous government, that is Congress government, madam. Madam, the Congress party, one important point, madam, the Congress party has held the power for 50 years. 50 years out of the 75 years, and if any other party had been in place other than Congress party, I have no hesitation to say that India would have been a developed country by now, not a developing country, madam. It would have been a developed country. That is the achievement of the Congress party, insofar as democracy is concerned. This, you can go ahead. The evidence of this is in front of our eyes now. Madam, the non-Congress government in the past 10 years, you have been seeing, we have been watching, and what the performance is. Madam, parliamentary productivity. Average number of sitting days per year has decreased from 120 in 1950s to roughly 70 days at present, which is really alarming, madam. Madam, I'll have to give the comparative figures. In 2022, the Indian Parliament sat for 56 days, and US Congress sat for 158 days, and British Parliament sat for 137 days, and the Canadian Parliament sat for 96 days. I request the BJP government to increase the number of sittings of the Parliament so as to make the justice to the country, people of this country, madam. Madam, there is madam, youth particularly. The youth at present, the significance of youth and importance of youth is coming down slowly,
and the participation in youth is also coming down. MPs in 25 to 40 age bracket has fallen from 26% in first Lok Sabha to 1 to 12% in 17th Lok Sabha. Madam, welfare of backward classes. I request the government, Honorable Finance Minister is sitting here. I request the Honorable Finance Minister and also Prime Minister and BJP government to introduce reservation for BCs based on the population of BC population in this country. BCs constitute more than 50% in this country. Therefore, the reservation has to be given to the BCs based on the proportion of population. And no caste census has been conducted, and the last caste census has been done in 1931. Socio-economic population data on BCs has been released, madam. Madam, women reservation bill. The women constitute 50% in the population. YSR Congress Party, under the leadership of Jagan Mohan Reddy Garu, right from day one, since inception of the party, has been demanding reservation for women, and as of today, in the state assemblies, the women percentage of women is only 8%, and in Lok Sabha it is 15%. Women, therefore, the women reservation bill has to be passed. We request the government of India to, BJP particularly, to pass the women reservation bill. Madam, in fact, many, even in the yesterday's meeting, yesterday all-party meeting has been held, wherein my colleague, my friend from Andhra Pradesh, MP, has vociferously raised the issue of arrest of Chandrababu Naidu. Though it is not relevant here, since he has raised the issue in the all-party meeting, and also he is going to raise the issue again on the floor of this House, I have no other option but to address this issue. Madam, Chandrababu Naidu has been arrested by the CID department of Andhra Pradesh government on the charges of corruption in a particular case relating to Siemens India. And there is an ample evidence which has been produced to the court, and court has remanded him to judicial custody. Now that arrest has been made and the remand has been given by the judiciary, and the court proceedings have started, it is for the court to decide. And court has also observed that there is a prima facie case against Chandrababu Naidu, and the court will decide the matter. Madam, it is not only, it is Chandrababu Naidu who, this is the book, madam, this is the book. Chandrababu Naidu has resorted to corruption of 1,44,577 crores. This is a old book, and subsequently, this amount of corruption, the quantum of corruption has gone up to 6 lakh crore, madam. And again, madam, it is not one case or two cases against Chandrababu Naidu. There are number of cases. It is his own affidavit, madam. It is his own affidavit which has been filed before the Election Commission, wherein he has stated that there are 9 cases against him, 9 criminal cases against Chandrababu Naidu. Therefore, when he himself has declared that there are criminal cases against Chandrababu Naidu, I have no hesitation to call Chandrababu Naidu as a criminal, madam. He has been implicated in a criminal conspiracy and resorted to corruption. Therefore, he has been implicated in the corruption case, madam. One more point, madam. Madam, he has, not only that, politically, Chandrababu Naidu has backstabbed everybody. He has backstabbed BJP. He was with BJP, he has backstabbed. He was with Congress Party, he has backstabbed Congress Party. He was with communists, and he has backstabbed communists. So therefore, there is nothing wrong in calling him as backstabber, madam. And he is the king of all scams. I have no hesitation to say that he is king of all the scams.
this is the fate of the democracy, and therefore this type of politicians, particularly who has ruled the state of Andhra Pradesh for a period of 14 years, 14 years as a chief minister, has spoiled the state of Andhra Pradesh, and the Andhra Pradesh is looking backward only because of Chandrababu Naidu, madam. Thank you very much. Thank you. Thank you. ठीक, प्लीज श्री समीर और राव। आदरणीय उपसभापति महोदया, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक विषय पर बोलने का अवसर आपने प्रदान किया है। महोदया, सांसद भवन भारत के वर्तमान और भविष्य की परिस्थितियों तथा देश की समस्याओं पर चिंतन मनन के साथ ही शासन चलाने के लिए विधान निर्माण का एक केंद्र रहा है। महोदया 1927 में बनकर तैयार हुआ सदन संसद भवन 1947 तक ये अंग्रेजों के गुलाम में रहा था। 1947 से लेकर के आज तक यह संसद भवन आम जन के लिए होने वाली नीति का एक प्रमुख केंद्र बनकर ये काम निरंतर कर रहा है। महोदया, ये संसद भवन देश के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस संसद भवन में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन की संविधान सभा की बैठकें हुई। तत्पश्चात 1950 में भारत के संविधान को इसी भवन में लागू किया गया। महोदया, संविधान लागू होने के पश्चात महामहिम राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा को मिलाकर भारतीय संसद का निर्माण किया गया। यह तीनों ही भारतीय संसदीय प्रणाली के अभिन्न अंग बनाए गए। मुझे गर्व है कि मैं इस राज्यसभा के सदस्य के रूप में इस सदन का हिस्सा बना, क्योंकि पिछले 75 वर्षों में राज्यसभा ने संसद के अस्थायी सदन के रूप में कभी भंग हुए बिना निरंतर देश की चिंताएं ये करता रहा है। परंतु महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों ने पूर्व में इस सदन का बहुत सारे उपलब्धियां और बहुत सारे जो अनुभव है इन बातों को बताने का काम किया है, लेकिन मुझे लगता है मैं जो अनुभव करता हूं उसमें यह भी है कि बहुत सारे ऐसे उपलब्धियां तो हुए, यहां बहुत ऐसे विद्वान माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को यहां पर विचार किया, लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें हुए जो कि इस सदन के अंदर में यह सदन जो गवाह बना हुआ है, जो कि बहुत से सारे ऐसे गरिमाएं भी खंडित हुई है। महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार से यह जो है, अगर हम कहें तो इस सदन भवन के अंदर में जो है आपातकालीन जैसी जो बातें हैं वह भी मतलब यह सदन ने देखा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो 370 जैसे जो एक समस्या थी, अगर उन दिनों में ये नहीं रहता तो ये जम्मू कश्मीर जो है ये अलग नहीं होता। इसी प्रकार से ये लगातार ये 75 वर्षों में सदन ने अनेक उदाहरण है जो कि इस प्रकार से चीजें हुई है। मैं जनजाति मामले के विषय में भी मैं जब विचार करता हूं, देखता हूं, तो 1969 में सदन के एक माननीय तत्कालीन सदस्य स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी ने जनजाति हित के लिए एक विशेष बिल जो लाया था, वो बिल भी उस समय के कौन से ऐसे राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इस सदन के अंदर दफन हो गया। महोदया, इस प्रकार से कई ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बीच के समय में हमारे इस सदन के अंदर में भी एक अच्छे उदाहरण, अच्छे जो है अचीवमेंट जो हुए हैं, जो मैं बताना चाहता हूं
कि आजाद भारत में पहली बार ये जनजातियों के विकास के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजाति मामले का मंत्रालय का स्थापना किया और ये जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए कई प्रकार के योजनाएं हुए। महोदया, उस समय जो है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, आदिवासी बच्चों का ठीक से पढ़ाई हो, ज्ञान हो और जो है अपने बढ़े, अपने परिवार को बढ़ाए और देश के सेवा में भी वो शामिल हो, आगे बढ़े। इसलिए ऐसे जो है महत्वपूर्ण एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की स्थापना करके आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आगे बढ़ा है। निश्चित रूप से महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो है यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये जो है देश के आजादी के लड़ाई के लिए लड़ने वाले जो है उन दिनों के जो है जो अनसंग हीरोज थे आदिवासी, उन लोग के नाम से भी जो है संग्रहालय बनाने का काम किया और जो है भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के 15 नवंबर के दिन में राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाने का यह काम प्रारंभ हुआ। देश के जनजातियों को भी सम्मान मिलने का काम इसी संसद में यह गवाह रहा है। महोदया, ये मैं बताना चाहता हूं कि जनजाति लोग जंगल पहाड़ों में रहते हैं। ये जो है FRA, CFR जैसे जो है प्रावधान किया फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत, सामुदायिक जो है वनाधिकार का यह प्रावधान जो हुआ है, आज जनजाति अपने वन क्षेत्रों के में अंदर में रह करके कैसे जो है जो नन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को संकलन करके संकलित करके अपने जो वैल्यू एडिशन करते हुए अपने आमदनी को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी आदि आदर्श ग्राम विकास योजना करके जनजातियों के गांवों में किस प्रकार से सभी प्रकार के विकास का काम हो, इसके लिए ऐसे योजनाएं किया है। और तो और ये जो है आदि महोत्सव जैसे जो है योजनाएं करके हमारे जनजातियों के जो वोकल फॉर लोकल जो स्थानीय उत्पाद है उसको कैसे हम ट्राइफेड के माध्यम से हम उनके आमदनी को बढ़ाएंगे और जो है आगे बढ़ाएंगे, इस प्रकार से जो है योजनाएं प्रारंभ किया है। महोदया, कहने को बहुत है लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये सदन ने इन सारे चीजों का गवाह बना है और आज हम इस सदन से कल दूसरे नए सदन पर जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि ये नए सदन में भी बहुत नए नए कीर्तिमान स्थापित हो, ऐसा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। श्री अब्दुल बहाक जी। All the praises to Almighty God for giving me a wonderful time to be here at this last moment of this last Rajya Sabha in this hall. My leader, two leaders were here in the first day of this building when it started in 1952. There's Haidar Millat Muhammad Ismail Sahib and B. Poker Sahib. They were in the Constituent Assembly also. So now our party also completing 75 years, Amrita Kal. November 16th, we are coming to Delhi to inaugurate our new office, and also to us also this is Amrita Kal. And this building, it is very, very dear to me also because my leaders came here first day itself in Rajya Sabha, and now I am also in Rajya Sabha. So many people predicted 75 years Indian Union Muslim League will be here. Yes, we proved that we are here, we are very much here, and we are looking after the minorities, causes, and the Dalits and what you call SC/STs. We are working heavily in our area in skill development for minorities and for Dalits and for SC/STs. Thank you very much for giving me a time of this one. Before, I think when our chairman is coming, we will get some more time. Then Khadge, I only just now started. I don't know, in between the transition came. Just now I started only. So I was telling, for your information,
This is a wonderful moment for me, especially personally, because my leaders came here first day. Now the last day also I am here. So I will be here till the end of the session just to say bye-bye Rajya Sabha. Bye-bye Rajya Sabha. I will be here. Thank you very much once again for giving me the wonderful chance. Thank you all. We hope the very best in new Rajya Sabha. Thank you. Shri Narayan Das Gupta. Thank you very much, sir, for giving me this opportunity to speak on this session on a very important subject. Sir, I would like to share that this Parliament building, which is a historical landmark that has guided India's destiny before and after independence. That is that this house, which was constructed in 1927, it was occupied originally by the Imperial Legislative Council from 2027 till 15th August 47, and after that by the Constituent Assembly till January 50, and then thereafter we are occupying this. This independence was achieved after sacrifice by our forefathers and leaders, and the Constitution which was laid down and adopted in 1950, it has given the rights to the citizen, every citizen of this country, of liberty, of the free speech, justice, and to promote the fraternity among the citizens. And there's a lot of this development has taken place in the last 75 years. That it may be on account of agriculture, it may be on account of IT, it may be on account of that power sectors, industry sectors, and the cooperative movements that have taken place. And during this period that this country has won the war also, that is the war of 1971, Bangladesh, and this constitution which has provided the liberty and that the rights to the citizens. I would like to say, sir, because this is a system which has been provided in the constitution, the federal system, because that the powers has been defined between state and center. But what we have seen, because I am from the Aam Aadmi Party, which came into being in 2000, 10 years back, 2012. And after that, it has constituted 3 elections in Delhi, and every time it has formed the government also. And because this is my first tenure, even my party was the first time in this house as Rajya Sabha members. And I was nominated by our Chief Minister, Sri Arvind Kejriwal ji. And I will express thanks for that, considering me as a member of this house. Sir, this every time I would like to share that in 2015, the first time when contested, and got 67 seats out of the 70 of the assembly total number of seats. It was almost 95%, which was the unprecedented victory. But what we have seen, the moment we have this our government that was, and Chief Minister took oath in February 15. In May 15, through notifications, the power which were available and given as per the Delhi State Act, they were withdrawn. I think it was a very, that I will say, it is contrary to what provided under the Constitution rights, and the separate powers has been defined, both for the state and central government. And again, there was election in February 2020. Again, there was an unprecedented victory that the Delhi people, they just voted for the Aam Aadmi Party government. And again, it was the 86% out of the 70 seats, total number of seats, that we won 62 seats. This was again, I will say, unprecedented.
That was the faith and confidence expressed by the citizens of Delhi in the Aam Aadmi Party government. But what happened, sir, we have seen only in the last session that first through ordinance, the powers what were given under the Delhi State Act, they were withdrawn. Later, bill was introduced here, and it was passed. And this is total against the federal system of the country. I think this is contrary what is provided there. And what I would like to say here, that this type of attitude, this type of behavior, this type of system which is prevailing here, this should be that we should go according to what provided under the articles of the Constitution. Even there was an amendment in the Constitution articles also, besides the Delhi State Act. This is against the federal system, cooperative system of what is defined there. But what I like to say, but the way this Parliament building, this is a historical building, it has been shared by our earlier speakers, and that has guided India's destiny before and after independence. This is that because of these constitutions and the provisions, and which was laid down by the writer of this constitution, the architect of this constitution, Ambedkar. What I will say that we should go, we are going to the new building, we should go with new thoughts and with a full confidence. New positive thoughts. But we should go with a positive thought. Yes, I'm positive so thought glad. there, and the things which have taken place in the past, we should try to avoid them. With this, thank you very much for giving me the opportunity. Shri Prakash Javadekar, not present. Shri Thambi Durai, Shri Vivek Tankha. No, he has to speak from his seat. And you are not on your seat. So actually, I'd given up the hope. So that's why I was sitting with Mr. Subal. So I'm going to be very, very short, sir. Why should a distinguished lawyer like you give up hope? No, it's a question of time, sir. You see, you wait till the judgment is pronounced. You are in a very sound company of Kapil Sibalji. So you can't give up hope. Anyway, sir, what I'm going to say today is 6 hours is too short for a history of 75 years. The history starts with the Constituent Assembly sitting and deliberating over a document which was one of the most well-drafted document at that time, at that period of time, and continues to be so even today. Our constitution, I would say, is amongst the best in the world. UK didn't have a constitution. American constitution is a very short constitution. So this constitution served us so well. So that is why I say Parliament is the voice of the people, which it expresses through the constitution, and the Supreme Court is the voice of law. Now, one good point is, sir, that roughly 105 constitutional amendments have happened, roughly. But in this history of 105 constitutional amendments, only one amendment has been struck down fully, that is the NJC. 6 or 7 amendments were partially struck down or clarified. So the test of law has also been good for the purposes of testing the constitutional amendments, sir. Another thing I would like to say, that it is very good to see a lot of lawyers in the constitution, sir, in the parliament, because if you see even at the time of drafting. Vivek ji, there are very distinguished lawyers here. They contribute from outside. On the floor of the House, I have analyzed their contribution is either by absence or silence. And this is a very painful scenario, and I have no difficulty in saying
because we have a distinguished legal luminary, Kapil Sibal here. Mr. Sibal knows it. On Monday and Friday, this house is not your priority. And therefore, I would particularly appeal to the fraternity to which I belonged, that please introspect and reflect. And you see, regional consideration. Secondly, there is so much legal talent in the House of a global repute, which can enlighten the Supreme Court also as to what are the jurisdictional limits in separation of powers doctrine. Fact is that distinguished senior advocates are performing outside on television channels. Coming to Dr. Singhvi, he was on a television channel, Kapilji, talking about parliamentary working. I immediately sent to the other person contribution of the gentleman for past 10 months, now it is nearly a year, what he has done. Therefore, when a message came to me that Kapil Sibal wants to make a contribution, obviously I should have not taken a second, and believing in the system as I do, and you know, precedence could have been given. I told my assistant, he looked at me like this. I said, let Mr. Kapil Sibal sit for some time. His presence here physically will send a good signal. And that applied to you also. Otherwise, make a speech and walk away. I'm so sorry, but I am spelling out my heart. Let me share that in these 75 years of glorious history, lawyers and non-lawyers, everybody has contributed in a very beautiful way, sir. And see the way all your laws, as I said, have been upheld by the Supreme Court. Out of 105 amendments to the Constitution, only one was struck down fully, that is NJAC. But NJAC, Supreme Court had its own views on it, so I would not call it a truly... But one thing, and let me reveal my mind. You are a member of this House. Sir. Everyone here passed that bill, only with one abstention. Lok Sabha passed it unanimously. What has happened to that? Did this august House ever concern itself with what they have done? How can you countenance a scenario like this? It is prime obligation of everyone in this House that if this House has sanctified, and by that majority, only one abstention, and Lok Sabha, total unanimity, 16 state assemblies endorsing it, and my very distinguished legal luminaries, they have to be on front foot. I await what Kapil Sibalji would say. Go ahead, Vivekji. So your name signifies everything that you have. Sir, let me try and complete my speech, sir. So I'm now taking the chairman and the House to another aspect, sir. I felt that there are three issues which need your kind attention and which need the attention of this House, sir. One is that working days, a good parliament has at least 100 working days. UK has about 100, but it should be 100 plus. Our working days have been abysmally low and getting lower and lower by the year. And out of that also, I'm not a votary who supports disruption. I'm not votary. I can never be a votary of disruption because I believe in debate. But my point is, sir, that the three suggestions I'm making, that in UK, there is a tradition and a law which has now been given a shape of a rule that 20 days out of 100 days are allotted to the opposition to make the agenda. That means if I have 20 days in 100 days, I can't blame the ruling party. If I want a certain agenda to be discussed, it has to be discussed. And out of that 20 days, 17 days are given to the largest party, but we have many parties, and 3 days are given to the second largest party. Maybe we could think of this, it may stop
or reduce disruption, because if opposition parties have the authority or the right to also set the agenda of the day, they will bring the topics which they want to discuss, which otherwise the ruling party may not find very compatible. Number two, I'm saying, sir, that there should be a rule that if 10 to 20% of MPs want a motion to be discussed, it should be accepted. It is otherwise a very demeaning thing that you give it in writing. 20 people are giving it in writing, and we are not getting a discussion. Ultimately, what are we wanting? Only a discussion. So I feel that it needs a review whether if a certain percentage of MPs make a request, it should be accepted or not accepted, but I feel it should be accepted, sir. Third is, today a special session of the parliament can only be summoned by the government. That is the law in this country. But now a lot of jurists have been saying, and it may get adopted in Europe very soon, that if 25 to 35% of MPs want a special session of a parliament for a special reason, it can get summoned. What I'm trying to say, sir, as we move into a new building, let us go for new thoughts. Let us go for new ways of dealing with problems that are going to face us or confront us very soon. It can't be a system where only the government decides. It should also not be a system where we only disrupt. It should be a system where we can also decide, they can also decide, and we can all try and work together, sir. Thank you, sir. Priyanka Chaturvedi. Sir, not used to be called out so soon. I thought end में आऊँगी. Mic on. Some mic. Sir, 75 साल की parliamentary democracy. Very briefly. Very brief, sir. 2 minute. आदत पड़ गई है. You are right. You are right. Repeated walkout का मतलब ये हुआ है. जी सर. कि डिबेट करने की आदत नहीं है. करती हूँ, बहुत सारी करती हूँ सर, पर पार्लियामेंट में करने का मौका नहीं मिलता है. करती हूँ सर, पर पार्लियामेंट के बाहर करने का मौका जरूर मिलता है. Go ahead. सर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के 75 साल की जर्नी के बारे में चर्चा करने का मुझे सौभाग्य मिला है. ये मैं मानती हूँ जो हमारे संविधान को बनाने में जिन्होंने योगदान दिया है, उन्होंने मुझे इतना सपना देखने का मौका दिया कि कभी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हिस्सा बनने का सपना सोच सकूं और वो सपने को पूरा भी कर सकूं. मेरी पार्टी ने मुझे ये मौका दिया है. सर, 3 साल की मेरी जर्नी रही है. उस 3 साल में सेंट्रल हॉल हो या इम्पोर्टेंट डिस्कशंस में चर्चा हो या महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है उस पे समय बिताने का मुझे मौका मिला हो. पूरे एक सेशन में काफ़ी घंटे बिताए थे. क्योंकि राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, और मैं तो एक तिनका हूँ इस समुंदर में, पर क्योंकि ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, इस 3 साल में हमने ये भी देखा किस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार को गिराया गया, पार्टियों को तोड़ा गया, और अब 2 साल होने आ गए हैं. बहुत सारी जो लोकल गवर्नमेंट्स की हम बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट्स के चुनाव भी नहीं हो रहे हैं. बाय इलेक्शंस आ जाते हैं, बाय इलेक्शंस की भी नोटिफिकेशन महाराष्ट्र को लेकर नहीं आता है. तो ये एक सेंस ऑफ कंसर्न है. नए पार्लियामेंट में जा रहे हैं. हर डेकेड में 75 साल की जब हम बात करते हैं, हर डेकेड में हमने एक ऐतिहासिक बिल पास किए हैं, ऐतिहासिक कानून बनाए हैं. पर एक कानून जो मैं उम्मीद कर रही थी कि यहाँ से हम पास कर हम नए पार्लियामेंट की शुरुआत करेंगे, वो है महिलाओं के अधिकारों की बिल की बात सर, 33% रिजर्वेशन. पर वो मैं उम्मीद करती हूँ सर ना उम्मीद मत होइए, सब कुछ मुमकिन है. नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, मुमकिन है, पर यहाँ से मुमकिन होता तो ज्यादा और इस पार्लियामेंट की शान बढ़ती सर. नहीं, इंडिया है तो मुमकिन है. तो सर मैं बस यही कहना चाहूंगी. I got a letter from a boy of 13 years and he wrote to me that, sir, India, I dot and dot, how can it be India? You'll reflect on that. सर इंडिया बोल लो, भारत बोल लो, हिंदुस्तान बोल लो, उसका जो डेमोक्रेसी का एसेंस है उसको मत तोड़ो. बस यही कहना चाह रही हूँ. बस सर वो ये पार्लियामेंट सेशंस में मैं उम्मीद है, क्योंकि एक स्पेशल सेशन है
महिलाओं के अधिकारों का समय पे चर्चा होगी और वो बिल को पास किया जाएगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के भी मैनिफेस्टो में रहा है। और हम सब विपक्ष में हम बार-बार यही कहते रहते हैं कि अगर इस बिल पे चर्चा होगी, समर्थन चाहिए, हम सब मिलकर इसका समर्थन करेंगे और ऐतिहासिक स्पेशल सेशन बनाएंगे, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। माननीय सभापति महोदय, आज हम सब लोग इस संसद में इस देश के 75 वर्ष लोकतंत्र के होने पर चर्चा करने के लिए एकत्र हैं। जब हम 75 वर्ष की इस यात्रा का सिंहावलोकन करते हैं तो स्वतंत्रता से लेकर आज तक के सभी बड़े निर्णय और बड़ी घटनाएं बरबस हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। यदि हम स्वतंत्रता से प्रारंभ करें तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि महर्षि अरविंद ने यह कहा था कि जो स्थान इस शरीर में आत्मा का है, वो स्थान भारत का पूरे विश्व में है। अर्थात आज से 75 वर्ष पूर्व सिर्फ भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, पूरे विश्व की मानवता की सोई हुई आत्मा जीवंत हुई थी। और भारत की वह जीवंतता किस रूप में आती थी, यानी हम क्या थे? 2000 वर्ष से अधिक के आक्रमण, 800 वर्ष से अधिक की गुलामी, उसके बाद जब हमने स्वतंत्रता का सवेरा देखा तो हमें समझना चाहिए वो देश था कि श्री अरविंदो ने ऐसे ही नहीं कहा था। इसके लिए कहा गया है, गायन्ति देवाः किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतो भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। अर्थात वह भारत भूमि धन्य है, देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं, जो स्वर्ग के समस्त पदों पे रहने के बाद मनुष्य के रूप में जन्म लेने को यहां लालायित रहते हैं। तो आप समझिए, क्योंकि मोक्ष भूमि यही है और यहीं से मोक्ष मिलता था, तो उस देश के हम प्रतीक थे जिसने आजादी की वो पहली किरण देखी। मैं मानता हूं कि लोकमान्य तिलक का पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज, सुभाष चंद्र बोस जी की सैन्य शक्ति और बाबा साहब अंबेडकर की लेखनी की शक्ति, ये सब के सब कहीं ना कहीं इसी विचार से प्रेरित थे। और जब उस समय हम लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में यह देश ने आधी रात को नियति के साथ अपना पहला मिलन देखा, तो उसकी हमें एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के दौर में दुनिया के कई देश तबाह भी हुए, डिवाइड भी हुए। कोरिया डिवाइड हुआ, जर्मनी डिवाइड हुआ, जापान तबाह हुआ था, इजराइल ने होलोकॉस्ट सह के एक नया अस्तित्व पाया था, चीन में बड़ा परिवर्तन आया था। परंतु हम कह सकते हैं कि हमने भी उस आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, जिसमें लाखों लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे और 1.5 से 2 करोड़ लोग बेघर बार होकर इधर से उधर गए थे, विच इज द बिगेस्ट एक्सोडस इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जब इतनी बड़ी कीमत चुका के हमें आजादी मिली तो हमें उसके मूल्य को समझना चाहिए। हाँ, ये सारे देश जो हमारे साथ आजाद हुए थे, ये एक दौर में बहुत तेजी से आगे हुए थे, पर आज हम कह सकते हैं कि आज मोदी जी के नेतृत्व में हम उस पंक्ति में आकर खड़े हुए हैं जब उन सारे देशों के साथ भारत की गणना अग्रणी देशों में होती है। अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता मनोज झा जी ने उल्लेख किया था कि आज समाज में उतनी कटुता उनको दिखाई पड़ती है जितनी विभाजन के समय भी नहीं थी। मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, विभाजन के समय कटुता की बात नहीं, दृढ़ता की कमी थी। जो दृढ़ता आज है, अगर ये होती तो शायद विभाजन का विधान ही पास नहीं होता। यदि देश विभाजन का स्वीकार विधान नहीं होता तो भारत मां का अंचल पाकिस्तान नहीं होता। अब 75 वर्ष के इस कालखंड को मैं ये कह सकता हूं तीन कालखंड में विभाजित करना चाहूंगा। पहले 25 वर्ष 1947 से 72, दूसरे 25 वर्ष 72 से 97 और तीसरे 25 वर्ष 98 से आज का समय। पहले 25 वर्ष हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय खड़गे जी ने कहा कि दुनिया को इस बात को लेकर संदेह था कि भारत लोकतंत्र रह पाएगा या नहीं। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि उस समय लोकतंत्र को लेकर भारत
की डेमोक्रेसी यदि ये कहा जाए एम्ब्रॉयनिक स्टेज में थी, यानी गर्भावस्था में थी, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी लोगों को यह शक था कि ये लोकतंत्र रहेगा, उठ पाएगा या नहीं। मगर जानते हैं किसको शक था? केवल उन्हीं को शक था जिन्हें भारत की परंपरा और भारत की व्यवस्था के बारे में नहीं था। उस गर्भावस्था के संस्कार इतने प्रबल थे हजारों वर्षों से कि मैं कोट करना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने 28 अक्टूबर 1951 को यह कहा कि डेमोक्रेसी आज भले ही हमारे लिए नई दिखाई पड़ती हो, परंतु हमारा इतना गहरा प्रभाव है कि उन्होंने कहा कि महापरिनिर्वाण सूक्त में लिखा है, जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो रहा था तो उन्होंने कहा कि जहां पर समिति बैठी हुई थी, जहां उन्होंने कहा कि वह कार्रवाई पूरी करे और उसके उपरांत ही लोग यहां पर आए, अर्थात व्यवस्था के तहत बैठकर लोकतांत्रिक निर्णय किस प्रकार से होते थे, उन्होंने इस विषय को रेखांकित किया। और नेता सदन पीयूष गोयल जी ने जब इस बात का उल्लेख किया था कि वैदिक काल में भी सभा और समिति थी, चोल साम्राज्य में हमारे कई प्रतिपक्षी लोगों ने बोला गांवों में समितियों का चयन जैसे वोट के द्वारा होता था, भगवान बासवन्ना के अनुभव मंडपम जिसमें 12वीं शताब्दी में बैठकर निर्णय होता था, वैशाली का वह गणराज्य जिसे दुनिया का पहला गणराज्य कहा जाता है, इतनी बड़ी परंपरा थी। इसीलिए सिर्फ उनको संदेह था जो भारत को भारत की दृष्टि से नहीं समझ पा रहे थे। जो भारत की दृष्टि से समझ पा रहे थे उन्हें पूरा यह यकीन था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मगर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। लोग ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी की शुरुआत, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सिर्फ हमारे यहां थी। ऐसा नहीं था। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं और देश थी उनमें कहीं भी धार्मिक विषय पे, रिलीजियस विषय के ऊपर डेमोक्रेसी का कोई उल्लेख नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। सिर्फ जो कहा गया उसे सुन लो, इसके अलावा कोई डिस्कशन का उल्लेख नहीं है। परंतु सिर्फ हमारे यहां था। वैदिक काल में शास्त्रार्थ होता था, एक ही धर्म ग्रंथ के एक हिस्से को लेकर एक द्वैत का मत है, एक अद्वैत का मत है, एक विशिष्टाद्वैत का मत है, और जो कहा गया कस्मै देवाय हविषा विधेम, यानी प्रश्न और उसके बाद निर्णय। तो मैं कह सकता हूं इंडिया is the mother of political democracy, but also the foundation head of religious and spiritual democracy in the world, which is not found anywhere in the world. और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस भाव को भली भांति समझा। परंतु जब डेमोक्रेसी अपने प्रारंभिक कालखंड में थी 25 वर्ष के, तब उस समय यदि यह विचार किया जाए तो कहा जाता है कि सत्ता पक्ष के बहुत से लोगों ने बड़ा योगदान दिया। तो मैं भी याद दिलाना चाहता हूं हमने क्या योगदान दिया। प्रतिपक्ष के रूप में जब देश के सामने चुनौती आई तो हमने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि हम प्रतिपक्ष में हैं या हमारे साथ क्या हुआ है। 1962 की चाइना वॉर हुई तो भारतीय जनसंघ के रूप में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का जो हमने सहयोग और समर्थन किया, और जनसंघ ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इतना सहयोग किया कि गांधी नेहरू जी ने पूरी प्रशंसा की और 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस परेड में बुलाया। 1965 वॉर में लाल बहादुर शास्त्री जी का जिस प्रकार से सहयोग किया, यह पूरी तरीके से ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में जनसंघ के अध्यक्ष नहीं, गुरुजी को भी बुलाया था। यह पहले 25 वर्ष में आगे बढ़ते हुए जब हम 1972 के पास पहुंचे तो आप सभी बड़े गर्व से कहते हैं कि 71 की वॉर के समय अटल जी ने इंदिरा जी की भूरी प्रशंसा की थी। यह होता है विपक्ष के रूप में लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए एक सकारात्मक भूमिका निभाना, और कैसे उस प्रारंभिक अवस्था में हमने आगे किया। वैसे मैं यह भी कह दूं, वो अटल जी ने वो नहीं बोला था जिसके बारे में बहुत ज्यादा बोला जाता है, क्योंकि इंदिरा जी की ऑफिशियल जीवनी पुपुल जयकर जी ने लिखी थी और उन्होंने बहुत खोजा था, मगर वो चीज नहीं मिली थी जो कहा जाता। परंतु ये ईमानदारी की बात है कि वह प्रशंसा की थी और उसके द्वारा देश बढ़ता हुआ आगे तक पहुंचा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि पहले कालखंड में विपक्ष के रूप में हमने डेमोक्रेसी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला कालखंड आता है 72 to 97। इसे मैं कह सकता हूं कि दिस इज द नेसेंट स्टेज ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि पहले कालखंड के 25 वर्ष में चुनाव होते थे, सरकार नहीं बदलती थी। तो सरकार नहीं बदलती थी तो लोकतंत्र का दूसरा स्वरूप नहीं आता था। अब 72 से 97 वाले कालखंड में सरकारें बदलनी शुरू हुई। लोकतंत्र ने इमरजेंसी का वह काला अध्याय देखा जो कि बहुत दर्दनाक और दुखद था।
परंतु आज के इस अवसर पे मैं उसके डिटेल में न जाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारत का लोकतंत्र इतना जीवंत था कि जेपी के नेतृत्व में हम लोगों ने वो आंदोलन खड़ा किया कि चाहे जितनी भी दमनकारी शक्ति थी, अंततः भारत में पहली बार केंद्र में सत्ता का परिवर्तन 1977 में हुआ। ये बदलाव आया और उसके बाद एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं कि जब एक गठबंधन बना था सभी लोगों को मिलके, मगर बहुत जल्द ही वो गठबंधन कुछ छल में, कुछ प्रपंच में, कुछ अहम मान्यता में बिखर गया था 1979 में। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं इस संसद ने वो भी देखा कि ये 24 दिन की सरकार बनी, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए और उस समय अटल जी ने दुखी होकर एक कविता लिखी थी। आप सबने वो तो सुना होगा ना, गीत नया गाता हूं, पर उन्होंने लिखा था गीत नहीं गाता हूं। उन्होंने लिखा था उस समय की घटना से दुखी होकर कि लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। आज मेला कई बार लग चुका है, पटना से लेके बेंगलुरु से लेके मुंबई तक, मेले में कौन किसका मीत है ये तो शायद अंदर बैठे वालों को ही पता होगा कि उन्हें मीत मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कहता हूं कि अटल जी की यह बात हमें एकदम उचित और उपयुक्त नजर आती है। इसके बाद उस कालखंड में 1980 का दशक आया, जब इस देश ने एक ऐसा दौर भी देखा जब 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सत्ता में वापसी हुई, तो अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता और कई लोग कहते थे कि सरकारों को हटाया गया, विपक्ष की तमाम सरकारें केवल इस आधार पर बर्खास्त कर दी गई कि केंद्र में आपकी पार्टी चुनाव हार गई है तो राज्यों में आपको शासन करने का अधिकार नहीं रह गया है। मुझे लगता है कि इस आधार के ऊपर सरकार केंद्र में आई और उसने विपक्ष की सारी सरकारों को एक झटके में बर्खास्त कर दिया। यह भी लोकतंत्र के लिए एक चुनौती का दौर था और 80 के दशक में दो सबसे शक्तिशाली सरकारें हम लोगों ने देखी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 2/3 बहुमत की सरकार और राजीव गांधी जी की 80% बहुमत की सरकार। मगर इसी समय में देश ने बहुत बड़ी चुनौतियां, यह भी विडंबना थी कि सबसे शक्तिशाली बहुमत की सरकारों के दौर में आतंकवाद भी देश ने सबसे भयानक रूप में उठता हुआ देखा। फिर एक दौर आया जब 1980 के दशक का अंत हुआ और उस समय राष्ट्रवाद एक नए स्वरूप में उभरा, भारत के समाज में भी परिवर्तन आया, सामाजिक न्याय एक नए स्वरूप में उभरा, श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन उभरा और इस देश की पॉलिटिक्स यूनिपोलर से बाइपोलर हुई जब 1991 में हम लोग मुख्य विपक्षी दल बने 120 सीटों के साथ। और उसी समय अर्थव्यवस्था का भी पुराना ढांचा टूटा, जो नेहरूवियन मॉडल था, वो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और श्री पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसको समाप्त किया। और मुझे याद है, मैं तो बहुत बच्चा था उस समय, स्टूडेंट था, उस खुली अर्थव्यवस्था में भाषण देते हुए सदन में अटल जी ने बड़े चुटीले अंदाज में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए गए हैं, कह दिया गया अब खुली अर्थव्यवस्था आ गई है। मगर उन्होंने कहा सभापति महोदय, जितने दरवाजे आगे के खोले गए उतने पीछे के दरवाजे भी खोल दिए गए। और फिर उन्होंने कहा कुछ तो ऐसे भी हैं जो पीछे के दरवाजे ही नहीं, रोशनदान से भी अंदर आने के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। इस प्रकार से उन्होंने उस खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन और उसकी विद्रूपता के ऊपर एक अटैक भी करने का कार्य किया। और फिर इस देश ने एक वो दौर भी देखा जब 13 दिन की सरकार बनी और उस 13 दिन की सरकार ने इस संसद के इतिहास में मील का पत्थर स्थापित कर दिया, जब संसद की सीधी कार्रवाई का प्रसारण हमने उस 13 दिन की सरकार में प्रारंभ किया। तो लोकतंत्र में पारदर्शिता और संसदीय कार्य की पारदर्शिता में मील का पत्थर हमने 1996 में 13 दिन की सरकार में स्थापित किया। फिर 97 में, चूंकि अब हम उत्तरोत्तर शक्तिशाली होते जा रहे थे, तो सब मिलकर हमारे खिलाफ एकजुट थे और इस संसद में एक वो दृश्य भी देखा कि सामान्यतः सरकार में एक दल होता है और बाकी सब दल विपक्ष में होते हैं। इस 50वें साल में हमने वो दृश्य देखा कि विपक्ष में एक दल था और बाकी सारे दल सरकार में थे, सरकार के साथ थे या सरकार के अंदर थे या सरकार के बाहर थे। जिसमें आप सबको वह ध्यान होगा जो प्रमोद महाजन जी ने बोला था कि वो विदेश में गए और उनका परिचय हुआ चाइना में कि साहब हम सबसे बड़े दल हैं
और हम सरकार से बाहर है, विपक्षी दल है। फिर उन्होंने कांग्रेस के सदस्य का परिचय कराया, दूसरे सबसे बड़े दल हैं मगर ये सरकार में नहीं है, समर्थन कर रहे हैं। फिर तीसरे व्यक्ति का परिचय कराया और कहा कि साहब ये सरकार के साथ है मगर मंत्री नहीं है, सरकार में नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि रमाकांत कलब जी थे, उन्होंने कहा जी ये एकमात्र सांसद हैं अपने दल के और ये सरकार है। तो मेरे विचार से संसद का यह स्वरूप भी उस समय हमने देखा। वैसे इस अवसर के ऊपर मैं कोई चुभती बात नहीं करना चाहता, पर यह भी याद है कि 97 में गुजराल जी की सरकार किस मामले पे गई थी। जैन कमीशन की रिपोर्ट, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की दुखद हत्या और उसको लेकर कुछ लोगों के, पार्टियों के नेताओं के साथ संबंध को लेकर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार गिराई गई थी और कहा गया था कि यह सरकार नहीं चल सकती यदि डीएमके के साथ समर्थन वापस नहीं लेते। परंतु कोई बात नहीं, आज 25 साल के बाद राजीव गांधी जी के प्रति श्रद्धा का ज्वार गठबंधन के खुमार में कहीं दब गया है और इसलिए अब परिस्थिति भिन्न है। अब मैं आता हूं इस कालखंड पे, 1998 से 2023, ये तीसरा कालखंड जो हमारा हुआ, इसकी शुरुआत हुई पोखरण के विस्फोट के साथ। भारत की शक्ति का उदय हुआ और भारत में एक अंतर मैं और स्पष्ट कर दूं, 1974 में भी इंदिरा जी ने परमाणु विस्फोट किया था और 98 दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस यह था कि 1974 में हमारे घोषणा करने से पहले सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों ने घोषित कर दिया था कि भारत ने टेस्ट किया है। परंतु जब हमने 98 में किया तो जब अटल जी ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तब तक अमेरिका को भी नहीं पता था कि परमाणु विस्फोट हो गया है। और दूसरा, 98 में हमने 5 एक्सप्लोजन किए थे जिसमें हाइड्रोजन बम से लेके सब किलो टन तक के थे और अंतर यह था कि 74 में हमने कहा था कि हमने शांतिपूर्ण पर्पस के लिए किया है। 98 में हमने कहा नाउ वी आर द न्यूक्लियर स्टेट और हमने अपने को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया था। फिर इसी सदन में एक और भी चीज हुई जो सभापति महोदय, कभी कभी क्या होता है टेक्निकलिटी और मॉरलिटी के बीच की धारा बहुत छोटी होती है। अप्रैल 1999 में एक वोट से सरकार गिरी और वो एक वोट किसका था? उस समय श्री गिरधर गोमांग जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो टेक्निकली तो वो संसद के में वोट कर सकते थे, पर मैंने कहा ना टेक्निकलिटी और मॉरलिटी के बीच की जो धारा होती है वो बहुत हल्की होती है। खैर कोई बात नहीं, एक वोट से सरकार गिरी, परंतु उसके बाद पुनः हम लोग आए पुनः हम लोग सत्ता में आए और उसके बाद 2004 का दौर आया। 2004 में हम 7 सीटों के अंतर से चूक गए, परंतु मैं यह भी कहना चाहूंगा उस दौर में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज बहुत सारे विदेश के अखबारों संस्थानों को लोग कोट करते हैं, कई विदेशी अखबारों ने और कई अंतरराष्ट्रीय बुद्धिजीवियों ने जिसमें भारत के भी थे, नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे, उन्होंने 2004 में कहा था एक बात कि इंडिया इज अ मार्वेल ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि उन्होंने कहा अ लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी who is a Christian lady is asking a Muslim president to appoint a Sikh as prime minister of the country when 80% are Hindus. That's why India is a marvel of democracy और मैं कह सकता हूं यही crux of democracy है। ये मूल भाव है जिसकी वजह से यहां सबको समान रूप से रहने का मौका मिलता है और आगे चलने का मौका मिलता है। आगे के 10 वर्षों के ऊपर मैं इस समय में बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे विचार से इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, वो सबको यह बात पता है कि उस कालखंड में क्या हुआ। अब मैं आता हूं 2014 पे। जब 2014 में 16 मई 2014 को श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, तो उस समय परिस्थिति यह थी कि मैं याद दिलाना चाहता हूं 18 मई 2014 लंदन के संडे गार्डियन ने अपने आर्टिकल में लिखा, सिर्फ पहली लाइन बोलूंगा, आगे का नहीं बोलता हूं। उन्होंने कहा दिस इज द इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। यह नियति के साथ दूसरा मिलन था, क्योंकि पहली बार एक ऐसे दल को सत्ता मिली थी जिसका उत्पत्ति विचार स्वतंत्र भारत में हुआ और पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला। परंतु यह सरकार सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं थी, यह विचार बदलने के लिए थी और इसीलिए मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कुछ ऐसे विषय उठाए जो कहा गया नॉन पॉलिटिकल है। जैसे उन्होंने कहा स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विषय कहा, परंतु यह विचार बदलने के लिए था। आज आप देखिए
हमारे आप में से किसी के भी हाथ में कोई पैकेट और रैपर होता, जैसे पहले कोई आसानी से लोग फेंक दिया करते थे, अब ऐसा नहीं होता। और अगर उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा तो नवजात शिशुओं के लिंग अनुपात में भारी परिवर्तन दर्ज किया गया है और इस साल पहली बार ऐसा हुआ है नवजात शिशुओं में लड़कियों की संख्या अधिक आई है। यानी ये इतना बड़ा परिवर्तन आया। और अभी उदारता की बात कर रहे थे हमारे खड़गे जी, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इसी दरमियान स्टैंडिंग कमेटीज की जब बात होती है तो जो बिल आए हैं 2014 के बाद सरकार की तरफ से, तो उसमें 46 बिल्स आए हैं, जिसमें 14 स्टैंडिंग कमेटी को और 23 सेलेक्ट कमेटीज को गए हैं। यानी 46 में 37, 80% बिल पार्लियामेंट्री कमेटीज को गए हैं। यह फैक्ट भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसी के साथ मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा था थोड़ा बड़ा हृदय होना चाहिए, तो याद करिए मोदी जी का पहला भाषण 2014 में, जब उन्होंने क्या कहा कि हम तो समाज के सबसे गरीब व्यक्ति की तरफ नजर रखते हैं क्योंकि हम दीनदयाल जी के अंत्योदय से प्रेरित हैं। और आगे उन्होंने कहा महात्मा गांधी हो, लोहिया जी हो या दीनदयाल जी हो, सभी का विचार इसी भाव से प्रेरित था। हमने इसकी कोई चिंता नहीं की कि कौन हमारी पार्टी का है कौन हमारी पार्टी का नहीं। और विशाल हृदय तो इतना दिखाया कि सरदार पटेल की दुनिया की सबसे विशाल मूर्ति बनाकर दिखाई। हमें इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि उनके कालखंड में भले ही आरएसएस पे बैन लगा हो, परंतु जिसने देश के लिए इतना ऊंचा काम किया उसका मुकाम भी उतना ऊंचा होना चाहिए। फिर मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, मोदी जी के ही कालखंड में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, हमने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भारत रत्न नहीं दिया, प्रणब मुखर्जी जी को भी भारत रत्न दिया, हमने तरुण गोगोई जी को भी पद्म भूषण दिया, एससी जमीर जी को भी पद्म भूषण दिया। मुझे लगता है शायद इससे ज्यादा उदारता बगैर इस बात की चिंता किए हुए कि कौन हमारी पार्टी का है कौन हमारी पार्टी का नहीं है, भारत के इतिहास में यह देखने को नहीं मिलता है जो उदाहरण उन्होंने दिया। हां, यह जरूर कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग, उनको इसमें भी उदारता न नजर आई हो जो बाबा साहब का बहुत उल्लेख करते हैं, और बाबा साहब को भारत रत्न देने में इतना लंबा समय लग गया था, उनके कालखंड में नहीं मिला था। हमारी जब सरकार आई तो अटल जी की सरकार के समय में जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी, उस अलीपुर रोड बंगले को सरकार ने लेकर उसको स्मारक बनाया। मोदी जी ने मुंबई में और लंदन तक जाके जिस मकान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रहे थे, भारत सरकार ने उसको लेकर उसे स्मारक बनाने का काम किया और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में उसको स्थापित किया। तो यह दर्शाता है कि हमने सभी के प्रति, जिसने इस देश के लिए जो योगदान दिया, उन सब के प्रति हमने ईमानदारी से और पूरी दृढ़ता के साथ इन 75 वर्षों में यह करने का प्रयास किया है। और एक और बड़ा परिवर्तन आया। देखिए, जब इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, परंतु वो ईश्वर की कृपा से एक समृद्ध परिवार से आते थे। उनके बचपन से उनके मुंह में सोने का चम्मच था, और आज 75 वर्ष के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने बचपन प्लेटफॉर्म पे दौड़ते हुए चम्मच और चाय के गिलास को लेकर दौड़ते हुए गुजारा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अंतर ये आया है कि ये लोकतंत्र की परिपक्वता है, इसका हम सबको, हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि अब लोकतंत्र लक्ष्मी नारायण की कृपा से लेके दरिद्र नारायण के सम्मान तक आके खड़ा हो गया है। यह परिवर्तन इस 75 वर्ष में लोकतंत्र में आया है। और इस संसद में भी जो 4 सर्वोच्च पद माने जाते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, आज राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आज हम कह सकते हैं कि जनरल क्लास हो, शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी क्लास हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो या माइनॉरिटीज हो, आज अब कोई भी वर्ग ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे संसद के 4 सर्वोच्च पदों में से किसी एक पर कभी प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। ये लोकतंत्र में को हमने उस मुकाम तक पहुंचाया है इस अमृत काल में। मेरे विचार से इसके लिए भी मोदी सरकार का अभिनंदन किया जाना चाहिए। और यह भी मैं बताना चाहता हूं, इस समय यह भी एक सुखद संयोग देखिए कि सभी पदों पर बैठे हुए लोग वो हैं जो आजादी के बाद उत्पन्न हुए हैं, अर्थात अब स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भाव का नेतृत्व इस समय संसद में भिन्न भिन्न रूप में आगे चल रहा है। शक्ति सिंह गोयल जी ने कुछ बात बोली थी, एक मैं उनका भी जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने एक दोहा बोला था, हम लोग की तरफ भी गांवों में बोला जाता है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया जी, आपके एक वाक्य को देखकर बाहर गए।
नहीं मान्यवर, उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, हम लोग की तरफ भी गांवों में कहा जाता है, कहे घाघ सुन भट्टरी, यही गांव में रहना है, और ऊंट बिलारी ले गई हाँ जी कहना है। वो कह रहे थे कि हाँ जी कहना पड़ता है, ये तो उनके मन की कल्पना थी। मैं सिर्फ 3 चीजें कोट करता हूं, किसी के प्रति कुछ नहीं। मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम, उसके आखिरी वो 30 पन्ने जो उन्होंने कहा था मेरी मृत्यु के 30 वर्ष के बाद पब्लिश हो, उसको पढ़ लीजिए। श्री पीवी नरसिम्हा राव की किताब द इनसाइडर, जिसका हिंदी अनुवाद अंतर्गाथा के रूप में भी विद्यमान है, वो भी पढ़ लीजिए। और श्री नटवर सिंह जी की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ पढ़ लीजिए। तो फिर मेरे विचार से शक्ति सिंह गोयल जी को वह शक्ति मिलेगी कि हाँ जी कैसे कहना है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, खड़गे जी ने G20 पे कहा कि कमल का फूल दिख रहा था। मान्यवर, G20 में जो कमल का फूल था वो 5 पंखुड़ियों वाला फूल है, जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। हमारा कमल का फूल 8 पंखुड़ियों वाला है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उनको ध्यान रखना चाहिए कि आज अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो हमें इंटेलेक्चुअली भी आगे बढ़ना है, फाइनेंशियली भी। हमें लक्ष्मी जी की भी कृपा चाहिए। सर 1 मिनट और, हम कंक्लूड कर रहे हैं सर। हमें लक्ष्मी जी की भी कृपा चाहिए और सरस्वती जी की भी कृपा चाहिए, और दोनों ही कमल पे विराजती हैं। तो जितना कमल खिला रहेगा, हमारा प्रगति का मार्ग उतना ही प्रशस्त रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, बस समराइज कर रहा हूं सर 1 मिनट में, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर G20 में हमने वो विकास दिखाया कि आज 7.8% के साथ हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती व्यवस्थाएं। आज दुनिया में क्या स्थिति है, चाइना की, अमेरिका की, यूरोप की, पाकिस्तान और श्रीलंका छोड़ दीजिए। तो मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा मोदी जी के लिए, और सर एक लाइन उसके बाद और आपसे मैं मोदी जी के लिए जो आप लोगों के मन में भाव आता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस विपरीत परिस्थिति में जैसे देश को चलाया है, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी चिराग अक्सर हमने जलाए। और अंत में सर 1 मिनट, अंत में मैं अटल जी की उस पंक्ति से समाप्त करता हूं। आप सबसे आह्वान करता हूं, नई संसद में जा रहे हैं तो वो जो उनकी पंक्ति थी कि आओ मिलकर दिया जलाएं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अपने लोग ही कुछ विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। और यज्ञ का धुआं उन सारे वायरस को नष्ट करे जिसमें डेंगू भी है, मलेरिया भी है, कोरोना भी है, HIV भी है, जो मन में बैठा उस वायरस को नष्ट करे और एक भारत श्रेष्ठ भारत का मार्ग प्रशस्त करे। Mr. Derek O'Brien, 10 minutes, please. So how many minutes? 10 minutes, 10 minutes. So we are 21. No. My colleague has spoken for 4. No, I adjusted most people. So that's not how we have done it. My colleague, we have 21 minutes. No. My colleague has spoken for 3. I've got 18 minutes, sir. Mr. Derek O'Brien, the time sir, of 18 minutes. 1 second. Listen to me now. The board is saying 18 minutes, sir. Look at I have not even started. The board is saying 18 minutes, sir. You are telling me 10 minutes. I am aware of it. The ruling party time is still left for 1 hour because Sir, I have accommodated the opposition. Sir, my board is saying 18 okay, minutes. Please go ahead. If you can't understand this simple thing that I have accommodated opposition out of ruling party time of more than 1 hour. I can only understand. Okay, please. I can only understand my Trinamool Congress was given 21 minutes. Okay. My colleague has spoken for 3. Please, your time is already on. Give me back my parliament. Please. Okay, go ahead. Give me back my parliament, which is not mocked. Give me back my parliament, which is not undermined. Give me back my parliament, where prime ministers come and answer questions on the floor of Lok Sabha and on the floor of Rajya Sabha. Last 7 years, not a single question answered on the floor of parliament. Give me back my parliament, where urgent national issues can be discussed from 11 o'clock in the morning on a special rule. Last 7 years, not one notice given by the opposition has been accepted. Give me back my parliament, where we get to see the Honorable Prime Minister regularly here with us. In 2021,
our Honorable Prime Minister was here in 1 year for 4 hours and 3 minutes between two houses. Give me back my parliament, where members are allowed to vote when bills are put to vote and not the sacrilege which happened during the farm bills. Give me back my parliament, where we have a deputy speaker in the Lok Sabha. 5 years, still no deputy speaker. Give me back my parliament, where policy making is collaborative, not dictatorial. On record, I say, not from 2014 to now, 1 out of 10 bills are sent to parliamentary standing committees for scrutiny. Give me back my parliament, where legislation undergoes rigorous stakeholder evaluation. On record, I say, 9 out of 10 bills, 9 out of 10 bills marked by 0 or incomplete pre-legislative consultation. 9 out of 10. Give me back my parliament, where bills are passed, keeping this House in mind the Council of States, the federal structure. On record, I say, about 1 out of 3 bills passed have been anti-federal, hurting the states. Shame. And on a personal note, we may be going to the new building. Give me back my parliament. We may be in the new building, sir, but so many bonds, so many friendships, so many crossing of ideological barriers, so many times where we condoled with colleagues from different parties who've lost their loved ones or celebrated the births of grandchildren. We used to do this in Central Hall. Sir, give me back my parliament. Let's go to the new parliament, but keep our Central Hall alive. Give me back my India. Give me back my Bharat. Give me back my India, where a state is not consumed by violence for 5 months. Sorry, Manipur, we still haven't managed to send our Honorable Prime Minister to you. From all of us, sorry. Give me back my India, where 1 out of 3 youth are not unemployed. Give me back my India, when double-digit food price inflation does not lead to 3 out of 4 people here who cannot afford a healthy diet. Give me back my India, where crimes against women are met with the harshest punishments, where our champion athletes don't get sexually harassed, where abusive men in power are not shielded. Yes, my party doesn't, All India Trinamool Congress led by Mamata Banerjee needs no lectures on women's reservation bill. Whether you bring the bill, don't bring the bill. We already have 1/3 of our elected representatives here in Parliament. But don't spare the men who have done what they have done. Doesn't matter whichever party they come from. Give me back my India, where farmers are guaranteed MSP for crops, where farmer suicides are a thing of the past, where farmers get prioritized over large corporations. 10,000 farmers committed suicide in 2021. Give me back my India, where the Prime Minister pays condolences when Jawans are martyred and not attend party functions. Don't show us hollow nationalism to win political points. Give me back my India, where states, and I say this from the Council of States, are not deprived of
नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और अपनी सहयोगी टीना झा के साथ आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, जो संसद का विशेष सत्र पर हमारा ये खास कार्यक्रम है। जाहिर सी बात है, भारत अमृतकाल का उत्सव मना रहा है। 75 साल हमारी संसदीय जो लोकतंत्र की यात्रा है उसको पूर्ण हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र हमारा स्वभाव है, हमारे आचरण और व्यवहार में है लोकतंत्र। हमारा लोकतंत्र पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। पूरी दुनिया को राह दिखाने का काम हमारे मजबूत लोकतंत्र ने किया है। हमारे लोकतंत्र के पल पल का साक्षी है हमारा संसद भवन। 8 सितंबर को हमारे पुराने संसद भवन में आखिरी बैठक हुई। दशकों का इतिहास और मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं की गवाह रही है पुरानी संसद की यह इमारत। 144 खंभों पर खड़ी हमारी संसद की पुरानी बिल्डिंग आज़ादी से अमृतकाल तक इस इमारत ने हिंदुस्तान बनते देखा, भारत को अपने पैरों पर खड़े होते देखा है। करोड़ों भारतीयों की आवाज बनी, नई इबारत लिखी। इस भवन को अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन भारत के भाग को बनते और संवरते देखा लोकतंत्र, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। ये लिखा है, हमने पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, लेकिन शायद इस इमारत ने इसको भारत का, भारत से भारत के लिए कहा है, बनाया है। इसको लोकतंत्र का मंदिर कहा गया है, सही कहा गया है। ना जाने कितनों की उम्मीदों और अरमानों को पंख दिए हैं हमारी इस संसद ने। टीना झा जी, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और इसके कई माने हैं, कई संदेश हैं। Absolutely, you're right, Manoj. Hello and welcome viewers to this special broadcast on Sansad TV. So, as my colleague rightly said, as we embark on this journey from a glorious legacy to a prosperous future, today, the first day of the 5-day special session began. The first day of the sitting marked the 75 years of the parliamentary journey. Right from the forming of the Constituent Assembly, both the Lok Sabha and Rajya Sabha discussed the achievements, experiences, memories and learnings over the last 75 years. Prime Minister Narendra Modi opened the discussion in the Lok Sabha, saying today is an occasion to recollect and reminisce the parliamentary journey of 75 years of India before the proceedings shift to the newly inaugurated building. The Prime Minister also pointed out that even though the decision to construct this building was made by those who ruled over us for 200 years, it was the hard work, dedication and money spent by Indians that went towards its development. The Prime Minister said in the journey of 75 years, the Parliament has created the best of the conventions and traditions, which has seen the contribution of all and witnessed by all as well. So even though we are shifting to the new building, the old one will continue to inspire the coming generations, as it is a golden chapter of the journey of Indian democracy. Also in the Rajya Sabha, Union Minister and Leader of the House, Piyush Goyal, initiated the discussion. He highlighted the achievements of the 75-year journey of India's parliamentary democracy, and at the same time he expressed hope that as we embark on a new journey, all members of parliament must work together and play an important role in taking the country forward at a much faster pace. So we'll focus on some of the significant points made by members of different political parties while taking part in the discussion on 75 years of parliament. We'll also analyze what historical achievements we've seen in the parliament, what are the learnings over the past 75 years that we carry forward as we embark on this new journey to the new parliament building. We have two special guests joining us in the studio. Very delighted to have with us Mr. Bhartrihari Mehta, Member of Parliament, Lok Sabha. He represents the BJD, and Mr. Jagannath Sarkar, Member of Parliament, Lok Sabha. He represents the BJP in the lower house. Thank you to both our guests for joining us on this special telecast on Sansad TV. जी बिल्कुल, और आज का दिन जैसा कहा कि ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि एक ये यात्रा है, लोकतंत्र की यात्रा, भारत के संसदीय लोकतंत्र की यात्रा, जो नूतन को पुरातन से, उसके सह अस्तित्व को जोड़ती है, उसका एक आदर्श उदाहरण है। इस भारत की जो संसदीय लोकतंत्र की यात्रा है, उसके बारे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में विस्तार से बताया। उसके क्या मायने हैं, क्या संदेश हैं, ये भी देश और दुनिया को बताया कि भारत का लोकतंत्र किस तरह आगे बढ़ा है, किस तरह मजबूत हुआ है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। माननीय अध्यक्ष जी, देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए
और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय, जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है, इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। So quite an impactful speech there by Prime Minister on the last day of working in the old Parliament building. Tomorrow onwards, the proceedings will shift to the new Parliament building. Let me get the opening remarks from our guests who are joining us in the studio. Mr. Mehtab and Mr. Sarkar, both of you are members of the Lok Sabha. Mr. Mehtab, to you first. Your first reaction to the Prime Minister's speech, in which he covered various aspects of the glorious journey over the past 75 years. And the Prime Minister also did mention how our forefathers have set a direction of growth for us that we are following today. He didn't forget to thank the support staff that makes the proceedings seamless. What do you think of the Prime Minister's speech today? Prime Minister, in his 1 hour long speech, practically covered everything. He set the tone for discussion today. It was actually a valedictory function, like a valedictory function that one says when one leaves the university. We are only crossing the street to another edifice. This edifice, which have been functioning since 1927, the British, of course, built it, but as the Prime Minister very rightly mentioned, it is the toil and money and the labor force of all Indians who built this great edifice. It's so majestic, magnificent. And even we are going to complete 100 years of this Parliament House in another 4 years' time. But it, from the facade of the building, the look from outside is very grandeur. So in that respect, many people feel that perhaps it was all right. Why
should we have a new building for our parliament. But anyone who enters into it, who functions inside that building, knows what type of difficulty one faces. And that is the reason why, despite all difficulties, the support staff, when we say support staff, it encompasses everyone. The Secretariat of Parliament. Even he mentioned about the gardener who maintains the garden around the lawn around the Parliament. Because of his minute observation, he did not miss anyone. And in that respect, this is the time when you are leaving your house for a new house, you give your thanks to everyone. That's what he did. And also he mentioned about the Imperial Legislative Assembly. We used to call it as Central Assembly, and that is the name. For 20 years the British used it. And just imagine, the British built this great edifice in 1927 and had to leave the country within 20 years. They don't have such a magnificent building even in London, nor in any other colony of British Empire. It was India's money, it was India's expertise that was utilized for building this. Of course, we say the British have done it, but I believe the standard that they set, which has been evolved in Britain for more than 200 or 250 years or more than that, we inculcated the parliamentary democracy instantly. And within 75 years, if one looks in the hindsight, what progress we have made. The progress that Britain had made in 100 years or 200 years, we could achieve it within 20 years. That is the beauty of our resilience, and that should be praised, which the Prime Minister did in his speech. Right. जी बिल्कुल। और इस समय मेरे सहयोगी पवन शर्मा इस समय संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। पवन जी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। खास तौर से हमने देखा जिस तरह से सदन में चर्चा हुई और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबने जिस तरह से भारत की जो संसदीय लोकतांत्रिक यात्रा है उसके बारे में अपने संस्मरण, अपनी यादों को साझा किया और देश आगे कैसे बढ़े, एक साथ लोकतंत्र कैसे आगे और मजबूत हो, इसको लेकर भी अपने अपने सुझाव सदन में सदस्यों ने रखे। कैसा रहा आज का दिन? क्या कुछ खास देखा आपने? क्या कुछ खास जानकारी आपके पास है? मनोज जी, ऐतिहासिक जो है आज का दिन तो रहा ही, कल का दिन भी बहुत ऐतिहासिक है जी। आज का दिन इस लिहाज से ऐतिहासिक है क्योंकि जो संसद का जो पुराना भवन है, जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के चैम्बर है, जहाँ पे कार्रवाई चलती रही है अब तक, वो आज वहाँ पे आखिरी कार्रवाई थी, मतलब आखिरी दिन था। इसके बाद जो है अब जो संसदीय कार्रवाई होगी वो संसद के नए भवन में जो लोकसभा का नया चैम्बर है और राज्यसभा का जो नया चैम्बर है वहाँ पे होगी। तो इस लिहाज से इस लिहाज से ये ऐतिहासिक है। जहाँ तक बात करूँ इस पुरानी बिल्डिंग की मनोज जी, तो मैं 1921 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, 1927 में ये बनकर तैयार हुई और पिछले 96 वर्षों में, क्योंकि अगर 1927 से लेकर यात्रा इसकी देखें यहाँ 2023 तक, भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद, और फिर भारतीय लोकतंत्र की, गणतंत्र की यात्रा 75 वर्षों की पूरी हो चुकी है और हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। तो ये यात्रा लगभग अगर इस संसदीय भवन की करें तो वो 96 वर्षों की है। तो 96 वर्षों में देश के लिए बहुत सारे कानून यहाँ बने हैं, उसका जिक्र आज पूरे भिन्न भिन्न अपने सांसदों ने अपने अपने वक्तव्यों में किया और उन्होंने बहुत सारे भावुक पल भी उन्होंने कहा और उन्होंने कहा भारतीय लोकतंत्र के लिए और गणतंत्र के लिए ये जो बिल्डिंग है ये बहुत शुभ रही है। बहुत सारे भारतीय इस देश ने इसी में यहीं पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से याद किया उन्होंने। प्रधानमंत्री की अगर बात करूं तो भगत सिंह जी से याद करके और जीएसटी तक और अब तक G20 तक की बातें उन्होंने की। उन्होंने विशेष बात जो मैं आपको कहना चाहूँगा वो यही थी कि इस संसद ने 7500 से ज़्यादा सांसद देखे मनोज जी, 600 से ज़्यादा महिला सांसद जो हैं यहाँ पे हुए हैं। उनकी आवाज़ जो है संसद के दोनों
कक्षों में जो चैम्बर है उसमें उसमें गूंज रही है कि वो इसलिए उन्होंने नाद ब्रह्म का नाम दिया उसको, कि वो आवाज़ गूंजती रहेगी और जो भविष्य की हमारी पीढ़ियाँ भी आएंगी वो भी उनसे सीखती रहेंगी, क्योंकि सब कुछ डॉक्यूमेंटेड चीज़ें रहती हैं। हर एक जो सांसद होता है उनका भाषण जो है वो डॉक्यूमेंटेड रहता है, टेक्स्ट के रूप में भी, ऑडियो के रूप में भी और अब ऑडियो विजुअल के रूप में भी। तो भावी पीढ़ियाँ देख सकेंगी कि हमारे जो सांसद रहे हैं, हमारे जो नेता रहे हैं देश के, जिन्होंने जनप्रतिनिधित्व किया है, उन्होंने अपने क्षेत्र की आवाज़ को लोकतंत्र के इस मंदिर में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में उन्होंने उसको रखा, और वो सारा सब कुछ भी जो कुछ भी हो रहा था वो जन कल्याण के लिए हो रहा था, क्योंकि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना हुआ सिस्टम है, तो उसी को परिलक्षित करता है। और गर्व की बात ये भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और अभी G20 के दौरान हमने देखा कि जितने भी देश थे G20 में शामिल आए थे, तो उन्होंने भी भूरी भूरी प्रशंसा की और भारत से सीखने के लिए वो आते हैं, भारत को वो अपना रोल मॉडल मानते हैं इस दृष्टि से। तो ये बड़ी बात है इसके लिए। तो बाकी जितने भी सांसद थे उन्होंने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। विपक्ष की तरफ से अपने मुद्दे रहते हैं विनोद जी, तो उन्होंने अपने मुद्दे रखे। उन्होंने बात ये भी करी कि बहुत सारे मुद्दे हैं, तो सभी पक्षों की ओर से ये भी था कि महिला आरक्षण का जो विधेयक है, जो लंबित है लंबे समय से, विपक्ष की तरफ से, ज़्यादातर सांसदों की तरफ से यही कहा गया कि वो भी आना चाहिए इस विशेष सत्र में, क्योंकि विशेष सत्र बुलाया गया है 5 दिनों का और उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये विपक्ष की तरफ से मूल रूप से बात सामने आई कि जो उनकी तरफ से मांगे वो विषय भी इसमें शामिल हो, उन पर भी चर्चा हो, ये मांग उस तरफ से आई। मनोज जी। जी बिल्कुल, पवन जी आप बने रहिए हमारे साथ। जगन्नाथ सरकार साहब, आज प्रधानमंत्री जी ने भी विस्तार से बताया जो 75 सालों की हमारी यात्रा है, और जिस पुरानी इमारत में आज आखिरी कार्रवाई हुई सदन की, उसका जो संदेश है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबने एक बात तो कही कि भारत का लोकतंत्र इन 75 सालों में मजबूत हुआ है। संसद की इस यात्रा में जो गरीब है, किसान है, आम आदमी है, उसकी उम्मीदों को भी इस सदन ने पूरा किया। देश मजबूत हुआ, कई उपलब्धियां देश के नाम हैं। आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को? देखिए, ये हमारा जो देश जितने आबादी था पहले, अभी बहुत गुना बढ़ गया। तो हर प्रतिनिधि और जनसंख्या अनुसार तो आज बढ़ाना चाहिए, क्यों अभी 40 करोड़ से ज़्यादा आबादी हो गया। इसलिए वहाँ जा प्लेसमेंट है अभी वो ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए भी ये नया बिल्डिंग को होना चाहिए। इसका बाद जो टेक्नोलॉजी भी बहुत सारी चेंज हो गया। आज पुराना भारत सरकार नया भारत बन रहा है। इसका काम बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है, कदम आगे बढ़ रहा है हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत। तब ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पहले जो जितने लैंग्वेज में वहाँ डबिंग सारी सिस्टम था, अभी बहुत गुना बढ़ गया। तो सारी चीज़ सुविधा ये नया जो बिल्डिंग बना रहे हैं वहाँ सभी मिलेगा। इसलिए ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा जो देश है, हमारा देश ये जो वर्ल्ड का एक बढ़िया लोकतंत्र है। यहाँ जो आपका टैगलाइन है, ये लोकतंत्र हमारा स्वभाव में है। तो हमारा जो हिस्ट्री उद्घाटन करके देख सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान किसी को देश इतना बड़ा था, हिम्मत वाला था। सारी जो नया सोच सभी हमारा पुराना दिन का
ये भीत भी मजबूत है अभी। Absolutely, that's a very वहाँ important से point. आगे बढ़ रहा है, That's a लेकिन very कभी important किसी को point that अटैक you've नहीं made. किया कि हमारा लोकतंत्र। I would like to take that to Mr. Mehtab. You know, the fact that there was a need for a new parliament building to make it more representative. Of course, we wanted to shift from an old to the new, to also cater to the growing population in terms of adaptation to newer technology. That was very, very important. But in terms of significance, in terms of symbolism, because we are stepping, we've already stepped into the Amrit Kal, and our thrust is we want to be self-reliant, as Atmanirbhar as possible. So from that aspect, how significant is this move, shifting from the old to the new, with a new vision, with a new direction? There were certain milestones in the course of your journey. When you reach 25 years, we celebrate Silver Jubilee. And India as a nation also celebrated Silver Jubilee of our independence in 1972. Mrs. Indira Gandhi was the Prime Minister. The census, जैसे जगन्नाथ बाबू ने अभी कहा, का रिपोर्ट तब तक तो आ चुका था, पर इलेक्शन हमारी 71 में होगी. We held our election in 1971 for Lok Sabha, along with certain Vidhan Sabhas. And the redrawing of our assembly or parliament segment was given effect to certain states in 1973-74, and in 75-76 there were no elections, and ultimately in 1977 the new or enhanced Lok Sabha was created, and to create more seats, more benches were added, not only in Lok Sabha but also in Rajya Sabha. Similarly, when we reached 50 years, पड़ाव जब पहुंचा, हमारी गोल्डन जुबली हमारी हुई, तब कोई increase in seats हुई नहीं. But when we go back to the history, when we got independence, it was 300 some odd seats in Lok Sabha in 1952. Then it went, another 100 or 80 seats were added to it, that subsequently we reached 545. 2 were nominated. Now those 2 seats have been abolished, the Anglo-Indian reservation for Anglo-Indian community. So we have 543 seats. And as has been said by Mr. Sarkar, with a growing population, the constituency of every Lok Sabha invariably has been divided into 18 to 20 lakhs of people. And that's quite a very big number. And when you compare it with other parliamentary democracies, they feel very perturbed that how a member is serving such a large constituency. And that is the necessity today, that it was felt that we should have a new building. But that was not the only reason. The other reason was the technological advancement that has happened. Absolutely. In between. We should also provide those gadgets to every member. During our visit, be it during Somnath Chatterjee's time from 2004 to 9, when the Lok Sabha or Sansad channel came into existence, or subsequently Mira Kumar's time and then Sumitra Tai's time, it was always felt when the members visit other parliaments under the leadership of the Honorable Speaker, we could see the ultra modern technology that is being used in the house. Here it was impossible, because this house was built in 1927. Electricity that time was, air conditioning was not available. Right. And that was the central assembly, as we call it. The central hall was the library. There was a Prince Chamber, which today is the reading room. The Lok Sabha, of course, was the central assembly. And when India gained independence, the Rajya Sabha that we see today was the Supreme Court, because Supreme Court structure came after that, a little later. So if this is the situation, it was quite impossible to upgrade within the existing infrastructure. But they did during 70s or late 60s and 70s. Another floor was added on the top,
which was actually weakening the structure. It was necessary to expand. Members were not provided any rooms. The political parties also, all political parties were not provided with independent rooms. Cabins were provided in the third floor. So it was impossible to function. And the other aspect which I mentioned today in the deliberation is, we don't sit in a relaxed way in the house. We always are on the edge. Right. We have to sit like this. And it's very difficult, and there are no desks also in front of us except the two benches in the front row. The other are just benches. You're right, and especially when there's a full house, the discomfort is clearly visible. I sit in a bench where 5 members sit, but hardly 3 members can sit comfortably. But we have to adjust ourselves, we have to give our vote, and all our elbows also touch each other. But that's not a proper way. But now in this new Parliament House, adequate precaution has been taken. Movement of members and staff also, adequate space is there. Every political party is being provided. So also the members are also going to be provided. That's what I learned. Of course, we will be missing the central hall, and there is no central hall in the new structure. Right. But there are courtyards and food courts. And another major thing is, in this parliament, means the parliament which has already completed 96 years, AC was not the priority. Providing air condition was not the priority. That's why we have very big verandas all around, and also there are big courtyards in 3 major courtyards in between. But in the new parliament, it is fully air conditioned. Okay, Mr. Sarkar, the fact that, for old members of parliament, there will always be that emotional connect, that nostalgic feeling shifting from the old to the new building. Yours was the first term, of course, you've built memories over the last 4 years, but how enthusiastic are you about entering into this new parliament building, which has state-of-the-art facilities, the modern technologies that Mr. Mehtab said were missing in the old parliament building, and also the most important fact that we've started this journey of Amrit Kal and we begin with something that we have created ourselves? ये जो मेमोरी है ना, हमेशा वो वेदनादायक होता है जी। ये याद रहेगा वो जो घटा। हमारा ज़्यादा दिन संसद का हिस्ट्री नहीं है। मैं नया एमपी 5 साल भी अभी पुराना नहीं हुआ, तो इस बारे में जितने हमारा स्थिति यहाँ बना वो तो हमेशा याद रहेगा। वो जो बोला सेंट्रल हॉल नहीं मिलेगा, ठीक है, ये तो हमेशा याद पहले तो होता ही है। तो कुछ दिन जाने के बाद सभी तो भूल जाते हैं, ये भी हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। तो नया फैसिलिटीज़ तो बहुत चाहिए। क्यों, यहाँ क्या होता है, हर रोज़ इतने टाइम एक ही जाएगा में कंजेस्ट एरिया 2 कन्हैया लग जाता है एक का साथ एक, तो फ्री मूवमेंट भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए बीच बीच में सेंट्रल हॉल में जाता है, कभी खाने के लिए घर जाता है, कोई रेस्ट लेने के लिए कुछ टाइम होना चाहिए। तो इसलिए जो संसद भवन नया बन रहा है, हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए ये मैनेजमेंट बनाकर ये नया जो प्लेसमेंट हो रहा है, ये अगले दिन बहुत अच्छा होगा। तो हम सब जितने दिन जाएगा वो तो पुराना सिटी भूल जाएगा, वहाँ आने का तो मौका मिलेगा। जिस टाइम उसका अंदर घुसेगा तब भी वेदनादायक होगा, तब भी ये हमारा देश के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। इतने आधुनिक टेक्नोलॉजी वहाँ जोड़ दिया, तो कोई चीज़ हमारा ज़रूरी है तो वहाँ से ही मिल जाती है, हमारा टेबल में ही मिल जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो देश आगे बढ़ रहा है, इसलिए इस सिस्टम भी आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, ये सही डिसीजन है, यही मेरा। जी बिल्कुल, आधुनिक सुविधाओं से युक्त
संसद का जो नया भवन है जाहिर तौर पर वो कई मील का पत्थर साबित होगा अगली जो लोकतंत्र की आगे की भारत की जो यात्रा होगी। लेकिन जो यात्रा रही है लोकतंत्र की, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने और क्या कुछ सदन में कहा आज, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। ये हमारे 75 साल के संसदीय इतिहास का एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण विश्व में आज वो गूंज सुनाई दे रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चंद्रयान 3 की सफलता न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है और इसमें भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप जो आधुनिकता से जुड़ा है, जो विज्ञान से जुड़ा है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जो हमारे वैज्ञानिकों के सामर्थ्य से जुड़ा है, जो 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प की शक्ति से जुड़ा हुआ है, वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव पैदा करने वाला है। ये सदन और इस सदन के माध्यम से मैं फिर एक बार देश के वैज्ञानिकों और उनके साथियों को कोटि कोटि बधाइयां देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया, तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पक्ति पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी, मैं कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच जाता है। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। सोचा नहीं था अध्यक्ष जी। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री जी ने चंद्रयान की बात की और एक सांसद सदस्य के रूप में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अब तक की जो यात्रा रही है उसका भी उल्लेख उन्होंने किया कि किस तरह उनका एक श्रद्धा भाव संसद के इस भवन के प्रति, लोकतंत्र के प्रति रहा है, उसके बारे में बताया। जाहिर तौर पे जब भी बात संसदीय लोकतंत्र की होती है तो उसमें सांसद सदस्य की भूमिका एक बहुत महत्वपूर्ण होती है। संसदीय व्यवस्था और जनता की कड़ी को जोड़ने में जनप्रतिनिधि की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सदन के भीतर कानून बनाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है, तो जनता से संवाद और लोकतंत्र से जोड़ने की भूमिका भी उनकी होती है। भर्तरी मेहताब साहब, मैं इस सवाल को आपसे जरूर समझना चाहूँगा, क्योंकि जनता उम्मीद, ठीक है, जनता की उम्मीद लोकतंत्र से होती है, लेकिन लोकतंत्र में जो सांसद सदस्य है, जनप्रतिनिधि है, उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? असल में जो प्रतिनिधि चुन के आते हैं उनके जरिए जनता चाहती है कि अपनी आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंचे। जो शासन तंत्र चलाते हैं उनके पास उनकी बातें पहुंचे, उनकी असुविधा पार्लियामेंट में गूंजे और जो वो चाहते हैं उसका समाधान भी पार्लियामेंट से निकले।
इस हिसाब से इस हिसाब से प्रधानमंत्री एक अच्छा शब्द कहा जो हम भी बार बार जी हमारे सांसदगण भी कहते हैं और जो पत्रकार लोग भी लिखते हैं आप जैसे, कि ये गणतंत्र का मंदिर है। मंदिर का असल स्वरूप क्या है? मंदिर में विग्रह है, मंदिर में पुजारी है, मंदिर में भक्त है, मंदिर में घंट है, आरती होती है, ये सारे चीज़ होती है, तब तो मंदिर बनती है। और एक अभ्यास में भी आ जाता है कि हमको मंदिर जाना है। कभी कभी आप जब रास्ते में जाते हो तो घंटा की ध्वनि आपको सुनते हो तो आप कहते हैं हाँ सारी चीज़ चल रहा है। तो ये इसी तरह एक मंदिर है जहाँ लोगों का कल्पना, वास्तवता और अधिकार की घंट ध्वनि होती है, और जो लोग घंट ध्वनि करते हैं वही सांसद हैं, और जिनके बाहु में ताकत है वो ज़्यादा जोर से बजाते हैं। And one thing that now as common citizens we will also hope is there will be better facilities, there will be better technology, but will there be better outcomes? We need to work together. The Vision 2047 is something that is very ambitious. All parties have to work together, and that better outcome has to be visible in the new parliament Yes, building. it depends on two things. Better outcome, I hold that view very strongly, has been stiffened because of passing of a law or addition of 10th schedule in our constitution, which actually where the whip has become a terror for any elected member. In that respect, members are not in a position to express their opinion independently. It is always the party's decision which gets reflected in their speeches inside the house, because that is what one says inside the house is magnified and goes to the public through media. So in that respect, the behavior, the utterances of every member is controlled. So that's why many a time the discussion, deliberation becomes sterile. And to bring the best out of every member, it's not the language and the words one uses, but it is the intelligence of a member that needs to be seen, and that is what happening in other parliamentary democracy. The other aspect is the party. For the first time, of course, party got enshrined in the constitution with the 10th schedule. Earlier party was never mentioned, or nowhere it is mentioned in constitution. So party means the leader or a group of persons who lead the party, they decide. Right. It's not the individual members who decide. So in that respect it is controlled. Second thing is the party selects the members who will be contesting the election. So if the party selects good members, because when we say good, it has different connotations for different people. Who can win, who can spend money, who is popular, who can deliver, number of things come in that goodness. So in that respect, these are the two aspects. If it is done in a right way, I believe the performance inside the house will Okay, improve. okay. Before we head into a break, एक आखिरी सवाल जगन्नाथ सरकार जी आपसे। आपका ये फर्स्ट टर्म था, आपने भी कई तरह की चुनौतियां देखी हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हाउस में स्टेलमेट हो जाता है और जनप्रतिनिधि अपनी बात नहीं कर पाते हैं। अब जब नए सदन में जा रहे हैं तो ऐसे क्या लेसन्स हैं जो हमने सीखे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अगली बार फिर चुनकर आएँ, जो अगली बार आप इन चुनौतियों से सीखकर ये सुनिश्चित करें कि जिन मुद्दों को आपको उठाना है सदन में, जिसके वजह से जनता ने आपको वोट दिया है, वो आप सुचारू रूप से उठा सकें। ठीक, ये महत्वपूर्ण बहुत ये बात है, अच्छा बात है। ये लोकतंत्र में सभी तो रेगुलेटेड भी होता है, तो जितने मौका मिलते हैं विपक्ष में हल्ला कर रहे हैं। मेरे याद में है 2-4 घटना, कोई मेरा क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन मौका भी मिला, लेकिन हल्ला के लिए उठा नहीं पाया। तो हमारा जो बोलने वाला था वो मौका नहीं मिला, जनता के तक
वो नहीं पहुंचाया, तो मेरा तो दुख है ही। कोई बारे में बोलने के लिए मुंसा भी था, लेकिन मौका नहीं मिलते। तो आज यह आखिरी दिन था। इस दिन में तो बहुत सदस्यों की मनसा था मैं कुछ बोलूँगा, लेकिन बोलने का मौका नहीं। बिल्कुल, और ये काफी तो मुश्किल है कि अब चुनाव सर पर है। अच्छा कानून आया, मेरे बहुत पॉइंट अच्छा पॉइंट था, लेकिन वो बोलने के मौका नहीं मिला। बिल्कुल, तो अब चुनाव जब बिल्कुल सर पर है, तो अब आप लोगों के बीच जाकर पहली बार उनके मुद्दे नहीं उठा पाए, तो अगली बार के लिए वो आप पर कैसे विश्वास करेंगे? एक बड़ी समस्या है मनोज जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सांसद सदस्य भी चाहते हैं सदन चले और उसमें जितनी चर्चा हो, प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, विभिन्न विधेयकों पर चर्चा होती है, तो सांसद सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा तब उठता है जब सदन नहीं चलता है। आज जब ऐतिहासिक चर्चा इस मुद्दे पर राज्यसभा में हो रही थी, तब भी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी ने इसी बात पे जोर दिया, अच्छा होगा सदन में चर्चा हो, मुद्दों पर बात हो, सदस्यों को अधिक से अधिक बोलने का मौका मिले, इस बात पे आज भी जोर दिया। और उन्होंने कहा उस पर पार्टी पर ना चला जाए कि पहले सदन नहीं चलने दिया जाता था, तो सदन को आगे भी इसी तरह से अवरुद्ध किया जाए या रुकावट पैदा की जाए, क्योंकि सदन चलता है तब आम जनता की बात होती है, देश के मुद्दों पर बात होती है, समाज की बात होती है। लेकिन संसद का ये विशेष सत्र है, और विशेष सत्र है तो खास तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। भर्तृहरि जी, सरकार साहब, आपने हमसे बात की, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपको सीधे लिए चलता हूं अपने सहयोगी पवन शर्मा के पास, जो इस समय भी संसद भवन परिसर में मौजूद हैं। पवन, संसद का जो विशेष सत्र है वो खास तौर पर बहुत संक्षिप्त है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कुछ अगले 3-4 दिनों में होने वाला है? क्या कार्यक्रम है, क्या एजेंडा है? जी मनोज जी, जहां तक बात करें, विशेष सत्र है, बुलाया गया है 18 से, आज शुरू हो गया, 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। और जैसा आपने कहा कि इसमें क्या क्या रहना है, ये भी बिल्कुल साफ हो गया है। आज जो है ऐतिहासिक दिन इस लिहाज से था क्योंकि जो संसद का पुराना भवन है वहाँ पे जो कार्रवाई होती थी वो आज उसका अंतिम दिन था। अब जो कार्रवाई कल है वो नए संसद के नए भवन में होगी। लोकसभा की कार्रवाई की अगर मैं बात करूं तो कल 1:15 बजे कार्यक्रम उस कार्रवाई वहाँ पे लोकसभा में शुरू होगी और राज्यसभा की कार्रवाई 2:15 बजे शुरू होगी, जैसी एडजस्टमेंट आज हुई है। इससे पहले 11 बजे कल जो है केंद्रीय हॉल में सभी सांसद इकट्ठे होंगे और उसके बाद जो है कार्यक्रम होगा और उसके बाद वो सभी के सभी सांसद जो हैं लोकसभा की तरफ प्रोसीड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रल हॉल नहीं है जैसा कि पुराने संसद भवन में है। तो संसद के नए भवन में लोकसभा में ही संयुक्त बैठक होगी, तो उस तरफ को सांसद बढ़ेंगे। ये कल का कार्यक्रम रहने वाला है। जहाँ तक बात की आपने कि क्या क्या होना है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो बिजनेस से स्पष्ट है कि सबसे पहली बात, आज जो चर्चा हुई है वो पार्लियामेंट के 75 वर्षों का जो संसदीय सफ़र रहा है उसकी अचीवमेंट्स पे, उसकी मेमोरीज पे, उसकी लर्निंग्स पे, उस पे ये शुरू हुआ है। और अलग अलग सांसद जो अपनी बात कह रहे हैं वो जो इसके ऊपर जो डेलिब्रेशन है, जो चर्चा है, जो भाव अभिव्यक्ति है सांसदों की, वो नए संसद भवन में भी जारी रहेगी। जो नए संसद भवन का लोकसभा चैम्बर है, राज्यसभा चैम्बर है, और कार्रवाई वहाँ पे लोकसभा की 1:15 बजे दोपहर बाद और 2:15 बजे जो है वो राज्यसभा में शुरू होगी। मैं एक बात बड़ी कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जब मैं आज सांसदों से और केंद्रीय मंत्रियों से यहाँ बात कर रहा था तो वो भी उनके लिए भावुक क्षण था। कई जो सांसद हैं वो 5 बार के सांसद चुन के आए हैं, 6 बार के सांसद चुन के आए हैं, कई लोग 30-35 वर्षों तक इस संसद में रहे, तो सबका लगाव हो जाता है। और प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में हर एक सभी का धन्यवाद किया। मनोज जी, जैसे उन्होंने सांसदों की बात की कि 7500 सांसद रहे हैं जिसमें 600 महिलाएं भी रही हैं। उन्होंने पानी देने वाले जो कर्मचारी रहते हैं उन तक की बात की, माली को याद किया, अधिकारियों को याद किया, पत्रकारों को याद किया खासकर, क्योंकि आप भी संसदीय जो बीट है बहुत लंबे से कवर करते रहे मनोज जी। तो उन्होंने बहुत कहा कि इस देश में इतने लंबे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, जब टीवी नहीं था, जब बातें जो है ऑडियो विजुअल सिस्टम नहीं था, तब पत्रकार ही जो है बातों को वहाँ पे पहुंचाते थे, लोगों तक पहुंचाते थे, और प्रिंट के जरिए और बाद में इलेक्ट्रॉनिक के जरिए वो लोगों तक पहुंचती थी। तो उन्होंने उन सभी पत्रकारों को जो अब नहीं रहे या अभी हैं भी, तो उन सबको याद किया।
तो ये उन्होंने ये भी कहा कि जब हम पुराने घर से नए घर में शिफ्ट होते हैं तो पुराने घर से लगाव तो रहता है, क्योंकि नई चीज़ों में सेटल होने में समय लगता है, तो वैसा ही भाव जो एक मनुष्य का भाव रहता है उसकी उन्होंने लगातार चर्चा की। तो Right, you're right, Pawan. And सांसद भी इसी तरह से भावुक Mr. नजर आए। Mehtab a little while ago was telling us about how it was more like a valedictory speech, wherein the Prime Minister not just spoke about the glorious journey of the Indian Parliament over the last 75 years, he also mentioned the contributions, he hailed the contributions of his predecessors, the former Prime Ministers, right from Pandit Nehru to Lal Bahadur Shastri to Indira Gandhi to Dr. Manmohan Singh. And he didn't forget to also thank the support staff, which means the backbone of the proceedings, the secretariat staff, the gardener, so everyone who's contributed towards this glorious journey of the Indian Parliament. So we'll continue to delve into what was discussed in both houses today, in both the Lok Sabha and the Rajya Sabha, when members of different political parties stood and spoke about this journey of India over the last 75 years. And now as we move from the old building to the new building, that move is supposed to happen tomorrow. What are the expectations from not just the elected members of parliament, but also of the common people from the elected representatives? So to discuss these aspects, we have a different set of panel now. We're being joined in the studio by Mr. Deepak Prakash, Member of Parliament, Rajya Sabha. He represents the BJP. And Mr. Bharat Margani, he represents the YSR Congress Party in the Lok Sabha. Thank you to both our guests for joining us on this special telecast. Mr. Prakash, to you first. It was a very, very historical day in terms of how we are moving from the old parliament building to the new one. सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने बड़ा इम्पैक्टफुल स्पीच दिया एक लीडर ऑफ द हाउस के तहत जब उन्होंने लोकसभा में बोलना शुरू किया, और सबसे अच्छी बात रही कि उन्होंने हर किसी को आज याद किया, अपने सारे प्रेडेसेसर से लेकर जो सपोर्ट स्टाफ है, खास करके हर किसी को धन्यवाद दिया और उम्मीद की कि जिस तरह का हमारा ये सफ़र रहा है वो अब आगे भी बरकरार रहेगा। देखिए, 75 साल के संसदीय गौरवशाली यात्रा को आज हम स्मरण कर रहे थे और उन पुराने स्मरण को भी याद कर रहे थे जिनके द्वारा गौरवशाली परंपरा वहां पर निर्वाह की गई थी। लोकतंत्र को मजबूत करने में सब लोगों की भूमिका है और हम सबको जानते हैं कि भारत वर्ष एक प्राचीन संस्कार और संस्कृति में ही लोकतंत्र निहित है, उसकी जड़ें जो है सो लोकतंत्र। आप वैशाली परंपरा की बात कर लीजिए, अब वेद की में बात कर लीजिए, तो सभी जगह पर लोकतंत्र हमारे यहाँ पुरानी परंपराओं में था। और आज जो हम लोग इस क्षण को याद कर रहे हैं तो संसदीय जो यात्रा है वो आज 75 साल के गौरवशाली यात्रा को याद कर रहे थे और हम सबको जानते हैं कि उसमें सबकी भूमिका है। अगर 6500 संसदीय यात्रा में शामिल जनप्रतिनिधियों का योगदान है तो 600 हमारी सम्मानित बहनें जो संसद सदस्य थे उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो साथ साथ में सभी जो वहाँ पर काम करने वाले, चाहे सचिवालय में हो, चाहे वहाँ जलपान कराने वाले हों, चाहे ड्राफ्ट करने वाले हों, चाहे सबकी भूमिका उसमें प्रधानमंत्री जी ने सबको याद ही नहीं किया, उनको सम्मानित करने किया अपने शब्दों के माध्यम से, अपने हृदय के माध्यम से। यही तो दूसरे प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी को अलग करता है। अब राज्यसभा से सांसद है, राज्यसभा में किस तरह की चर्चा रही उस पर आते हैं अभी, बट एक बार भरत जी, आई विल कम टू यू फर्स्ट. You witnessed various moods in the House. Elected members from various parties spoke at length about various aspects covering the journey of the Indian Parliament. How was it like? What were the highlights for you? And today, actually, it's an historic day. I must say, today is a historic day. And I must congratulate the government of Bharat to bring a new era of Indian politics. Because I'm really lucky to be a member in this 17th Lok Sabha to witness the new building and the old building. And the transition. Yes. And how many people will get this opportunity? Absolutely. If you could see, we can never miss this. But if God blesses us again
some kind of things has to happen. The parliamentary affairs or some kind of meetings has to happen in this old house also. And we are looking forward for this new building, and I wish the many new beginnings, the new journey has to happen in this new parliament. As after the 75 years of independence, there are many important issues been missing. Dr. B.R. Ambedkar has dreamt of having an equal and social justice for each and everyone. Right now we are about 140 crores of population. But in some parts, even though reservation is still there for scheduled caste and scheduled tribes, and backward OBC communities also are demanding for a kind of reservation that has to put forth in the new parliament building that should make some kind of history in the Narendra Modi's era. It has to happen. And all the political parties are expecting the women reservation bill also. So in this new parliament building, in this tenure, if Honorable Prime Minister brings these two bills, the BC reservation bill and as well as the women reservation bill, he'll be reminded in the history books forever. Just like Dr. B.R. Ambedkar, Mr. Narendra Modi ji also remains in the history books like such a tall leaders. So I wish in this tenure, if Honorable Prime Minister brings these both bills, and at the same time when it comes to the BC reservation bill, the caste census has to happen. Unless and until if you get the caste census, you cannot go forward with the BC reservation bill. You're right, and let's hope these expectations are met in the times to come, because there's a lot of promise, there is a lot of hope among the new people. The Prime Minister said today that we've set out with a new vision, with a new direction towards a new approach to take New India to greater heights. But he also spoke about various other aspects to make our parliamentary democracy more inclusive and more representative, something that Mr. Bharat was also pointing out. Let's listen in to the Prime Minister. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों ने बहुत आशंकाएं व्यक्त की थी। पता नहीं देश का क्या होगा, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, एक रहेगा कि बिखर जाएगा, लोकतंत्र बना रहेगा नहीं, 50। लेकिन इस देश की संसद की ताकत है कि पूरे विश्व को गलत सिद्ध कर दिया और ये राष्ट्र पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ता रहा। और इस विश्वास से कि हम भले आशंकाएं होंगी, घने काले बादल होंगे, लेकिन सफलता प्राप्त करते रहेंगे। और ये हम सब लोगों ने, हमारी पुरानी पीढ़ियों ने मिलकर के इस काम को करके दिखाया है। इसका गौरवगान करने का ये अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी भवन में 2 साल 11 महीने तक संविधान सभा की बैठकें हुई और उसने देश के लिए एक मार्गदर्शक जो आज भी हमें चलाता है, हमारे संविधान दिया। और 26 नवंबर 1949 को जो संविधान हमें मिला, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इन 75 वर्षों में सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये है कि देश के सामान्य मानवी का इस संसद पर विश्वास बढ़ता ही गया है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इस महान संस्था के प्रति, इस महान इंस्टीट्यूशन के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास अटूट रहे, विश्वास उनका बना रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किएगा, अनेक बातों के लिए याद करेगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में,
सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू की जो प्रारंभिक मंत्री परिषद थी, बाबा साहब आम्बेडकर जी एक मंत्री के रूप में दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस भारत में लाने पर बहुत जोर दिया करते थे। फैक्ट्री कानून में अंतर्राष्ट्रीय सुझावों को शामिल करने पर बाबा साहब सर्वाधिक आग्रही रहे थे और उसका परिणाम आज देश को लाभ मिल रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने देश को नेहरू जी की सरकार में वाटर पॉलिसी दी थी और उस वाटर पॉलिसी बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम ये जानते हैं कि भारत में बाबा साहब आम्बेडकर एक बात हमेशा कहते थे कि भारत में सामाजिक न्याय के लिए भारत का औद्योगिकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के दलित पिछड़ों के पास जमीन ही नहीं है, वो क्या करेगा? औद्योगिकरण होना चाहिए। और बाबा साहब इस बात को मान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो पंडित नेहरू के मंत्री थे, उन्होंने इस देश में और पहले वाणिज्य मंत्री के रूप में और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने इंडस्ट्री पॉलिसी इस देश में लाई थी। आज भी कितनी ही इंडस्ट्री पॉलिसी बने, लेकिन उसकी आत्मा वही होती है जो पहली सरकार के थी और उनका भी बहुत बड़ा अहम योगदान रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का हौसला बुलंद करना, उनके सामर्थ्य के लिए को पूरी तरह राष्ट्र में झोंक देने की प्रेरणा इसी सदन में से दी थी लाल बहादुर शास्त्री का। और यहीं पर उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए एक मजबूत नींव लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। वो राष्ट्रीय संकल्प भी देखा था, ये सामर्थ्य भी देखा था। So we'll continue to discuss further with the two distinguished guests who are with us in the studio after this very short break. Do stay with us.